ये जो बुक है, ये बुक का खाली पहला वर्ड पढ़ो। द फर्स्ट वर्ड इज स्टील। तो मैं तुमको चोरी करना सिखाने वाला हूँ इन द सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स। हम यही सीख रहे हैं और कुछ नहीं है, उसको कुछ जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लॉजिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको सिंपल सरल लैंग्वेज में चोरी करना सिखाने वाला हूँ। लेकिन हमको ना एकदम छोटा मोटा चोर नहीं बनना है, हमको दुनिया का बेस्ट चोर बनना है। मैं आर्टिस्ट की बात कर ही नहीं रहा, ये बुक आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये गलत है। मतलब इसके अंदर भी लिखा हुआ है, ही इज सेइंग, पहले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि आप ये मत सोचो कि ये बुक खाली आर्टिस्ट के लिए है। इट इज स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। मतलब आर्टिस्ट कैसे एकदम आर्ट से करता है, जैसे मैजिशियन काम करता है, वैसे आप चोरी ऐसी करो कि मजा आ जाए। सो दिस बुक इज नॉट फॉर आर्टिस्ट, इट इज स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। वो हमको चोरी करना ही सिखा रहा। आप आर्ट चोरी कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जब आर्ट की चोरी होती है तो कुछ लोग बहुत अच्छे से चोरी करते हैं, कुछ लोग बहुत बकवास तरीके से करते हैं। बकवास तरीका मतलब, आई लव फ्रेंड्स, मैंने सारे 10 सीजन 10 बार देखे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि गलती से पहले इंग्लिश नहीं आती थी तो हम हिंदी मूवीज़ देखते थे। तो मैंने एक मूवी देखी थी, मैंने प्यार क्यों किया। बाद में मैंने बोला कि मैंने मूवी क्यों देखा, बट द थिंग इज, मैंने जब पिक्चर देखा मुझे पिक्चर अच्छी लगी। कई साल बाद फ्रेंड्स, और जब भी आप कोई सीरीज़ में पागलों की तरह देखते हो ना 10 सीज़न, तो उसका क्लाइमैक्स, उसका कैरेक्टर, उसका हर चीज़ आपको बहुत, आप इन्वॉल्व होते हो, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मीन करता है। तो जब मैंने ये देखा था, जब मैं देख रहा था मैंने प्यार क्यों किया, जब मैंने वो देख लिया था, उसके बाद मैं फ्रेंड्स देख रहा था। फ्रेंड्स देखते टाइम में फर्स्ट सीज़न मज़ा आया, सेकेंड थर्ड तो मतलब लिटरली ये हुआ था रात में, और ये मेरा फ्रेंड्स देखने का स्टाइल था। मेरा घर में ना एसी ऐसा ज़मीन पे है, ओके, तो ज़मीन पे एसी है, मैं सोफ़ा इधर रखता था और एसी के फ्लैप्स ऊपर करता था। तो एसी की हवा ऊपर जाती थी, पंखे से टकराती थी, नीचे आती थी, एंड इट यूज्ड टू क्रिएट अ वेरी अमेजिंग एटमॉस्फेयर हियर, ओके। अब उस जोन में मेरा सोफ़ा था, सोफे पे ब्लैंकेट में बैठ के नूडल बना के सामने लैपटॉप रखा हुआ रहता था और मैं पूरी रात फ्रेंड्स देखता था। दिस वॉज माई सेटअप। लास्ट एपिसोड फ्रेंड्स का, फीबी गाड़ी में बैठी होती है, एक कैरेक्टर है, वो लोग जा रहे होते हैं एयरपोर्ट की तरफ और वो बोलता है अरे वो उसके प्लेन के फ्लैंजी में कुछ प्रॉब्लम है। पता है क्या हुआ, कोई ये मैंने प्यार क्यों किया में सलमान खान इन्होंने वही सीन चुरा के पिक्चर के अंदर डाला था। तो जैसे ही वो सीन अप्रोच हुआ मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अब तो मुझे एंडिंग पता है और मेरी एंडिंग खराब हो गई, रुइन हो गई। और उसके बाद मैंने लिटरली बॉलीवुड मूवीज देखना छोड़ दिया था, मैं नहीं देखता। अभी बहुत टाइम के बाद जो पहली पिक्चर मैंने देखा था वो था अंधाधुन, क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था कि तू मिस कर रहा है, तू सच में वो पिक्चर देख, बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद अभी मैंने वो देखा भूल चूक माफ। बट ये जो चोरी है ना, ये बकवास चोरी है, ठीक है। हमको ऐसा नहीं बनना, क्योंकि हमने जैसा ही देखा है उसने मूड खराब कर दिया कि यार ये क्या बकवास है। और ऐसी चोरी बॉलीवुड में बहुत होती है। म्यूजिक में हम चोरी करते हैं, पूरा के पूरा ट्यून उठा लेते हैं। बट अगर हम ये बोले कि बॉलीवुड वाले खराब है, बॉलीवुड वाले चोरी करते, हॉलीवुड वाले तो चोरी नहीं करते, ये गलत होगा। हॉलीवुड वाले इससे बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, वो लोग ना सही से चोरी करते हैं। मीनिंग, एक शॉट है मार्टिन स्कोर्सेज़ी का जिसके अंदर गन रखी हुई है और कैमरा रखा हुआ है, और जैसे जैसे गन मूव होती है कैमरा उसके साथ मूव होता है। ये मूवमेंट है जो क्विंटन टेरेंटिनो ने, जिसने अपना ये बनाई है, क्विंटन टेरेंटिनो ने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड बनाई है, उसने सेम शॉट चुराया है। और उसने बोला था कि आई हैव सीन दिस इन मार्टिन स्कोर्सेज़ी फिल्म, आई हैव बेसिकली टेकन दैट शॉट। लेकिन उसने क्या पूरा सीन चुराया? नहीं, उसने शॉट चुराया और उसको अपनी तरफ से ऐसे मिक्स किया, ऐसे यूज़ किया कि मार्टिन स्कोर्सेज़ी खुद बोले कि यार तूने मेरे से अच्छा करके दिखा दिया मेरा आइडिया लेके। हमको वो करना सीखना है। दिस इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, ये वो एडवाइस दे रहा है खुद को जो वो चाहता कि वो 20 साल पहले खुद को दे देता। तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर माई 19-year-old सेल्फ। ये सबसे पहला पेज है। दूसरा पेज बोलता है बुक का कि चीज़ों को अगर आप कुछ भी देखें दुनिया में, कुछ भी, वो सारा के सारा कॉपीड है, सब कुछ कॉपीड है। फॉर एग्जाम्पल, जरा सारे के सारे एक बार माइक में बोलना, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, Still like an artist. Still like an artist. करेक्ट Feel like an artist. या। अब तुमने जो बोला है ना, सब ने जो बोला है, सबका बोलने का तरीका अलग था, इवन दो वर्ड सेम थे।
वाई? क्योंकि तुम्हारा जो बोलने का तरीका है, इफ एनीबडी इज लिविंग इन मुंबई जैसे मैं हूँ, या एनीबडी इज लिविंग इन दिल्ली, एनीबडी इज लिविंग इन न्यूयॉर्क, एवरीबडी विल स्पीक द सेम थिंग, बट उनका बोलने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि वो उसे उन्हें उनके एनवायरनमेंट से मिला है। ये आपने इन्वेंट नहीं किया, ये बोलने का तरीका आपका नहीं है। सेम वे कपड़े, आइडियाज, थॉट प्रोसेस, डिज़ाइन जो आप बनाते हो, कुछ भी आपका नहीं है। यू absorb everything as you go on. So everything intentionally or intentionally is stolen. There is nothing new under the sun. पहले तो ये बात को एक्सेप्ट कर लो। तो जिसे हम ओरिजिनलिटी बोलते हैं ना कि ओरिजिनलिटी, दिस इज माई ओरिजिनल थिंग, लाइक यू कैन से दिस इज योर ओरिजिनल वॉइस। वाई? बिकॉज दुनिया ने आपको बोलने का तरीका दिया, ऊपर वाले ने आपको एक जगह पे पैदा किया जहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेज आपको दी गई, और फिर वो आवाज़ आपके गले से, आपके वाइब्रेशन कॉर्ड से उस टोन में निकलती है, इसलिए वो आपकी आवाज़ है। दिस इज माई ओन वॉइस, बट इफ यू लुक इन टू इट, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम other places, and this happens with everything. You ask an artist, where do you get your ideas? A real artist will always say that they stole the ideas. Real artist हमेशा ये बोलेगा कि मैंने आइडिया स्टोल किया है। What am I going to teach you? I'm basically going to teach you how to steal. Do we want to be bad stealers, bad thieves? No. हमको thief नहीं, हमको चोर नहीं बनना है, ठीक है? हमको हाइस्ट करनी है, हमको वो लेवल पे जाना है। तो एक बात बताओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, वो छोटी छोटी चीज़ें चुराएगा कि बड़ी चीज़ें चुराएगा? बड़ी चीज़ें चुराएगा, ऑब्वियसली। क्यों बड़ी चीज़ें चुराएगा, ज़रा आंसर देना। अगर आप एक चोर हो और आप दुनिया के सबसे बड़े चोर हो, तो क्या आप चोर बाज़ार में जाके 100 रुपये की घड़ी चुराओगे या डायमंड चुराओगे? क्या चुराओगे? बड़ा चोर है, बड़ी चोरी करनी है। क्यों बड़ी चोरी करनी है, बताओ मुझे। क्योंकि लोग उनको जाने थे। क्योंकि लोग उनको जाने, दैट इज़ वन पॉइंट। व्हाट इज एल्स? देखो, जितना बड़ी चोरी करोगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। लॉजिक? यस। सो यू ऑलवेज हैव टू क्वेश्चन इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ये आप हो, ठीक है, और आप क्या हो? आप चोर हो यहाँ पे। In the act of stealing, if you want to steal, you always have to ask one simple question, भाई is it worth it to steal? ये बताओ ना, क्या कुछ भी थोड़ी चुराएंगे हम, है ना? If I say it in very bad language, हम चिंदी चोर थोड़ी है, हम छोटी छोटी चोरियाँ थोड़ी करेंगे यार, हमको तो बड़ी चीज़ चुरानी है। इसलिए आप हमेशा एक क्वेश्चन खुद से पूछोगे, वर्थ है क्या चुराने के? और अगर वर्थ नहीं है चुराने के तो फिर मतलब नहीं है। समझा इतना? अब चीज़ें वर्थ कब होती है चुराने के, दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अब यहाँ पे ना इसके अंदर पूरा चोरी का प्रोसेस है कि चोरी करनी कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें चुराना है, क्या चुराना है? जो चीज़ वर्थ हो। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ वर्थ है? हाउ विल यू फाइंड इट इज़ अ क्वेश्चन। ओके, अभी सबसे पहला पॉइंट, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं खाली एक बार रिपीट कर दूंगा। नथिंग इज़ ओरिजिनल। हर चीज़ चुराई हुई है, और हर चीज़ जो आप बनाते हो, अगर लोगों को ये पूछा जाए कि अरे उसने बहुत ओरिजिनल काम किया, फॉर एग्जाम्पल तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, ये जो गाना है ना, पहले मुझे ऐसा लगता था क्या ट्यून है, मज़ा आता था वो गाना सुनने में, और 2-3 साल हो गए थे वो गाना सुन के, जब मैंने एक अचानक रील देखा कि वो फॉरेन से पूरा म्यूज़िक चुराया हुआ है। तो कई बार जब लोग किसी भी चीज़ को ओरिजिनल बोलते हैं ना, अगर तुम लोग मुझे वो टाइम पे बोलते हैं कि क्या ये गाना ओरिजिनल है, बोलता हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। वो आप ओरिजिनल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको उसका ओरिजिनल पार्ट पता ही नहीं है, आपको उसके मेन रेफरेंसेस नहीं पता। द सेम थिंग हैपेंस विथ एवरी डैम सिंगल थिंग। अब अगर आप एक चोर की नज़रों से देखो, जो फॉर एग्जांपल आप एक एरिया में हो जहाँ पे आप चोरी करने गए हो, आप अगर एक चोर की नज़रों से देखोगे, सो आप ये सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा है बुरा है, ये सब मत सोचो, क्योंकि वैसे भी कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब चुराया हुआ ही है। आप ये सोचो क्या ये चोरी करने लायक है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट वर्थ इट। ये आपका पहला माइंडसेट होना चाहिए। अब आगे जाने के बाद में एक बेसिक चीज़ आती है, इट इज़ कॉल्ड द जेनोलॉजी ऑफ आइडियाज़। तो जब भी आपको कोई चीज़ चुरानी है, तो पहले बात तो हम पूछेंगे इज़ इट वर्थ इट। ओके, मतलब चोरी अच्छी लेवल की होनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, इज़ इट वर्थ द रिस्क। इट कैन बी वर्थ द रिस्क, वाई? बिकॉज द प्लान इज़ अमेजिंग। चोरी अगर बहुत बड़ी है, लेकिन आपको पता है आप चोरी करने जाओगे बैंक में, और उसके बाद मालूम पड़ा पकड़े गए, तो फिर इज़ इट वर्थ इट? नो। सो हाउ डू यू स्टील इज़ वन थिंग, सेकेंड इज़ व्हाट डू यू स्टील। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चार्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग इज हाउ। इन हाउ, वन इज हाउ
एंड अदर इज वॉट। ओके, अब हाउ वाले पार्ट को पकड़ो। हाउ बेसिकली एक चीज़ बताता है आइडियाज़ के बारे में। हमको क्या चुराना है? आइडियाज़। तो आप आइडियाज़ कैसे चुराते हो, ठीक है, क्या होता है? तो अगर आइडियाज़ सही तरीके से चुराने हैं तो मुझे खाली एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है? ध्यान से देखो और मुझे बताओ आपको कितनी लाइन्स दिख रही है? 2 lines. 2 लाइन्स। एवरीबडी, आर देयर मोर लाइन्स देन दैट? 3. कौन बोला 3? Rowan. वेरी गुड बच्चा, तेरा 3 लाइन्स, एक ये और एक ये। The black one is considered as The black third one line. can be considered as a line as well. So जो आइडियाज़ होते हैं ना वो ऐसे ही बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका इन्वायरमेंट ने आपको लैंग्वेज दी, आपके घर वालों ने आपको टोन बोलने का तरीका दिया, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपको उसका मैनरिज्म आया और आपकी खुद की आवाज़, ये सब मिला के आपकी ओन वॉइस का आइडिया बनता है। सेम वे दुनिया में जितने भी आइडियाज़ हैं वो ऐसे पार्ट्स में आते हैं और आप उन पार्ट्स को कंबाइन करते हो। जब आप उन पार्ट्स को कंबाइन करोगे तो उसको मिला के अब एक नया आइडिया, एक बेटर आइडिया बनेगा। इसकी वजह से एक चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि whoever is a great artist और whoever is stealing like an great artist, he puts a lot of work in। तो ऐसा नहीं है कि चोरी कर रहे तो बस बैठे बैठे चोरी कर ली, नहीं भाई, बहुत मेहनत की है। कोई भी अच्छी मूवी देख लो हाइस्ट के ऊपर, मनी हाइस्ट ले लो फॉर एग्जाम्पल, ला कासा डे पपेल, कितनी मेहनत करते हैं उन लोग चोरी करने के लिए। यू आर डूइंग द सेम थिंग। सो फार सो गुड। सो पहला कॉन्सेप्ट था दैट एवरीबडी इज स्टीलिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आइडियाज़ ऐसे बनते हैं, यू टेक वन आइडिया एंड देन यू एड योर आइडिया टू इट। द मोर आइडियाज़ यू टेक फ्रॉम अदर पीपल इज द बेटर थीफ यू विल बी, बिकॉज नाउ वॉट यू विल क्रिएट कोई इसको ट्रेस ही नहीं कर पाएगा एंड यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। मीनिंग अगर एक आइडिया ये है, एक आइडिया ये है, एक ये है, एक ये है और एनलेजर से एक ये है, अगर किसी ने सिर्फ यही चुराया है और यही बेच दिया है तो सामने वाले को पता चल जाएगा भैया ये वो दिस वर्क इज इन्फॉर्म्ड। बट इफ़ यू स्टील समथिंग लाइक दिस, लेट्स जस्ट से, देन नोबडी विल बी एबल टू से ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो आपने किया है ये आपने ही किया है, ये किसी और ने नहीं किया। दैट इज़ अनदर थिंग। अब शम्स का एक क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन ले लेना दो। कंफ्यूज नहीं होते किस बारे में? नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर अ राइटर, तो उस राइटिंग के अंदर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है बहुत डिटेल में, तो आपके कंफ्यूज होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, अगर बिना पढ़े लग के कोई भी चीज़ जाके स्टील करने वाले हो तो फिर कंफ्यूज होंगे ही होंगे। बट इफ़ यू हैव पुट द वर्क इन, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ऑब्जर्व करके उसको इस तरह से हम पेश करते हैं, दैट मैटर्स। करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है और ये ना, ये बेसिकली हम ट्रैक कर पाएंगे कि देखो कैसे आता है ये, ठीक है। पैराग्राफ है, मैं पढ़ लेता हूँ। जस्ट एज यू हैव अ फैमिलियल जीनोलॉजी, यू कैन ऑल्सो हैव अ जेनोलॉजी ऑफ आइडियाज़। मीनिंग जैसे तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे मम्मी प्लस तुम्हारे पापा इज इक्वल टू यू, बिकॉज तुम्हें कुछ एट्रीब्यूट्स तुम तुम्हारे मॉम के जैसे दिखते हो, कुछ काम तुम तुम्हारे डैड के जैसे करते हो और फिर उसमें तुम्हारा ओरिजिनल पार्ट है। आइडियाज़ भी ऐसे ही बनते हैं। सो कहाँ से चुराओगे? आपको आपकी फैमिली पिक करने मिली? नहीं। आपको क्या पिक करने मिला है? यू गेट टू पिक योर टीचर्स, you get to pick your friends, you get to pick your for example music you listen to, you get to pick your books. Okay, so where do you get all this? You get all this from quality movies, poems, life, observation and anywhere else, friends. अब है ना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे याद है, मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरा पर्सनल फोटोग्राफी का कोर्स होता है ना, उसके अंदर एक स्टूडेंट था, तो उसने मुझे बोला कि सर मैं फोटोग्राफी के लिए क्या होमवर्क करके लेके आऊँ। एंड ही वाज लाइक मैं किसी को मतलब पिंटरेस्ट पे सर्च करूँ, क्या करूँ? तो आई वाज जस्ट टोल्ड हिम तुझे क्या पसंद है? तो ही वाज लाइक मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है और पोएम्स पसंद है। तो बोला आते आते ना पोएम सुन के आना, बिकॉज यू विल ब्रिंग दैट वाइब विथ यू विच विल बी वे मोर इम्पॉर्टेंट। आप चीज़ें ऑब्जर्व ऐसे करते हो। तो ही वॉज आस्किंग मी फोटोग्राफी में होमवर्क कैसे करना है। लाइक म्यूजिक सुन के आ, तेरा होमवर्क आराम से हो जाएगा, पोएम सुन के आ, तेरा होमवर्क आराम से हो जाएगा। ओके, बिकॉज आप वहाँ से चीज़ें उठा के लाते हो यहाँ पे। सेम वे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जो तुम लोग में से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मेरे स्टूडेंट थे पहले के कोर्स में भी, टाइपोग्राफी का जब असाइनमेंट होता है, लिटरली टेल देम बाहर जाओ एंड लुक एट द टाइपोग्राफी ऑन द बैनर्स,
ऑन वॉट वे समबडी हैज़ रिटन। किसी ने अगर कोई पेज पे कुछ ड्रॉ किया है तो कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर पे जो लिखा हुआ है ये टाइपोग्राफी कैसी दिख रही है। यू हैव टू स्टील फ्रॉम दिस एंड पुट इट इन टू योर पोस्टर। ठीक है, तो जब उन लोग टाइपोग्राफी ऐसे पढ़ते हैं ना दुनिया में अपना दिमाग खोल के, उसके बाद में उन्हें समझ में आता है कि अरे ये रियल है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो। सो वॉट यू विल स्टील, एवरीथिंग। यू विल स्टील आइडियाज़, किसी के बोलने का तरीका, किसी बोलने का मैनरिज्म, किसी की सोच। कोई रिक्शा पे कुछ लिखा हुआ है, कोई ट्रक पे कोई कोट लिखा हुआ है, कोई आप ट्रेन में खड़े थे कोई बात कर रहा था आपने सुन लिया, कुछ फ्रेंड्स ने कुछ किया, एंड देन यू विल ऑब्जर्व 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 एंड यू विल टेक इट इन गोइंग फॉरवर्ड। आइडियाज़ बहुत सिंपल है, हैवी आइडियाज़ नहीं है इसके। अब पहला हमने क्या सीखा, पहले हमेशा पूछना कि मेरे को आइडिया चुराना है, इज़ इट वर्थ इट, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आइडियाज़ कैसे बनते हैं। 2-3-4 आइडियाज़ को मिला के एक नया आइडिया बनता है। आइडिया, न्यू आइडिया, आप ऐसा ड्रीम में से उठोगे और एक नया आइडिया होगा, ऐसा नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करोगे, उसको मिला के एक नई डिश बनती है। इस डिश में अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेजर से मैगी बनाता, नहीं मैगी नहीं, बॉयकॉट कर रहा हूँ मैं, क्या बनाया, ओके, लेजर से हक्का नूडल बनाता, ओके, ये डिश है। हक्का नूडल में कई चीज़ें पड़ेगी, नूडल पड़ेगा, सब्ज़ी पड़ेगी, सॉसेस पड़ेंगे, ऑयल पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, हक्का नूडल में बैगन डाल देते, चलेगा? हाउ मेनी पीपल से यस हक्का नूडल एंड बैगन प्लीज? ना ना, चलेगा। हेल्दी लोग नहीं हो तुम लोग, यू पीपल आर नॉट हेल्दी पीपल। बट द थिंग इज you cannot put vegan in hakka noodle. The same way you cannot put any rubbish in your mind to create or have a new idea. So एक चीज़ हमेशा याद रखना, if you are consuming garbage you will produce garbage. So if you are having art ना, अगर आप पिक्चरें ऐसे इंसान की देख रहे हो जिस डायरेक्टर का कोई दिमाग ही नहीं है, तो फिर आप भी अच्छी पिक्चरें नहीं बना पाओगे। अभी मेरे को पहले ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ। मैंने आज तक सत्यजीत रे, जो बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, आज तक उनकी कोई भी पिक्चर नहीं देखा है, ओके। और फिल्म इंस्टीट्यूट में या जब भी आप फिल्म स्टडीज़ करते हो ना, तो उनकी ही पिक्चरें दिखाई जाती है। अब मैंने एक बार देखने की कोशिश किया था, मैं बोर हो गया था, तो मैंने रख दिया, मतलब यार नहीं देख सकता मैं। द थिंग इज़ यहाँ पे गलती है, क्यों? क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देख रहा था, और वो एंटरटेनमेंट अब मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं क्रिस्टोफर नोलन को देख के बैठा हूँ। क्योंकि हम क्रिस्टोफर नोलन देख रहे हैं, हम लोग इंसेप्शन देख रहे हैं, हम स्पाइडरमैन देख रहे हैं, मार्वल देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। उसके कंपैरिजन में कोई स्लो मूवी एंटरटेनिंग नहीं लगती, लेकिन इनकी मूवी जिसने कंज्यूम किया है वही अच्छी मूवी बना पाएगा, इसलिए ये पिक्चर उनको दिखाई जाती है। Because it is not garbage, it is pure gold that he has created. And so for people, for example, अल्फ्रेड हिचकॉक हो गया, और बाकी जो भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, बड़े बड़े पेंटर्स थे, जिन्होंने लेवल का वर्क क्रिएट किया है, अगर आप उनको पढ़ते हो, पिंटरेस्ट पे जाते हो, रिसर्च करते हो, बिहांस पे देखते हो, तो फिर आप वहाँ से आइडिया चुरा के लेके आ पाओगे। नहीं तो अगर आप रील पे जाते हो और कोई भी ऐसे वैसे इंसान की डिज़ाइन देख रहे हो और उसकी डिज़ाइन खींचोगे, तो फिर आपकी डिज़ाइन भी बकवासी बनेगी। So you will watch movies, you will watch series, you will stand poetry, you will understand everything, but who? Somebody who is of good caliber. तो अभी से अपना टेस्ट इम्प्रूव करना शुरू कर दो, ओके, दैट इज़ योर फर्स्ट टास्क। आज बैठ के हम ये सोचेंगे कि मैं क्या कंज्यूम करता हूँ। क्या मैं बिग बॉस देख रहा हूँ? क्या मैं, फॉर एग्जाम्पल, एम आई वॉचिंग एनी थिंग? एंड वेन आई से कंटेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिक्स। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे रील मत देखो, प्रोडक्टिव नहीं रहोगे, मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ढंग की रील देखो ताकि ढंग का काम बने। तो अभी आपको बैठ के सोचना है कि आप कौन से लेवल के आर्टिस्ट हो, एंड दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन कौन से लेवल के थीफ हो। क्या आप कुछ भी बकवास कॉपी करना तैयार कर लेते हो, कैनवा पे जाके टेम्पलेट उठा लोगे, या तो फिर आप पिंटरेस्ट पे जाओगे, 4-5 टेम्पलेट देखोगे और वो उठाओगे और मेहनत से उसको बनाओगे। मेहनत कहीं नहीं जा रही है, लेकिन वहाँ से चोरी करोगे। दैट इज़ अ क्वेश्चन, आप चोरी कहाँ से करते हो? इसके लिए हमेशा याद रखना, इफ़ यू पुट गार्बेज इन, गार्बेज ओनली विल कम आउट। ये था थर्ड कॉन्सेप्ट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस पीपल। यस, शैल आई गो फॉरवर्ड? ओके, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। ओके, सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट, गार्बेज इन गार्बेज आउट वॉज द थर्ड पॉइंट। ऐसा बोला जाता है, और यहाँ पे ये गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला थ्योरी है, दैट इट हैज़ टू बी क्वालिटी ओनली।
वाई क्वालिटी? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इफ़ यू लुक एट योर 5 पीपल क्लोजेस्ट टू यू, उनका जो इनकम लेवल रहेगा ना, आपका भी इनकम लेवल उतना ही रहने वाला, एंड इट इज़ ट्रू। उनका जो मैनरिज्म रहेगा, दिस इज़ इनकम, जो अभी रिसेंटली पता चला था जब पढ़ना शुरू किया था। लेकिन मेरी मॉम बोलते थे कि दोस्त अच्छे बनाना, बिकॉज दे विल गिव यू सिमिलर मैनरिज्म। अगर आप कभी बदतमीजी कर रहे हो या प्यार से बात नहीं कर रहे हो, तो मम्मी पूछती थी किसके साथ हैंग आउट कर रहा है ये। सेम वे द आइडियाज दैट यू हैंग आउट विथ, आइडियाज will give quality. So if you hang out with artistic people, you will have artistic ideas. If you hang out with boring people as in people who are not particularly artistic, then you might not get commercial level artistic vibe. That is all I mean. समझा इतना? So these people that you are going to be within the vibe, steal from. स्टीलिंग के लिए एक टारगेट तो होना चाहिए, कहाँ से स्टील कर रहे हैं। दिस इज द पीपल फ्रॉम हुम यू आर स्टीलिंग थिंग्स। आप इन लोगों से चीज़ें स्टील कर रहे हो, ओके ये हमारा टारगेट है। तो जब टारगेट सेट कर रहे हो तो यू आस्क अ क्वेश्चन, इज इट वर्थ इट, एंड इफ इट इज़ वर्थ इट देन ओनली टेक इट। गेटिंग द आइडिया? अभी इसके आगे जाते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लाइम योर फैमिली ट्री। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, और कमाल की बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट आर्ट का है ही नहीं। तो जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो मेरे को अचानक से क्लिक हुआ, एंड इट इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। जैसे तुम्हारी फैमिली ट्री होती है, तुम हो, डैड है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, और ऐसा ब्रांच होता है, बराबर। अब क्या होता है, इसको छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, मैं तुम लोग को कुछ अलग बताता हूँ। सो बेसिकली अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एंड आई वॉज स्टडिंग रिसर्च, और रिसर्च के अंदर उन्होंने बोला था कि व्हेन यू आर बेसिकली रिसर्चिंग ना, यूजुअली जो लोग रिसर्च करते हैं उनका क्या तरीका होता है, तुम लोग भी जब मास्टर्स करोगे तुमको भी रिसर्च, और ये ध्यान में रखना है, पॉइंट आएगा वहाँ पे। तो रिसर्च में लोग एक गलती क्या करते हैं पता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा लिटरली रिसर्च है कि हाउ डज स्टोरी टेलिंग हेल्प इन मेकिंग टीचिंग, दैट इज़ माई रिसर्च। ये मेरा लिटरली अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो एक तरीका क्या है, मैं स्टोरी टेलिंग पे जाके सर्च करूँगा, उसके बाद मैं टीचिंग पे सर्च करूँगा, फिर बीच के सारे पॉइंट निकालूंगा, फिर सब पे सर्चिंग करूँगा, मेरे को बहुत मेहनत लगेगी। तुम लोग भी जब डिज़ाइंस बनाते हो तो पिंटरेस्ट पे तुम लोग ऐसे ही ढूंढते हो, एक रेफरेंस ढूंढ लिया, फिर दूसरा ढूंढा, फिर तीसरा ढूंढा, फिर चौथा ढूंढा। ये गलत तरीका है, सही तरीका अलग है। इमेजिन करो तुम्हारा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, अगर तुम उसके साथ हैंग आउट कर रहे होते तो तुम ये देखते ना वो किससे मिल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, और तुम्हारा नेटवर्क भी वैसा ही होता, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि स्टीव मैकरी इंडिया आ गया फॉर एनी रीज़न, और मैं फॉरेन चला गया, एंड माई इंस्पिरेशन, वन ऑफ द इंस्पिरेशन, लेट्स जस्ट से इट इज़ एक बहुत बड़ा नाम है फोटोग्राफी का, तुमको नहीं पता होगा, हिज नेम इज़ जोल सार्टोर। बहुत बड़े इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, एंड ही इज़ राइट नाउ डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन एनिमल्स, ओके। ही इज़ कैप्चरिंग बेबी एनिमल्स जो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनका गोल है कि उनको पहले कैप्चर करें। अभी इमेजिन करो कि इस इंसान के साथ मैं घूम रहा हूँ 1 साल, तो मैं 10 लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा जिनसे ये इंसान मिलता है इंस्पिरेशन के लिए। सो इफ दिस पर्सन इज गोइंग टू हिज मास्टर, आई विल ऑल्सो गो। या रिसर्च ऐसे की जाती है। तो रिसर्च में जो रियल काम करने का तरीका है वो क्या है पता है? उन लोग बोलते हैं 10 रिसर्च मत ढूंढो, एक रिसर्च ढूंढो, उसके अंदर आपको पॉइंटर्स मिल जाएगी कि उसने किधर से उठाया था पॉइंटर्स, क्योंकि नथिंग इज ओरिजिनल, हर किसी ने कहीं ना कहीं से चोरी किया है। तो आप जिस बंदे को पसंद करते हो उसने कहाँ से चोरी किया था, फिर उसमें जाओ और देखो कि उसने कहाँ से चोरी किया था, और फिर ऐसे करके करते आपका ट्री बनेगा। द पीपल दैट यू लव सी वेयर दे स्टोल, द पीपल दैट यू लव फर्स्ट स्टील फ्रॉम देम, फिर उनके ऊपर वालों से स्टील करो, फिर उनके ऊपर वालों से स्टील करो, ऐसे करते करते ब्रांच आउट करो। ये रिसर्च का पॉइंट है, जो इसने सेम चीज़ यहाँ पे बोला है कि आपको, और ये चैट जीपीटी से बहुत ईजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टाइप माई ग्रेट इंस्पिरेशन इज जोल सार्टो, तो मेरे को उनकी फोटोग्राफी दिख गई तो मैं वहाँ से चुरा सकता हूँ। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि और किससे चुराऊँ, तो ये क्या बोल रहा है कि जाओ चैट, मतलब ये नहीं बोल रहा है, बट मेरे को ये आइडिया आया कि चैट जीपीटी पे जाओ, और चैट जीपीटी पे उसको पूछो कि वेयर डिड जोल सार्टो गेट हिज इंस्पिरेशंस। You know, for example, if you are a Amir Khan fan, by any example, who is the inspiration of Amir Khan? If he says his inspiration was Dilip Kumar, then who was the inspiration from Dilip Kumar? और आपको ना अचानक से एक पूरा lineage मिलेगा अपने लिए, जहाँ से आप चोरी कर सकते हो, क्योंकि सारे आपकी ही वाइब के रहेंगे। आप एक इंसान इधर एक इंसान इधर ऐसा नहीं जा रहे हो, आप अंदर से बिल्ड कर रहे हो, और आपको ये समझ में आएगा कि आपके आइडियाज़ डिराइव कहाँ से होता है। इतना समझा पीपल? यस। और
यूजुअली ना आप जो भी आइडिया देते हो, ये जो पॉइंट था ये इसके अंदर था, पर्टिकुलरली गार्बेज इन गार्बेज वाले पॉइंट में भी इसका एडिशन है, उसके बाद में जेनेटिक्स में भी इसका एडिशन है, और क्लाइम योर फैमिली ट्री में भी इसका एडिशन है। ये पॉइंट क्या है अब ये समझो। थोड़े टाइम पहले मैंने ये ड्राइंग बनाई, थोड़े टाइम पहले मतलब कल की बात हो रही है, कल ही बनाया मैंने ये। सो आई मेड दिस, और ये पहली बार मैंने वाटर कलर पेन से ड्राइंग बनाई है। यस, दिख रहा है सबको? अब पॉइंट ये है कि ये क्यों बनाया मैंने, वाई डिड आई मेक दिस? ये अचानक से बनाने का आइडिया किधर से आया? बिकॉज AI पे गिल्बी का ट्रेंड चल रहा है। हमने उनकी ड्राइंग्स देखी तो हमें अच्छा लगा कि यार ये वाइब तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ बनाते हैं, एंड देन वी एंडेड अप मेकिंग सिमिलर समथिंग्स ना। ये इसलिए हुआ क्योंकि दिमाग के अंदर जो ट्रेन ऑफ थॉट है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को पिन करती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथे को। तो अगर आप ट्रेस करें अपने थॉट्स को जाके, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप जो सोचते हो क्यों सोचते हो। पहली चीज़, मतलब 100% समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ओरिजिन मिल जाता है। सेम वे ये चीज़ आपके आर्ट का ओरिजिन आपको देगी कि मुझे ये आर्ट स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एस्थेटिक पसंद है, किसी को पॉप पसंद है, बट पॉप उसने देखा होगा तभी तो पसंद किया ना। किसका काम देखा था उसने, क्यों देखा था, उसके पहले किसका काम देखा था? दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंस्पिरेशंस, एंड वंस यू फाइंड योर इंस्पिरेशंस यू विल स्टील फ्रॉम देम। कैसे? एक से कुछ लिया, दूसरे से कुछ लिया, तीसरे से कुछ लिया, मिला के अपनी चीज़ बनाया। तो फर्स्ट थिंग वाज नथिंग इज ओरिजिनल, नथिंग इज ओरिजिनल। ये सब पॉइंट्स है पहले चैप्टर के, नथिंग इज ओरिजिनल। दूसरा पॉइंट क्या था? जेनेटिक्स, that was the second point. Third was garbage in, garbage out, garbage in and out. Fourth was, now that you know who you want, now that you have gotten the perfect person for your ideas, don't leave them, build onto their inspirations, and you will be able to get a lot more sources that are very valuable. यहाँ से आता है। तो इसने आपको बोला आपको वर्थ इट में तो जाना है, लेकिन ऐसे आप चीज़ों को और एक्सप्लोर करोगे। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट दैट बेसिकली सेज यू हैव टू क्लाइंब योर ओन फैमिली ट्री, मीनिंग दिस आर द इंस्पिरेशन दैट यू लाइक, ओन फैमिली ट्री। इसके बाद में ओके, दिस विल गिव यू लेगेसी। अब एक कॉन्सेप्ट जिस पे मैं वापस आना चाहूँगा, और वो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सत्यजीत रे का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मुझे ऐसा लगता था यार सत्यजीत रे को क्यों देखता है। द थिंग इज, जब आप पढ़ाई करते हो ना तो ज़रूरी नहीं है पढ़ाई इंटरेस्टिंग रहेगी, पढ़ाई पढ़ाई है। और यही फिफ्थ पॉइंट है, यू हैव टू स्कूल योर सेल्फ। खुद को पढ़ाना पड़ेगा, भले ही अच्छा लगे या ना लगे। ओके, मीनिंग चीज़ें कभी कभी बोरिंग भी होगी, हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं होगी। एक चीज़, अब ये सत्यजीत रे का जो पॉइंट था कि मैं अगर उनकी पिक्चरें देखूंगा तो बोर हो जाऊंगा, लेकिन आप हो जाओ बोर, कोई बात नहीं, आपको काम डालना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर क्वालिटी के लोगों के पास बैठना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार वो क्वालिटी वाला इंसान पसंद आएगा। वो क्या बोल रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसके काम करने के तरीके से आप क्या चुरा सकते हो, उसके आर्ट के वर्क से आप क्या चुरा सकते हो, उसके लिए आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू स्कूल योर सेल्फ, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज, मतलब उस कॉन्सेप्ट के अंदर ही, that I personally, the author here is saying कि Google everything, I mean everything. Google your dreams, अपने ड्रीम्स के बारे में पढ़ो, ड्रीम्स को देखो दुनिया में लोग कैसे देख रहे हैं। Google your problems, अपने प्रॉब्लम्स को गूगल करो। Google your questions that you have not asked before to Google. चैट GPT सारी बातें करो जो तुम्हें करनी है। फ्यूचर सेल्फ से बात करो, प्रेजेंट से बात करो, प्रॉब्लम से बात करो, हर चीज़ करो जो तुम्हारा दिमाग खोल दे। वैसे ही एजुकेशन होता है। एजुकेशन और स्कूलिंग में फ़र्क है। ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है स्कूल में जो पढ़ाया उससे ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है तुम्हारे लाइफ टाइम में अभी के लिए, पर ये तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। पर क्या ये एजुकेशन नहीं है? ये एजुकेशन है। यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ एजुकेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट आर वेरी नॉन ऑफिशियल और नॉट स्ट्रीमलाइंड। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, बुक के अंदर नहीं है। वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड कि कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक कोर्स से नहीं होता है, और ये मैंने नोटिस किया है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में घुसना है तो एक कोर्स करना पड़ता है। एक कोर्स आपको एक साइड बताता है उसका, फिर दूसरा कोर्स करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो, फिर पढ़ो, फिर लोगों से बात करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट
जैसे अभी आप स्टील लाइक एन आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल कर रहे हो, ओके अभी आप स्टील एंड लाइक एन आर्टिस्ट पढ़ रहे हो, अभी आपको खाली ये साइड मिल रहा है वो बुक का जो मैं समझा रहा हूँ। अभी आप अगर पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ये साइड भी समझ में आए, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आए, आप डिस्कशन करोगे आपको ये चीज़ समझ में आए, आप समझाओगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में आए। आपके साथ अगर कोई होगा, किसी ने आपका काम चुराया और फिर आप उसको देखते हो और आप बोलते हो यार सही किया, बहुत अच्छा काम किया है, मतलब आई एम वेरी प्राउड दैट यू टुक माई वर्क एज इंस्पिरेशन, तो आपको हो सकता है ये वाला साइड समझ में आए। और जब ये कंप्लीट होगा तब एक्चुअल में आप कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हो। ये हर कॉन्सेप्ट के साथ है, फोटोग्राफी के साथ भी। द रीज़न इज आई एम सेइंग दिस, मेरे को 3 साल हो गए फोटोग्राफी पढ़ाते पढ़ाते, आज तक, अभी कल ही एक कोर्स खत्म हुआ, आज तक हर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में समझ में आता है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मैं सेम स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि नए बच्चे आते हैं उनको बेसिक से पढ़ाना होता है। तो अगर 10 कॉन्सेप्ट है तो उसमें से मैं 2 कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ उनको, क्योंकि सारे 10 पढ़ाऊंगा तो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन वो 2 कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद में मेरे को रियलाइजेशन होता है, सोचा यार ये पॉइंट तो अपन ने आज तक कभी खोल के देखे ही नहीं थे। ये हर लेक्चर के बाद में रियलाइजेशन होता है। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक्स, मिनिमम बेसिक्स। दिस इज़ माई बुक फॉर फोटोग्राफी, दिस इज़ माई ब्लैक बुक, जो मैंने बहुत ढूंढ ढांड के कहाँ से ढूंढ के पढ़ा है। ये ना कोर्स में पढ़ाया गया था ना कहीं और पढ़ा गया था, इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये पूरी बुक कॉम्पोजिशन पे बिल्ड है, मतलब टेक्निकल बेसिक्स है लेकिन हायर बेसिक्स, हायर मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी मैंने लाइफ में फोटोग्राफी की नॉलेज सीखा है सारी इस बुक के अंदर है। ओके, सो इफ़ यू ओपन दिस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मतलब इतना मैंने पढ़ा है, ठीक है, इट इज़ 3 years वर्थ ऑफ एजुकेशन, मैं उसमें से खाली इतना पढ़ाता हूँ, सिर्फ इतना पढ़ाता हूँ, इतना पढ़ाता ही नहीं हूँ। ये जब मैं बार बार रिपीट करता हूँ और जब मैं बार बार पढ़ाता हूँ, इसके अंदर मेरे को समझ में आता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये पॉइंट तो कभी नहीं सोचा था, ये पॉइंट तो अलग है। आपके पास में यू हैड फॉर एग्जाम्पल यू वर कुकिंग चिकन, एक होता है चिकन को खा लेना नॉर्मल, और एक होता है चिकन को मैरिनेट करना और उसको सारा जो मसाला है एकदम अपने अंदर लेने देना। दिस हैपेंस विद वेजिटेबल्स आल्सो आई अज्यूम, ठीक है। अगर आप वेजिटेबल को करी में छोड़ दोगे तो एक टाइम के बाद ना वो सारा मसाला एब्जॉर्ब कर लेता है। हैपेंस विद राइस एज वेल। दिस इज द सेम वे यू एब्जॉर्ब आइडियाज़। तो हमको रुकना नहीं है, हमको खुद को फेंक देना है उस चीज़ के अंदर। एंड द मोर यू ऑब्जर्व, मोर यू एब्जॉर्ब, मोर यू एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व बोथ, देन यू विल गेट इट। सो यू विल हैव टू स्कूल योरसेल्फ विथ होम, किससे चुराना है, क्वालिटी किसकी है, वो किसको स्टडी कर रहा है, मैं भी इसको स्टडी करूँगा और फिर वहाँ से चीज़ चुरा के लेके आऊँगा अपनी आर्ट बनाने के लिए। कूल, ये था 5th पॉइंट, दैट इज स्कूल योरसेल्फ। अब सेव योर वट एवर यू स्टोल, मीनिंग मेहनत करनी है ना, आप करनी तो पड़ेगी, तो आपको एक जर्नल बनानी पड़ेगी और यही आपका टास्क है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसी जर्नल। स्टोरी टेलिंग में जब कहानियाँ सुनाई जाती है तो ये कॉन्सेप्ट ना राइटिंग से लिया हुआ है। ये मेरी स्टोरी टेलिंग जर्नल है। सो यहाँ पे सारे मेरे स्टोरीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई रीड, ओके, द फ्लावर वेंडर किड, द टूथ इंसिडेंट, वंस आई गॉट लास्ट इन एसएल वर्ल्ड, माई फर्स्ट लेक्चर एंड द इंसिडेंट, the church and the couple story, the Spanish British person, the mustache Maharaj, the first lecture, resigning from the job, okay, my teacher's training, ये पूरे मेरी ज़िंदगी के ये है, अलग अलग स्टोरीज़ है, ओके, और बहुत है, पीछे भी 2-4 पेज है। सो व्हाट स्टोरी टेलर्स डू, राइटर्स डू, तो किसी ने मेरे को एक बार पूछा था आई थिंक इस पे कि ये बुक के अंदर क्या है, दिस इज़ माई स्टोरी टेलिंग जर्नल, तो इस बुक के अंदर बेसिकली ये है। ऑलराइट, तो व्हाट हैपेंस इज राइटर्स ना सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में नहीं रख सकते, एंड पर्टिकुलरली स्टोरी टेलर्स भी हर चीज़ दिमाग में नहीं रख सकते। सो व्हाट वी डू इज वी मेक अ जर्नल लाइक दिस। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन हमारी जितनी मेमोरीज थी हमने उनको लिख के रखा है ऐसा लिस्ट में। अब कभी कभी क्या होता है, मैं लेक्चर में बैठा हूँ, लेक्चर लेने वाला हूँ या यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं सोचता हूँ यार कौन सी स्टोरी इसके साथ जाएगी। सो दैट इज़ द टाइम आई ओपन दिस जर्नल एंड देन आई लुक कि हाँ ये वाली स्टोरी ना यहाँ पे बहुत अच्छे से ऐड हो जाएगी, ये वाली स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छे से ऐड हो जाएगी, ये वाली बहुत काम करेगी, एंड देन आई पिक अप दैट स्टोरी। सेम वे यू हैव टू राइट द आइडियाज़ दैट यू विल स्टील, कि यार ये शॉट यहाँ पे चलेगा, इस बंदे ने ये ऐसे बोला था, मैं भी यूज़ करूँगा, वो वहाँ से आएगा। सो दिस इज़ अ राइटिंग जर्नल। अभी ये बुक पढ़ के तुम्हारे साथ ऑब्वियसली मैं भी काम करूँगा। सो व्हाट आई विल ऑल्सो डू इज आई विल मेंटेन अ जर्नल इन विच कोई फ़ोटो अच्छा लगा
निकाल के रख लिया, किसी का कोई सेंटेंस अच्छा लगा निकाल के रख लिया, किसी का कोई आइडिया अच्छा लगा निकाल के रख लिया। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये मेरे आइडियाज़ हैं, हमको क्या करना है? चोरी करनी है। चोरी किससे होती है? दूसरों से। तो ये मेरे आइडियाज़ की बुक अलग और दूसरों से जो मैं चुराऊंगा वो बुक अलग। समझ में आ रहा है? सो यू विल हैव अ जर्नल, अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव स्टोलन फ्रॉम अदर पीपल एंड देन यू विल राइट दैम कि ये सुशांत का ना ये आइडिया बहुत अच्छा था, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। क्विंटन टेरेंटिनो का, उसने ये पिक्चर में ये किया था, मैं वो शॉट वहाँ से चुरा लूँगा, मैं इसका आइडिया यहाँ से ले लूँगा। एंड दैट इज़ हाउ यू विल एब्जॉर्ब। एक चीज़ और, कुछ भी नहीं लिखना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, खाली क्वालिटी वाली चीज़ें लिखनी है। सो यू विल हैव टू कीप आस्किंग योरसेल्फ कि जस्ट बिकॉज फ्री में मिल रहा है लेना है क्या? नहीं तो मत लो। आपको जर्नल और बुक बनानी है इन विच यू हैव टू सेव योर थेफ्ट फॉर लेटर। जितना चुराओगे बात के लिए रखना है। दैट्स इट। What is my intention of covering this book or this today's chapter specifically? And the intention is actually bigger than art. A lot of you people who are right here don't know what you want to do in life. I get it from so many of the students कि sir, I don't know where I want to go. Do I want to be a designer? Do I want to be a computer scientist? Do I want to be like, let's just say, a sports person? Though it is not that wide, but I really don't know what I do want to do in life. And I'm confused. Now, which course do I choose? That is usually the question that I get, like 80% of the times. And I have been giving a lot of answers differently. In this book, when I was reading it, I got the correct answer. And that answer is something that relates to my own life as well. So, the first thing that the chapter says, and my intention is with this particular section now, if you are somebody stuck in life who does not know where life will go or life will take you, then my intention is that at least reading this hopefully will get you out of that rut and you will get an idea of what actually you have to do. The first section is make things, know thyself. So translated in non-Shakespeare English is, if you make things, you will get to know yourself. Now, what the hell he is saying? If I had wanted to know who I was or what I was about before I started being creative, well, I'll still be sitting around trying to figure out myself instead of making things. In my experience, it's in the act of making things and doing our work that we figure out who we are. You're ready. Start making stuff. You might be scared to start. That's natural. There's this very real thing that runs rampant in educated people. It's called imposter syndrome. Second concept. Pehla concept, get started. Second, imposter syndrome. Third, the clinical definition of psychology is a psychological phenomena in which people are unable to internalize their accomplishments. It means that you feel like a phony. Phony means you're just faking it, okay? Like you're just winging it. That you really do not have idea of what you are doing. And most of the people watching this may be in that zone. Guess what? None of us do. Ask anybody doing truly creative work and they'll tell you the truth. They don't know where the good stuff comes from. They just show up and do their thing every day. Abhi, 3 concepts are talked about in this section. The first thing is, if the author has waited to know कि what do they want to do, they will never know. इसका रीज़न क्या है? अभी मैं मेरी लाइफ स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग मुझे बताना सही है कि नहीं. Let's just say that you are 5 years old and you go into the playground and you just want to run and play and enjoy life. Now you're going to go onto a cricket field. You try to hit the ball with the bat, you cannot hit it. But when the running comes in, so you obviously cannot hit a 6. That is not in your capacity at all. That is even not a concept for you. But as soon as you hit a ball and it goes for 1 or 2 runs far away, you are running at an amazing speed. So somebody looks at you and tells you, boss, why are you playing cricket? Come play football. You go into football and you do amazing. Most of the people who have been into sports found the sport like this only. They tried to do something, they found they have some other ability and they started doing that. Same thing applies to me. I was in chartered accountancy, hated it, wrote the day, did not like it. I was frustrated and I was in the same zone where I don't know what to do until I got really frustrated and then I just shouted, I want out.
There is only one thing that I knew I did not want to do, and it was simple. I did not want a desk job. मेरे को डेस्क जॉब नहीं करना था, इतना मेरे को पता था. तो जितनी भी चीज़ें डेस्क जॉब में आती है, be it an MBA, be it a CEO of a company, be it anything, I was like मेरे को नहीं करना है. And I was like okay, I started shooting, I enjoyed photography, jumped into photography. अब ये बहुत important part है. When I started going into photography ना, my word was simple. किसी ने मेरे को टाइम पे बोला था become a graphic designer, because graphic designing is, for example, it pays more money, it is more stable other than photography. मैंने उनको वही टाइम पे बोला था, no, I am not a graphic designer, I am a photographer. Now most of you were in my graphic designing course that I thought. At that time I used to think I was a photographer. Later on I started realizing when I was making posters, when I was taking pictures and then I was getting some work here and there, I realized I have an eye, or at least I think I have an eye for visual aesthetics. So I can try graphic designing as well. And I started enjoying that. Then later on, I started drawing illustrations as well, drawing. I never did drawing in my school. Some of you are coming here from my illustration course. I never did drawing in my school. But because I was in that vibe, in that field, I started drawing. Later on, when I got into teaching, by the way, first 2 years of my life after CA, I'm a photographer. The next 2 years, I'm a visual artist. Now what do I say? Am I teaching you arts? No. Am I doing arts? No. What am I here? I call myself now a visual, or I used to call myself a visual artist, a visual communicator. Then later on somebody told me you're not a visual artist, you're a media artist, because whatever you draw goes onto the media. Now what you will call me? I am a communicator. So abhi the field that I am pursuing is mass communication. The research I am doing is on storytelling. I am doing a research topic on short form video content storytelling for educational marketing for running a business. Now what you will call me? If I give a big tag to my name, it is I am a communicationist, if that is a word, or I am a communicator. So the thing is, you cannot ascertain who you are because you keep evolving. So if you sit and think, where do I want to go? It is not fixed. The post keeps moving. What you have to do is you have to just get started. You start doing something and then suddenly you realize, अरे ये ability भी है. Okay, I have the ability to speak as well. I can talk to the clients as well. Wow, I can teach as well. That is how it happens. That is the first thing that the author is talking about. So no matter who you are, you're watching it right now with me, you're watching it later, start working. Do not think who you are. Take any damn course in the world. And this fear comes from parents, honestly. मेरे घर में भी same है. So when I said ना, मतलब they ask, what are you going to do in life? अरे बाबा, I'm gonna fail in life and it is gonna be okay, chill. And that is what I experienced. The problem is we fear failing. MBA में चला गया, MBA का course ले लिया. What happens if I don't become an MBA? You don't become an MBA. You will do something else. You just have to be sincere enough. Alright? So the thing is, one thing that I would like to add in this concept by myself, what I have experienced. First thing, stop failing. For a moment, there is a quote, imagine what you would happen if you were not to fail in anything. What would you like to do? I would ask you another question. Imagine what would happen if you were to fail into everything that you were going to do. What would you do? If I go into a CA program and I pass and I'm still a failure because I don't like it, rather let me do whatever I want na. Let me fail there. It is okay. It is a better failure than that. Which means do not overthink this process. Get started. And when I say fail, I don't mean failing in career. That also. Failing in career, failing in life, failing to produce an artwork. That is what we are talking about. Okay? Make things, do stuff, go to interviews, go to job, try 5 different job internship. Why not? If you do not have a responsibility, you have a time, go for it, do 5 things. It's okay. Start doing stuff, because only when you start doing stuff, you realize who the hell you are. First point. Second point, and this is very akin to YouTubers. YouTubers have one thing called the imposter syndrome. What that means is, let's just say I am talking about failure. First thing, when I was about to tell you my story, one thing came in mind. Who asked you to tell your own story? Why am I telling you? I'm not a success. I'm not a big success. Why am I telling you my story? Who the hell am I to tell you the story? I'm not Sachin Tendulkar. I'm not Leonardo da Vinci. Why would somebody even care about hearing my story?
This thought process is called imposter syndrome. Every YouTuber has it. Because when we start making videos now, we question ourselves because the same a person whose book I am reading, his YouTube videos are on YouTube. Why am I making this? You have to fight that. And you have to say, boss, I'm making this because I'm enjoying this. That's it. Because if you keep thinking that, you will not be able to do anything. Because everything that you are about to do, somebody has done 10 times better. So what do? Do nothing? No, we will start working, we'll keep going. And it is the imposter syndrome that you have to fight. But what I can tell you is, it is like a negative uncle that you have, who comes in and tells you you cannot do it, and you're like, just shut up. This is what you have to do to your mind. That is the simplest understanding. Do not wait until you know who you are. Just get started. So you will come from where? When you get started. Now this is just ideas. When they compile, they make new ideas. So that is what this diagram is about. The truth is, when you make things, you know yourself. Now, knowing yourself is a process. It does not happen today, tomorrow. You're not going to meditate and think about something and suddenly, wow, okay, this is Sushant. Not gonna happen. Okay? Through years, until you die, you will keep on realizing who the hell you are. It is a process of knowing yourself. And why is it a process? Because you keep evolving. You're not just one person. You will never be just, I am this. It is not gonna happen. You will be doing something else later on. Okay? Now, because how you will evolve and what will happen if you start working. If you start working, you will understand your own powers. For example, simple example, playing football. Okay? If you play cricket, you realize you can hit really well. You can run really well. It is better you go into football or something, running. So, when you are acting, that is the time you know what is working and what you like to do. And then when you know what you actually like to do, then you get to know yourself a little bit. कि ये इंसान है, इसको ये पसंद है. Now, one of the biggest problems that come with acting is imposter syndrome. And in that, two parts are there. First, you feel like a fraud. And second, you say that I am not enough to do this. I don't know what I am doing. None of us know what we are doing. And I personally wrote this, me neither. Okay? What the hell am I doing? I am explaining a free class of what? Steal like an artist. Why? I don't know. I just like it. I know I like to explain, so I'm explaining. Do it. Okay? Don't overthink stuff. I want you guys to close your eyes. Now imagine the artist or the person, or this book is not particularly for artists, so you can be anybody. Imagine you are that person. The seat that you're sitting on is the chair that you want. You want to have that chair, or wherever you want to sit. In front of you right now is a big beautiful office. The office that you saved on Pinterest, it is that office. You have amazing view. You have all the work of yours, the amazing work, the work that has been featured in magazines, has been put on websites, has been featured in newspaper. No matter what work, be it a writer, be it an accountant, be you anybody who you are, your work is like basically in frames on the side of your walls. Now you have the work of your life, the best project that you can get, have it in front of you. And now what you are doing is start working on it. Think of 3 things that you want to do right now to get it achieved. And this is a particularly stupid part. I want you to actually do it right now. Close your eyes, close, your hands free. Start. If you are a writer, start writing. If you are a painter, start painting with your imaginary brush. If you are a photographer, start taking a picture. Imagine you are standing, you have a camera, you have the best scenery in front of you. Do it right now. Alright? Take the first step. Imagine yourself moving. Now I'm pressing the buttons and I'm clicking the picture. You are painting a stroke. Okay? You are writing a sentence. Now you have written one sentence. Write another one. Another one. Another one. In the meantime, your secretary comes in. Like knock on the door, and you say come in, and you're like yeah, and they're like okay, the client is here to meet you, and let's yeah, please come in. And then you basically are on the same chair, and the client comes in, they sit, and you have a conversation with them, and they are giving the biggest check of your life, and they just came in to thank you for the work you have done. You accept that check?
alright? You keep it and you tell them, if there is anything, just let me know. Now open your eyes. What were you doing? I did not tell you to go on to a vacation. You were working. This is how you work. In real life, this is how you work. This is called faking it. Fake it until you make it, they say, na? This is faking it. This is exactly what did you do? You pretended. You pretended to be someone that you want to be. And then you pretended to work. Now, this is the same concept taken in this book. When you sit on your desk, na, perform, pretend with open eyes. So, instead of closing your eyes and imagining a big, beautiful office, three things are there. For example, let's just say this was a theater. And if this is a theater, then you people are my audience. Okay? I am an actor. These are my tools, and I'll pretend to be a teacher. This concept I know nothing about as of now because this is an old concept that I have written. But I'll pretend to tell you that okay, this is how it goes, and this is how the flow goes, and this is where you reach. Okay? Now I'm an actor, you're my audience, I am making the script in time. Am I correct? Yeah? And these are my props. What happens if you do the same thing with your original things? So if you actually really pick up a brush and you pick up a page if you want to draw and you start pretending to be a great artist, what is wrong with that? You don't need to live in reality. You can, and this is actually a strategy used in NLP, by the way, neuro-linguistic programming. What they do is they imagine when they are not getting the creativity high enough. So they imagine that there is a sky and like there is some color coming and they pick it up and they work it out. When you work like this, now your juices start flowing. You did not worry about losing, making bad work. When you were typing on that computer or when you were working, you were not stressed. You were enjoying it. You were pretending. Why? Because you had achieved the dream. That is faking it. Okay. So now we will see what does the author mean by actually this. Fake it until you make it. First of all, dramaturgy is a word used by Shakespeare, which is basically like you are in a theater, perform. Okay, like you would perform without the hesitation. If I tell you become a king, you become a king. If I tell you become a slave, you become a slave. If I tell you become a, for example, fruit vendor, you become a fruit vendor. Same way, this is now your theater boss. The clock is your script. Whatever is on your desk are the props. Your desk is your stage. Sit there and fake it. क्या problem है? This will help you get started. So हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे थे ना, act, start acting. If you are having a problem with acting, this is the solution for it. Fake it. Don't act correctly. Who cares? What happens is, faking it means two things. One, you pretend to be someone. And second, you pretend to actually make something. Both are very powerful. Because when you pretend to be someone, and you have done this before, whenever there is a fight with anybody, and you people are very well in the age of actually fighting someone, okay? Whenever there is a fight, you people suddenly become the dons of your area, na? Okay? देख लूँगा तुझे, कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा. Suddenly there is pretending, which we do, to be someone. Why cannot we pretend to be artist? Why cannot you pretend to be somebody amazing that you want to do, your future self maybe? So the first thing is pretend to be like that. And the second is pretend to actually work or do something or make something. That is the exercise that you just did. Okay. Now what happens is, when you do this for a particular time, you use this, you perform on your desk. What ends up happening is you start just doing it. And when you keep doing it, you will get things done. And when you are done with that, okay, when you are done with that, what happens eventually is you make it. So what the thing that you are faking, we say fake till you make it. What happens is you fake, and suddenly, and this is exactly what we do in this thing, right? When we are basically, have you ever pushed a car? Yeah, the car is not working, the engine is not working. Okay, 3-4 people pushing the car. What are we doing? We are pretending that the car is working. And suddenly the engine starts. Same with creativity. Okay, you are just pushing that car a little forward. Then how does authenticity come if you pretend to be someone? You have to be pretending. Why are we pretending? We are just pushing. So if you think you cannot act, pretend to act. It is okay. Third concept is basically something amazing. And this is what the third concept says. Start copying.
You have to copy people. Alright? Now, who do you copy? Remember, I told you that we copy something and we copy the great artists. Now, here the question is not particularly who do you copy, because we have covered it. You copy great people, you do not copy anybody. But the question is, what do you copy? Nobody is born with a style or a voice. We don't come out of the womb knowing who we are in the beginning. In the beginning, we learn by pretending to be our heroes. We learn by copying. We are talking about practice here, not plagiarism. Okay, that is the question. कि अगर मैं किसी को copy करूँगा तो फिर मैं authentic कैसे हुआ? वो तो plagiarism हो गया, copying somebody else's work. Plagiarism is trying to pass someone else's work as of your own. Somebody has done something, I'll just pass it. Copying is about reverse engineering. I'll explain what this means. It's like a mechanic taking apart a car to see how it works. Now see, now is the important part that you will understand. Okay. So this is how it goes. This is the third concept in this section. See, when you people were born, you did not know how to walk. Okay. You looked at other people putting one step in front of another and you started walking. You did not know how to talk. You started copying your parents, and that is why some of you actually speak like your parents or your family or your around surroundings. Your accent is like that. So you saw what they did and you started copying them. Now, how is the process real? Okay, let's just say there was somebody who was original in the first place. So they got a first idea, let's just say of a language. That, okay boss, I have an idea of a language, that this is the language that I want to speak or how I want to speak it. Okay, then they did some research. Okay, this is what this word means, this is what the other word means, here and there, and then you understood, did the research, then you worked it out, then you tried to polish it, and then you finished it. That is how any idea gets developed. Okay, anything that you do in your life, this is the actual process of doing anything. पहले किसी के पास आइडिया आया, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के पास आइडिया आया, फिर उसने ट्राई किया कि इफ़ द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स लाइक दिस, ही हैज़ डन 10, 20, 30 steps and then he finally polished it and finished it. But tell me one thing, if the main bulb is finished and you already know that this is how a bulb works, is there any logic to go back and invent the bulb from again? No. We use the same bulb technology, we look at him and now we have understood how it works. They are saying the same thing, that you do not need to get here onto the idea. What you need to do is just copy your artist, so you can directly go to the finish. If you directly go to the finish, why do you directly go to the finish part? Because you have already proved, the working is already proved. So you do not need to do the research again. Why do the research pause? You can simply just have the thing and it is totally fine. This is copying. You have to copy something. Now here is the authentic part that will come in. The amazing thing is, this is called reverse engineering. You just look at somebody, how somebody does it, you started doing it. We have been doing this for the entirety of our life. You people say wanna instead of want to. Okay, I wanna do that. Did you invent wanna? No, you just saw it in some sitcom or something that I'm gonna do that, I'm gonna do that, and then you got to that idea that okay, this is working, let's do that. You may say it in a different accent, with a different tone, with a different vibe, mean something else, but you copied the finished product. What you did was, you took that and this is exactly what you did. Now see, this is where your authenticity arises. When we reverse engineering or reverse engineer it, you go back in the process. So you take the finished product and then you start evaluating it. So you polish it in your own way, you work out it in your own way, and when you're working it out, you suddenly realize, boss, this can also be done now. So you think something else can be done better. And humans are incapable of copying exact things. So if you want, you can try to imitate this exact lecture that I'm giving in your own words and it will come out different. Why? Because you are not me and I'm not you. So when you start speaking the same exact ways that I'm speaking, with the same exact lighting that I have, with the same everything, still you will be different. Manya will be Manya, Swayam will be Swayam, Krish will be Krish. Why? Because accents will differ, speaking style will differ, you will differ. So the thing is, you start copying what you love. And when you copy, at the end, you have
taken the finished product as a raw material and started adding your own self to it, and then you will find who you are. So far so good. This is how you make it authentic. And you won't be able to make a perfect copy, obviously, but what you will make is yourself. Because let's just say somebody, okay, and this is basically me kind of demarketing myself, but let's just say somebody wants to copy this idea of what exactly I do. So they take a book, they take my diagrams that I explain with, they take my talking style, my setup, my nature, and they make 100 videos like this. Believe me, they'll start with what I do, but they'll end at who they are. Because what trick did you use? You tricked your brain into actually working. That person was not making any video until yesterday. Why? Because they was thinking video के लिए idea नहीं मिल रहा है, setup नहीं मिल रहा है, copy नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है. They saw me, they thought maybe this works. This got them into working, and they started working, and they started 10 and they arrived at doing that. So what you started doing was you actually started acting, and you were acting again and again by copying someone, okay, by faking it, and then you arrived at who you are. So you get to know yourself. This is the same point, just the third step in it. Now, one important thing, but do not copy the person, copy their work. You have to copy the way they think, not the way they look. So for example, somebody is painting, and I used to do this exercise kind of, as like I used to do it just because I used to think that it was very fancy. So, and try doing this at galleries, you will make a lot of friends, okay? So this is what you do, all right? Imagine there is a painting here, okay? And let's keep a painting here. Like I'll stand in front of the painting, okay, in a live gallery, moving people, and I'll do this. And the people watching is like, oh, he's studying. Wow, amazing. Okay, and I'm just doing that to make friends. If you just realize what just happened, I did not think I was copying. I was actually, and this actually happened in my auntie's house. They have a very old painting that we have seen at least 1,000 times now. Every time we enter her house, we see that painting. It is a painting of basically a boat and all. I was getting bored, and this is exactly where I did that, and there was nobody watching me. Okay, I just sat on a stool and I started doing this because I wanted to know how the painter moved his hand when they were painting. And then I realized I was in the painter's shoes. I was pretending to be the painter. And this is exactly the way you can actually mimic or think what exactly the artist was thinking, what exactly the photographer was thinking. So a lot of times when we study photography, we do not just say, oh, he did great, chalo, let's do this. No, we think, what did he think? Why did he take that picture? So if somebody was to mimic this set, they'll keep a branch here, have some leaves on it, they keep a light here, they keep a light above, they put a whiteboard in the back, they put a camera there, and they put a chair there. But a better interior, if there is a set person thinking, they will not think कि इसने ये किया है तो ये कर दो. They'll think इसने ये क्यों किया? Why the hell did it put a camera there? Why the hell did he put a branch there? Why the hell is the color orange? The color could have been green. This is what you have to. You have to sit and analyze why the person is doing what they are doing. Be it painting, be it anything. When you look at amazing people, when you want to copy someone, don't bluntly copy them. And that is exactly something exaggerated in the next point, which is imitation is not flattery. Who have seen mimicry ever? The thing that happens with great mimicry artists is they don't only come with a mimicry. They are not trying to do a Salman Khan mimicry. They are trying to do a joke in Salman Khan style. There is a difference. A mimicry artist, you can watch for 30 seconds. Wow, he is doing such a great impression of Shah Rukh Khan. But an artist who comes up with script, jokes, inhibiting their soul, understanding why Salman moves the way he moves, will be able to put such a great impression of Salman, which Sunil Grover is doing right now, that you will keep watching him maybe more than you watch Salman, or maybe more than you watch other actors. That is the magic that they put in. That is where you do not have to imitate. And this is written by Francis Ford Coppola. Imitation is not flattery, is a chapter. We want you to take from us. We want you at first to steal from us, because you
can't steal. You will take what we give you and you will put it in your own voice. And that's how you will find your own voice. And that's how you will begin. And then one day someone will steal from you. That is exactly how it works, boss. At some point, you will have to move from imitating your heroes to emulating them. Imitation is about copying. Emulation is when imitation goes one step further, breaking through into your own thing. You have done the other person so much that now you do them with your own way. And this can go into mimicry, this can go into painting, photography, anything. There isn't a move that's a new move. No move in the world is a new move. No drawing in the world is a new drawing. Everything that has been said before and will have to be said again because the world is not listening. The basketball star Kobe Bryant has admitted that all of his moves on the court were stolen from watching tapes of his heroes. But initially, when Bryant stole a lot of his moves, he realized he couldn't completely pull them off because he did not have the same body as from the guys he was actually taking these things away from. So he adapted the moves for himself. Conan O'Brien, who is a comedian, okay, he talked about how comedians try to emulate their heroes, fall short and end up doing their own thing. Johnny Carson tried to be Jack Benny, but ended up Johnny Carson. David Letterman tried to be Johnny Carson, but ended up being David Letterman. Okay? Conan O'Brien tried to be David Letterman, but ended up being Conan O'Brien. In Conan O'Brien's own words, it's our failure to become that makes you authentic. If I try to be, let's just say, I try to be Joel Sartor, my hero. Okay? If I want to be him, I cannot be him because he is a different thing, I'm a different thing. But if I copy him as much as I can, emulate him, absorb him, okay, I'll land somewhere where I want to be. Think of it as, and this is just my analogy, could be wrong, but think of it as you are here, okay, you are here. And let's just say I am in a jungle and there is this, my hero is right there, okay, here. So what I do to reach him, I basically throw a rope, okay, and I swing. Now definitely I won't reach him, but I'll reach somewhere above while looking at him, while hanging from his own identity. That is exactly how you end up being your authentic self. You steal and you study and you study and you study from a lot of people, incredible lot of people, and then you end up being who you are. So the fourth section is mimicry plus jokes. That was the example for the best mimicry artist in India right now. What is a good thief versus a bad thief? A good thief, whoever he is stealing from now, will honor, study, steal from many, credit the people that he basically took from, okay, transform the entire action and remix it. What will a bad thief do? He'll degrade what he took. He'll skim it. He'll steal from one only because he does not want to put the work in. He'll plagiarize. He'll imitate. He'll rip off the thing. सबसे पहला क्वेश्चन सबके लिए, मुझे मत बताना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक वो सीरीज लिखो, एक स्टोरी जो आप देखते हो, मे बी कुछ भी हो सकता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो सकता है, कोई भी सीरीज जो आप देखते हो, उसका नाम लिखो जो आपकी फेवरेट है. खाली नाम लिख लो. पहले पेज पे तुम्हारा काम यही है. टास्क, फर्स्ट टास्क, नाम लिखो जल्दी अभी. आई विल गिव यू बेसिकली 10 seconds. ओके, लिख लिया सबने? अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ना उसमें एक ऐसी चीज़ लिखो जो तुमको चेंज करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मेरी सीरीज़ है फ्रेंड्स, जो मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद थी. अब फ्रेंड्स के अंदर ऐसा होता है कि एंड तक जोई की कोई फैमिली सेट नहीं होती है और उन्होंने जोई को अननेसेसरीली, उसमें कैरेक्टर है जोई करके, जोई ट्रिबियानी करके, उसको अननेसेसरीली स्टूपिड बताया. जो कभी कभी मतलब सीरीज़ के बीच में ना, जब मैं सीरीज़ देखता था तो मेरा ऐसा दिमाग थोड़ा आगे पीछे कर देता था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, इतना थोड़ी. तो अगर मैं उसको वापस बनाऊंगा या मैं उसका एक एपिसोड खुद लिखूंगा तो मैं वो चीज़ उसमें नहीं डालूंगा. तो मे भी उस एपिसोड के अंदर मैं ये बनाऊंगा, खाली एक एपिसोड, पूरी सीरीज़ नहीं बना रहे अपन, उस एपिसोड के अंदर मैं ये बनाऊंगा कि जोई स्टूपिड नहीं है. ये मेरा टेक है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो. अब तुम्हारी जो भी सीरीज़ है, जो भी तुमने देखो, स्क्विड गेम्स देखे हो, ठीक है, एलिस इन बॉर्डरलैंड देखे हो, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, प्राइड एंड प्रेजुडाइज देखे हो, टाइटैनिक देखे हो,
तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? टाइटैनिक नहीं डूबनी चाहिए थी? जो तुम्हारे दिल में विश आती है अगली लाइन में वो लिखो। ये तुम्हारी पसंद होनी चाहिए बॉस। तुमने जो सीरीज का नाम लिखे उससे रिलेटेड लिखना और जो तुमको चाहिए वो लिखना। अभी आपने अपनी फेवरेट सीरीज का नाम लिखा है, उसके साथ में आपने ये लिखा है कि क्या उसके अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ। अब अपने दिमाग में आंखें बंद करो और एक सीन बनाओ जिसके अंदर आप डिफरेंटली जैसा चाहते थे वैसा होता तो क्या होता। बस आंखें क्लोज करो और एक सीन बनाओ। कुछ भी बना सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सोच लो और फिर सोचने के बाद में जल्दी जल्दी उसको 2-3 लाइन में नोट करेंगे। तो पहले सोचो, सोचने के लिए टाइम है अपने पास में। सोचने के लिए आई विल गिव यू अनदर 1 मिनट। अभी मेरे हिसाब से सबने कुछ ना कुछ जॉट डाउन कर ही लिया है। और मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना एक सीरीज़ अभी अपने आप खुद बनाओ। उसका पहला एपिसोड मुझे बताओ क्या होगा अभी के अभी। अगले 5 मिनट है। एक सीरीज़ सोचो, उसके कैरेक्टर सोचो, उसका आइडिया सोचो, स्टोरी लाइन सोचो और मुझे बताओ कि उस सीरीज़ के अंदर क्या होना चाहिए। अभी अचानक से जो तुम्हें फील हो रहा है ना, इसे यूजुअली क्रिएटिव ब्लॉक बोलता है। कभी कभी इसको लोग ओवरकम नहीं कर पाते और उस वजह से वो कुछ बना ही नहीं पाते। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पूछता कि अपने आप से पूरी एक सीरीज़ बना के लाओ या एक सीरीज़ का एपिसोड लिख के लाओ, तो तुम पूरा के पूरा दिन भी लगा देते। अगर मैं कल तुम्हें होमवर्क देता कि एक सीरीज़ लिख के लानी है बॉस, तुम शायद पूरा दिन लगा देते, तुम एक एपिसोड नहीं लिख पाते। क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर आता है यार मैं राइटर थोड़ी हूँ, कि सचार भैया क्या करने बोल रहे हैं, नई नई चीज़ें। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें बोला कि अपनी फेवरेट सीरीज़ उठाओ, उसमें चेंज करो और एक नया एपिसोड बना दो, वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आप सबने किया भी है। तो जिसने आप में से जिसने आज तक ये सोचा था कि नहीं यार ये राइटिंग वाइटिंग मेरे काम का नहीं है, गेस व्हाट, आपने राइटिंग किए हो। और इस चीज़ को एक्चुअल में फैन फिक्शन बोला जाता है। सबसे पहला चैप्टर ऑथर लिखता है कि जब जुरासिक पार्क मूवी आई थी तब वो 10 साल के थे और उन्हें वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे ही वो थिएटर से निकले, उन्हें चाहिए था कि इसका सेकंड एपिसोड मुझे देखना ही देखना है कैसे भी करके। ऑब्वियसली सेकंड एपिसोड बहुत टाइम तक नहीं आया, तो उन्होंने उनका जो पुराना कंप्यूटर था, उनका जो पुराना पीसी था, उस पर सीक्वल लिखना शुरू किया कि अगले जुरासिक पार्क में क्या होना चाहिए, जैसा आप लोगों ने अभी लिखा है। और उसको बेसिकली उसमें उन्होंने बहुत सारी स्टोरी डाली कि ये होगा वो होगा, ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उनको वो टाइम पे समझ में नहीं आया और आपको पिछले 2 मिनट में समझ में नहीं आया कि इसी चीज़ को फ़ैन फिक्शन बोलते हैं, जहाँ पे फैंस एक स्टोरी लिखते हैं कि कैरेक्टर्स के साथ में क्या होना चाहिए। अब यूजुअली जब भी ये स्टोरी देखते हैं ना, जब भी आपने अपने दिमाग से कुछ बनाए हो, तो सीक्वल यूजुअली उसके लेवल पे नहीं रहता। क्योंकि तारक मेहता या जो भी तुमने सीरीज़ सोचे हो, जो भी उसका तुमने सीन लिखे हो, वो रियल सीरीज़ के अंदर नहीं है, होता तो मज़ा आ जाता। बट बात यह है कि हर एक्टर, हर यंग राइटर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या लिखूं, और यूजुअली एक आंसर रहता है कि वो लिखो जो आपको पता है जो गलत है, वो लिखो जो आप चाहते हो। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि क्या होता है यूजुअली वही लिखो, मैंने आपको बोला जो लिखना है लिखो। जब आपने वो लिखा जो भी आप लिखना चाहते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आई और ये क्रिएटिविटी को एक काइंड ऑफ रनिंग में डाल देता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर काम ऐसे नहीं करते। हम सीक्वल्स नहीं चुराते, हम किसी का आइडिया नहीं चुराते, उस पर सीक्वल नहीं बनाते, उसके अंदर अपने आइडियाज़ नहीं डालते और उसको प्रेजेंट नहीं करते। लेकिन दुनिया के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं। ब्रायन ऊनो करके एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, उन्होंने लिखा है, माई इंटरेस्ट एंड इन मेकिंग म्यूजिक हैज़ बिन टू क्रिएट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड दैट आई वुड लाइक टू लिसन टू। I want to hear music that has not happened yet. Like you people wrote something that has not happened yet. By putting things together that suggested a new thing which did not exist. How do you create something else? You put things together in a combination that did not exist yet. आप चीज़ों को ऐसे कॉम्बिनेशन में डाल रहे हो जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। We make art because we like art. We are drawn to certain kind of work because we are inspired by the people doing that work. All fiction in fact and in non-fiction or in fan fiction as well. So आपको कभी भी ज़िंदगी में भी और दूसरी चीज़ों में भी ये सोचना है कि
ये कहानी और बेटर कैसे हो सकती है? सो फॉर एग्जाम्पल, सुबह से तुम लोग शायद ऑटो पायलट पे चल रहे थे, वेर यू जस्ट गॉट अप एंड यू आर वर्किंग ऑन ऑटो पायलट। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी जो खुदा लिख रहा है ऊपर से, शाम में इस लेक्चर के बाद में 8:30 बजे के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाए? आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी जो स्टोरी है वो एक बेटर कहानी बन जाए? और अगर आप ऐसा कर लेते हो, ये सोच लेते हो कि 8:30 से लेके आज मैं कितने बजे सोने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रात में 2 बजे सोने वाला हूँ, अभी 8:30 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म होगा, तो मैं 8:30 से 9 बजे तक क्या ऐसा करूँ जो आज तक मैंने नहीं किया है, जो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में हो लेकिन आज तक हुआ ही नहीं है? क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा? और आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि आप ना चीज़ों को मेजर कर रहे हो। 8:30 से लेकर 2 बजे तक मेरे पास कितने घंटे? 3.5 घंटे। चलो आधा घंटा खाना खाने में गया, बाकी के 3 घंटे में मैं क्या करूँ? And that way you will be able to make your life better. And where are you stealing the ideas from? Life itself. जिंदगी ने जो कैरेक्टर आपको दी है, आपने वही कैरेक्टर यूज़ किया, वही टाइम यूज़ किया, वही सब कुछ यूज़ किया और कुछ नया बनाया जो आज से पहले हुआ ही नहीं है। किसी का एक कोट था कि डू नॉट लिव द सेम डे एवरी अदर डे एंड कॉल इट अ लाइफ। एवरी सिंगल न्यू डे हैज़ टू बी डिफरेंट। देन आपको भी बैठ के सोचना है कि मेरी स्टोरी, मेरी कहानी और बेटर कैसे हो सकती है। और ये सेम चीज़ आर्ट में भी आती है। तो अगर आप आर्ट में अटके हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अटके हो, या लेट्स जस्ट से एनी परसूट में अटके हो, एक्टिंग में अटके हो, टीचिंग में अटके हो, किसी भी चीज़ में आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ किसी और को देखो, उसकी कहानी देखो जिससे आप इंस्पायर्ड हो, और बैठ कर सोचो कि अगर ये मैं करता तो कैसे करता, और आपको अचानक से अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप वो चीज़ बनाओगे, उसके जैसी और बनाओगे, उसके जैसी और बनाओगे, अनटिल कि उस इंसान का जो पार्ट आपने लिया था वो ख़त्म हो जाएगा उसमें से, और सब जो बचेगा वो आपका ऑथेंटिक रहेगा। मीनिंग, तारक मेहता का ही एग्जाम्पल लेता, ठीक है? क्या होगा अगर तारक ने किसी का खून कर दिया? अब आपकी स्टोरी अचानक से एकदम नाइस वाइब से हट गई है, अब वो हॉरर बन गई। तारक मेहता जेल में चले जाता है, फिर तारक मेहता को वहाँ पे जेल में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके फैमिली वाले उसे कॉल करना बंद कर देते हैं, फिर वो एक अलग वाइब पे चले जाता है, ठीक है? फिर वो धीरे 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 वो जो एक नॉर्मल, एक नाइस पर्सन रहता है, वो वहाँ पे कहानियाँ लिख के सबको अपने वश में करना शुरू कर देता है, और फिर इट कैन गो टू अ लेवल ऑफ समथिंग एल्स। अब ये जो कहानी है, इसके अंदर पहले आपने पूरी कहानी उठाई थी, खाली कैरेक्टर ट्विस्ट किया था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप सोच रहे थे, नई आइडियाज़ बना रहे थे, अब पूरी कहानी आपकी बची है, खाली कैरेक्टर पुराना है, और धीरे धीरे आपने उस कैरेक्टर को भी बदल दिया। अब अगर इस कैरेक्टर को आप कोई और नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आकाश, पूरी कहानी आपकी न्यू है बॉस, आपकी ओरिजिनल कहानी है, आपने ओरिजिनल कहानी पे काम किया है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत बेसिक, जो मैं खुद से पूछ रहा था कि कॉपी क्यों करना, कॉपी या सीक्वल? स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज़ देखोगे ना, तो आपको ज़ीरो से काम करना नहीं पड़ेगा, आप गेट गो में स्टार्टिंग से मस्ती कर सकते हो और चीज़ें बना सकते हो, और धीरे 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 वो प्लॉट आपको कहीं और लेके चले जाएगा, और ये सारे कामों में होता है। सो फॉर एग्जांपल, ब्रैडफोर्ड कॉक्स करके एक डियर हंटर के बैंड मेंबर है। डियर हंटर एक इंडी म्यूज़िक बैंड है फॉरेन का। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब वो छोटे बच्चे थे ना, तो वो अपने जो फेवरेट बैंड वाले थे उनको सुनते थे। पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो एल्बम की रिलीज़ की डेट आती थी कि ये डेट को ये एल्बम रिलीज़ होने वाला है, और उसके बीच में कभी कभी हफ्तों, कभी कभी महीनों का फ़र्क होता था। तो क्या करते थे, वो बैठते थे और अपने गाने बनाते थे कि ये जो आने वाला गाना है ये कैसा होना चाहिए, और वो बनाते गए बनाते गए बनाते गए, किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं, कोई आइडिएशन करने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि वो आएगा तो कैसा होगा और मैं उसके क्लोज कितना जा सकता हूँ। बाद में क्योंकि ये बंदे ने काम किया ना, भले कुछ भी सोच के किया, काम किया, इनका खुद का जब एक पूरा के पूरा बैंड बना डियर हंटर के नाम से, सारे वो जो गाने उन्होंने वो टाइम पे लिखे थे वो सारे अब इस एल्बम के अंदर आए, क्योंकि उस बंदे ने काम किया। आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो काम करने के लिए। आपका ब्रेन जो ये सोचता है कि उसको राइटर नहीं बनना है, आपने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही एक सीन लिख डाला बॉस, वो सीन लिखने के लिए लोगों को कोर्स लगता है, आपने ऐसे बैठे बैठे लिख डाला, तो काम तो आप कर सकते हो। When we love a piece of work, we are desperate for more. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप और चाहते हो कि वो चीज़ और हो, और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, एंड हमको सीक्वल चाहिए होता है उसका। तो क्यों ना इस सीक्वल को और ये डिज़ायर को प्रोडक्टिविटी में लेके हम अपना ही कुछ बना दें, और हम सवाल पूछें उन्होंने क्या मिस किया, क्या बेटर हो सकता था जो कर सकते थे, क्या हो सकता अगर वो जो आर्टिस्ट है वो अलाइव होता और उसको इसमें डाल देते तो क्या होता, क्या होता अगर तारक मेहता में दिलीप कुमार काम करते। सोच के देखो, बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो। जस्ट क्या होता,
अब जब आप ऐसा कर रहे हो तो इसका क्लोजिंग पैराग्राफ है, द मैनिफेस्टो इज दिस। वो आर्ट ड्रॉ कीजिए जो आपको आज तक देखने नहीं मिला, जो सिर्फ आपके दिमाग में है। कहीं से कॉपी कीजिए किसी का काम जिससे आप इंस्पायर्ड हो और सोचो कि अगर ये ऐसे करता तो बड़ा अच्छा होता, और फिर उसको करके दिखाओ। कोई बिजनेस रन कीजिए जो आज तक रन नहीं हुआ, कोई म्यूज़िक प्ले कीजिए जो आज तक आपने सुना नहीं, कोई ऐसी किताब लिखिए जो आज तक आपने पढ़ी नहीं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो आज तक आपको यूज़ करने ही नहीं मिला। एंड डू द वर्क यू वॉन्ट टू सी डन। अब जो जानते हो वो लिखने की कोशिश मत करो, जो जानना चाहते हो, जिसमें इंटरेस्ट है, जो पसंद है, वो लिखने की कोशिश करो। दैट इज़ वॉट इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू से। आपको अगर इसका मैं डायग्राम बना के दूँ तो पहले वो चीज़ लीजिए जो आपको पसंद है, टेक एनीथिंग दैट यू लव, और उसका एक सीक्वल बनाओ। जैसे ही आपने सीक्वल बनाना शुरू किया तो क्या होगा, एक आइडिया, फिर दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया। जब आप आइडियाज़ पे आइडियाज़ ऐड करते जाओगे उसी सीक्वल में, एक नया आइडिया कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आइडिया आपका टोटली ओरिजिनल रहेगा। सबसे पहले आप वो लिस्ट कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी खाने की रेसिपी हो सकती है, किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो आपको लगता है कि यार ये इसने ज़बरदस्त बना दिया भाई, उसको ले लो। और फिर आगे लिखो कि इसमें आपका वर्जन क्या होता। आप अगर यही चीज़ बनाते हैं, क्योंकि आपको अगर वो चीज़ पसंद आई है ना, तो आपकी वाइब उससे मैच कर रही है, तो अगर आप यही चीज़ आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। और फिर खुद से सवाल पूछो कि इन्होंने क्या मिस किया, क्या चीज़ थी जो इन्होंने नहीं बनाई, ये कैसे बेहतर हो सकता था। फोर्थ, इफ़ दे वर अलाइव, अगर वो जिंदा होते, जो भी इसके ग्रेट आर्टिसन थे वो जिंदा होते तो वो क्या करते। अगर मेरे पास सारे आर्टिसन होते तो मैं क्या करता। अगर फॉर एग्जांपल वैंगो जिंदा होता तो क्या मैं मैकबुक के कवर वैंगो से बनवाता। अगर आइडिया अच्छा है तो उसको ट्राई करके देखो। और इसी तरह से लोग बुक कवर बेचते हैं वैंगो के डिज़ाइन में, क्योंकि किसी ने ये आइडिया क्लब किया कि यूटिलिटी है, आर्ट है, दोनों को कंबाइन क्यों नहीं कर देते। ऐड योर फेवरेट आइडिया टू द पॉइंट, और इस रेसिपी में अपना सॉस डालते रहो। एंड देन डू व्हाट यू वांट टू रियली हैव। ड्रॉ, बिजनेस, प्ले, राइट एंड बिल्ड। एंड व्हेन यू डू दैट, what you will understand is आपको इसका टेंशन ही नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, आप डायरेक्ट फिनिश लाइन पे पहुँच गए। सो दैट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग फॉर द थर्ड चैप्टर, राइट अ बुक दैट यू वांट टू रीड। अपनी जर्नल में, जिसमें भी अभी तुमने लिखा है, रोज़ एक ऐसा आइडिया लेना है जो भी तुम्हें पसंद आता है, दुनिया की जो भी चीज़ तुम्हें पसंद आती है। याद है कल मैंने बोला था कि आप जर्नल बनाओगे तो आपको हर चीज़ कॉपी करते रहनी है, और ये आगे एक्सरसाइज में पढ़ना है कि कहीं से भी कुछ मिलता है तो आप कॉपी कर लो। आप लिख लो ये बल्ब का आइडिया मुझे अच्छा लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटे से ट्री का आइडिया मुझे अच्छा लगा, और उसको लिखते जाओ। उसकी एक जर्नल बनाओ कि आप क्या क्या चोरी कर सकते हो किसी से भी। जब आप ऐसी जर्नल बनाते हो कि ये मैं चोरी कर सकता हूँ इससे इससे इससे, ये प्रोडक्ट से, ये मूवी से, ये आइडिया से, आपका नेक्स्ट स्टेप आज है कि जो भी और जिसने भी ये जर्नल बनाया है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा, आपने उसको कॉपी किया और लिख लिया अपनी बुक में कि इससे मैं चुराऊंगा। उसके आगे लिखना है उसकी नेक्स्ट लाइन पे कि फॉर एग्जाम्पल, आई लव टाइनी प्लांट्स दैट आई कीप ऑन डेस्क। ये आइडिया लिख लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज का चैप्टर आपको बोल रहा है कि इसमें अपना वर्जन ऐड करो। ऐड योर वर्जन। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा कि ये प्लांट मैं इतना अच्छा बना दूँ मेरे वर्जन में जो मैं चाहता हूँ देखना। तो फॉर एग्जांपल मुझे छोटे से घर, मिनिएचर घर बहुत अच्छा लगता है, तो आई कैन लिटरली हैव अ टाइनी हाउस विथ ट्रीज एंड लाइट कमिंग आउट ऑफ इट, एंड आई कैन हैव लेट्स जस्ट से अ टाइनी हाउस, ओके, जिसके डोर में से और विंडो में से लाइट आ रही है, एंड इट कैन बिकम अ डेस्क लैम्प फॉर मी, और यहाँ पे मैं झाड़ लगा सकता हूँ। एंड दिस कैन बी प्लास्टिक। आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज़ क्रिएटेड, इफ इट इज़ क्रिएटेड आई विल ऐड समथिंग एल्स। और आप ऐड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे until you arrive at something that you really love, and then while you are doing that, make it. If you are able to do this, you will be creative no matter what. What did I do? Is it my original idea? No, I stole the idea, but then I kept adding until you don't stop. Okay? तो आपकी जर्नल में मैंने आपको बोला था कि आपको जर्नल बनानी है। जर्नल के अंदर आपको क्या करना है, आपको सारी आइडियाज़ जो भी अच्छी लगती है वो पेज पे लिखनी है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मूवी का ये सीन अच्छा लगता है, किसी की बातचीत करने का तरीका पसंद है, ये वर्ड अच्छा लगता है, ये कपड़े पहनने का सेंस अच्छा लगता है, ये सब मैंने लिख लिया। एंड लेट्स जस्ट से ये एक पेज पे लिख लिया, एंड ये स्पाइरल जर्नल वाली बुक है, पहला पेज, दूसरा पेज। आपका वर्जन क्या है?
फिर आपका वर्जन क्या है, फिर आपका वर्जन क्या है, फिर आपका वर्जन क्या है. एंड व्हेन यू राइट दिस यू विल रियलाइज यू आर हैम्परिंग और यू आर अराइविंग एट योर ओन आइडियाज़, जो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और देखते जाएंगे क्या चुराना है, कैसे, किससे. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ये जो थॉट प्रोसेस है इसको अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑथर ने इसमें एक्चुअली एक लाइन लिखी है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू लाइफ. ओके, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू योर लाइफ एंड योर करियर. whenever you are at a loss of what move to make next, just ask yourself what would make a better story. मतलब ज़िंदगी में अगर आप खोए हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है यार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ज़रा शांति से सुकून से अपने आप को थोड़ा सा स्टेप बैक करो और ये सोचो कि अभी बज रहे हैं 8:23 इंडिया में, और अभी से लेके कल 7:30 बजे हमारा लेक्चर है. आपके पास है 24 घंटे. अभी आप कितने बजे सोने वाले हो? तो जैसे आप सोने वाले हो लगभग रात के 2 बजे. तो इसके बीच में आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको रूटीन पता है कि आप डेली क्या करते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, ये पूछने की बजाय अगर मैं आपसे पूछूँ अभी क्या करोगे, मोस्ट ऑफ यू विल बी लाइक पता नहीं भाई. बट इफ़ आई आस्क यू कि क्या करते आए हो, तो आप ये बोलोगे कि देखो यूजुअली क्या होता है, अभी मैं जाऊँगा, थोड़ा गाने वाने सुनूंगा, खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद में बैठूंगा, यूट्यूब स्क्रॉल करूंगा, कुछ काम रहेगा तो उसको यूजुअली वो कल पे ही जाता है, सो जाऊंगा मूवी देखते देखते या सीरीज़ देखते देखते. सिंपल, दैट इज़ हाउ इट गोज़. सो ये आपकी स्टोरी है जो आज तक होती आई है. जैसे सारे सीरीज़ के अंदर तारक मेहता के उल्टा चश्मा, मनी हाइस्ट, वॉट एवर इट इज़, एक स्टोरी बनती आई है. और फिर हमने बोला कि नहीं यार, ये स्टोरी में ना, ये मेरे वर्जन में ये थोड़ा बेटर होता. तो आज आपके पास अभी मौका है ये सोचने का, ये जो कहानी है जिसको आप जिए जा रहे हो, इस कहानी में क्या होगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा. क्या किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है? क्या कहीं पे जाके खाना खाया जा सकता है? क्या बारिश में थोड़ी वॉकिंग की जा सकती है क्योंकि आपने बहुत दिन से नहीं किए? क्या आज आर्ट बनाया जा सकता है? क्या कुछ भी हो सकता है जो हमारी ज़िंदगी में आज बेटर कर दे. और अगर आप ये सोच सकते हैं, एवरीथिंग दैट कैन बी इमेजिन्ड कैन बी डन, सो आप सडनली आपको एक ऐसे अपने आप को एक ऐसे अरीना में पाओगे जहाँ पे देयर इज़ अ स्कोप फॉर डूइंग बेटर. क्या आप हर दिन ये कर पाओगे? आई डोंट नो, क्योंकि हर दिन हमारा माइंडसेट अलग होता है. लेकिन एक चीज़ जो अभी रिसेंटली मैं जिस पे अराइव कर रहा हूँ, यूजुअली ना एक मेडिटेशन है जिसके अंदर पूरी मेडिटेशन करने के बाद में वो अक्सर एक एंड में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस फीलिंग विथ यू थ्रू आउट द डे. आप क्या से प्लान कर रहे हो कि ये फीलिंग को आप अपने साथ में पूरा दिन के लिए लेके जाओ. और मैंने रिसेंटली एक चीज़ रियलाइज़ की है, अगर आप ऐसा सोचें कि मेरे पास ये एक ही दिन है जीने के लिए और इस दिन को जी भर के मेरे को जीना है, जैसे मैं जितने बेस्ट तरीके से जी सकता हूँ मेरे को जीना है ये दिन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर. सो यू कैन कैरी एनी फीलिंग थ्रू आउट द डे, क्योंकि हर सेकेंड, हर मिनट, हर एक आवर, हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. If you are able to think that and if you are able to take that, that can really help. उसी हिसाब से अब ये क्या, ये थॉट प्रोसेस हर दिन काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज अभी अगर आप ये सोचो कि अगले जो 3-4 घंटे हैं मेरे ज़िंदगी के, इसमें यार मैं मेरी ज़िंदगी बेटर बना दूँ, तो आप क्या कर सकते हो ऐसा जो आपके वर्जन का, आपकी ज़िंदगी जो अभी तक चलती आई है, जो अभी इस मोमेंट पे ऐसा समझो इंटरवल है और हम लोगों ने टाइम आउट लिया है, अभी तक आपकी ज़िंदगी जहाँ पे भी चलती आई है, क्या ऐसा हो सकता है आज एक अगले 3 घंटे में जो आने वाले वर्जन को बेटर बना दे. मे बी आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, मे बी आप एक बुक पढ़ना शुरू कर सकते हो, मे बी आप एक फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, मे बी आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, मे बी किसी को सॉरी बोल सकते हो. बहुत कुछ हो सकता है जस्ट इन द नेक्स्ट 10-15 minutes. So you have to think about how do I make the sequel of this life that I have been living better. And that is how I believe they apply this to make your story a little better from the book. What we have seen so far. First part says कि you have to steal like an artist. Meaning you just have to steal. कैसे भी steal करो, copy करो, inspiration लो, कुछ भी करो, steal करना ज़रूरी है. That is a basic understanding that you need to have. That was the first point. Second point क्या था? Do not wait until you have inspiration to get started. Just get started. कल हमने क्या सीखा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक काम करो ना, आपको जो अच्छा लगता है, जिसका काम अच्छा लगता है,
उसका काम ले लो और उसको अपना सीक्वल बनाओ, अपना विजन बनाओ और उसके साथ में आगे जाओ, क्या इशू है? दैट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है कि आपको इनका यूज़ करना है, योर हैंड्स। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ योर हैंड्स व्हेन यू आर वर्किंग। अब ये क्यों बोला, इसको पहले समझेंगे और उसके बाद में हम काम करके देखेंगे। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज है। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? मतलब भले ही तुम ना मानो लेकिन हूँ मैं, ठीक है? लेकिन अब एक छोटी-सी चीज़ है जो हमें करनी है। अपने गाल को टच करो, feel the texture, feel the pimples or dimples or acne, whatever you have, okay? Feel the white hairs. Just feel the shape of your face. Now you're a human. I'm also a human. Now try feeling this. Touch your hand on the screen. What you will feel is glass. Okay, no matter how hard you try, you'll feel is glass. And that is a problem. The work that you do on screen does not feel real. It is work. Your brain capacity is going away. आप काम कर रहे हो, आपका दिमाग थक रहा है, लेकिन जो भी आप काम करते हैं सर, वो रियल फील नहीं होता। और क्योंकि फील नहीं होता, बॉडी के अंदर सेंसेस नहीं आती है। अब आज है ना, ये बुक से एक अलग हटके मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इट वाज़ अबाउट स्किन केयर रूटीन। तो एक बेसिकली ही इज़ समबडी हू इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट और समथिंग, तो वो बोल रहे थे कि आप अपनी स्किन पे जितनी भी चीज़ें लगाते हो, वो आपके खून के अंदर जाती है, इट गोज़ इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, मीनिंग यू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आप वो बातों में ऑब्जॉर्ब करो, डायरेक्टली, पैसिवली किसी का बॉडी लैंग्वेज देख के एब्जॉर्ब करो, कोई चीज़ खा के एब्जॉर्ब करो या कोई चीज़ हाथ पे लगा के एब्जॉर्ब करो। सो वन सिंपल रूल दैट कम्स विद कॉस्मेटिक्स इज इफ यू कैन नॉट ईट इट, डोंट पुट इट ऑन योर स्किन। अब ये क्या है? ये सेंसेस है जो एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, यू गो इन द मड, यू प्ले, यू गेट इनटू द रेन, यू गेट ड्रेंच्ड, ओके, यू प्ले इन अ पार्क, यू प्ले विद कलर्स। आपके हाथ पे कलर लगता है, मेरे हाथ का हाथ पे अभी तक लगा हुआ है, इफ यू कैन सी ग्रीन कलर इज देयर। दिस ऑल इज फीडिंग इनटू योर सेंसेस। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू वर्क डिजिटली? वही सेम चीज़ जो आप अभी नहीं कर पाए। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आप अपने आप को फील कर सकते हो क्योंकि आप हो वहाँ पे। आप मुझे फ़ील नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में मैं प्रेज़ेंट हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक ग्लास का रिप्रेज़ेंटेशन ही ना इस तरफ। आर यू वॉचिंग अ ह्यूमन और आर यू जस्ट वॉचिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल? एंड इफ यू आर यू वर्किंग लाइक अ ह्यूमन और आर यू जस्ट वर्किंग विद अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल? इस क्वेश्चन के साथ में आज की बुक शुरू करेंगे। द 4th चैप्टर सेज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अपने हाथ यूज़ कीजिए साहब, यूज़ योर हैंड्स। और मैंने आज पर्टिकुलरली द वेरी रीज़न आई वाज़ नॉट पुलिंग आउट द आईपैड वाज़ कि आज मैंने नोट्स बनाने के लिए ना सारे नोट्स ऐसे बनाया, ठीक है? मैंने लिख के बनाया, मैंने कुछ भी डिजिटली नहीं किया। अभी ऑब्वियसली आई विल नॉट बी ऑलवेज़ वर्किंग विथ दिस थिंग बिकॉज़ आई नीड टू शिफ्ट डिजिटली एंड दिस, अदरवाइज़ दिस विल नॉट हैपन। लेकिन आज के लिए पर्टिकुलरली आई वाज़ लाइक लेट्स राइट विद अ पेन। ऑथर इज़ राइटिंग, माय फेवरेट कार्टूनिस्ट लिंडा बैरी says this saying, in the digital age, don't forget to use your digits. Your hands are the original digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Use them. While I love computers, I think computers have robbed us of a feeling that we are actually making things. Instead, we just type keys and click mouse buttons. This is why so-called knowledge work seems to be so abstract. The artist Stanley Donwood, who made all the albums artwork for the band Radiohead, says computers are alienating because they put a sheet of glass between you and whatever is happening. Exactly this. इसलिए मैंने बोला मेरे को टच करके दिखा दो, नहीं कर सकता, ग्लास है अपने बीच में। अब इमेजिन करो, यू वेंट टू अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी और उनकी बर्थडे पार्टी हो रही है, आप उसके मुंह पे केक लगाने जा रहे हो एंड सडनली यू रियलाइज कि हम लोग तो एक कमरे में है ही नहीं। आप बैठे हो एक कमरे में, दूसरे साइड में वो बैठे हो और बीच में एक ग्लास है। इफ द एंटायर whatever happens is going to happen even in front of you while you're present there, just a glass being in between you and me, okay, and in that event will separate you from the crowd. It will feel like आपको घुटन होगी फिर वहाँ पे। आप बोलोगे यार ये हटाओ बस बीच में से कैसे भी करके, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में ऑडियंस बन के नहीं रहना है। प्रॉब्लम ये है
कि आप अब अपनी ज़िंदगी में ही ऑडियंस बन के ऑपरेट कर रहे हो. You never really get to touch anything that you're doing unless it is printed out if you're writing on a computer. When you make things with your hands, you get your senses involved. That is the first part. कभी भी अगर आप अपने हाथों से काम करते हो तो आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो. सो पेन पकड़ना इन इट सेल्फ इज अ सेंसरी थिंग, क्योंकि उससे रिफ्लेक्स बिल्ड होता है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया है अभी. योर ब्रेन इज यूजुअली कंसिडर्ड दी हेड ऑफिस. कि आपका जो ब्रेन है ना वो आपके दिमाग का हेड ऑफिस है और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को बोलेगा क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, मूव द फिंगर्स. ओके, स्टॉप. बट द ब्यूटिफुल थिंग इज व्हेन आई मूव माय फिंगर्स, लेट्स जस्ट से देयर इज अ स्प्लिंटर ओवर हियर और मेरे को दुख रहा है, तो क्या हुआ? मेरी बॉडी ने मेरे माइंड को मैसेज भेजा ना. तो इट इज नॉट अ वन वे कॉन्वर्सेशन और वन वे स्ट्रीट दैट वी हैव मेड इट कि दिमाग बोलेगा, दिमाग हेड ऑफिस है, दिमाग जो बोलेगा वो होगा और बॉडी सारा कुछ एब्जॉर्ब करेगी. वैसा नहीं होता है. वो वन वे है, टू वे कम्युनिकेशन होता है. आपके दिमाग आपकी बॉडी को बोलता है और फिर आपकी बॉडी अपने दिमाग को बोलती है. एंड आई हैव अ थियरी, पर्सनल थियरी, वेयर आई थिंक देयर आर फोर थिंग्स. द फर्स्ट दैट गोज अवे or comes in whenever you are trying to achieve anything is spirituality, the first of all. उसके बाद आता है मोटिवेशन, हार्ट. उसके बाद आती है बॉडी और आता है माइंड. अगर कभी ऐसा हुआ ना कि किसी को मतलब if your mind is intact, your body can survive almost anything. If your mind goes, your body will go. If your body goes, your heart will go and then it crumbles. Opposite is also true. If your mind is hampered, your body will get hampered. If your body is hampered, it will break your mind. तो ये जो कम्युनिकेशन है ये टू वे कम्युनिकेशन है. तो जब आप कोई चीज़ के साथ काम करते हो, when you're, let's just say when you're working with mud, when you're writing your script on paper, the very act of writing, putting up the pen, okay, taking the pen up, putting it on the paper, feeling the texture of the paper, suddenly puts you into that zone with your book, because वो sensory, मतलब जो आप बोलते हो ना बार बार जोन में नहीं जाने मिल रहा है, जोन में नहीं जाने मिल रहा है. You know, how do you start with the concept of flow? फ्लो आएगा कैसे जब 5 में से 4 सेंसर्स तो मिसिंग है. अगर आप काम कर रहे हो एंड यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, इट इज इन्वॉल्व्ड इन सम प्लेसेस, यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन एंड यू आर टाइपिंग एंड नथिंग एल्स इन योर बॉडी इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एक्सपीरियंस. क्योंकि आप दिमाग से कहीं और हो, आप अपने घर में अपने बेड पे बैठे हो, आपकी बॉडी पे जो लाइट पड़ रही है वो ऑफिस वाली नहीं है, आप ब्लैंकेट के कंफर्ट में बैठे हो, आपकी बॉडी को जितने सेंसरी इनपुट्स मिल रहे हैं सारे के सारे अलग अलग हैं. सो फ्लो में जाओगे कैसे? A lot of times when gamers play games, these things, सबसे पहले तो they'll have colors inside them ताकि to engage you. Okay, उसके बाद let's just say I am playing and I crash my car. ये vibrate होएगा. To suddenly put every sense of my body into playing the game. आवाज भी, sound भी, and we get so involved. And you might have also witnessed it at some point with some serial कि आप भूल जाते हो कि घर में और कोई भी है. You're hooked. Your eyes are hooked. वो काम के साथ नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें और 10 चीज़ें इधर-उधर लेके जा रही है. But when you work with something with your hands, your eyes are focusing, your senses are focusing, you are there breathing in that zone. That smell, for example, the smell of a watercolor, okay? You cannot smell it अभी. ट्राई कर लो स्मेल करने का, नहीं कर सकते. मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम डिजिटली कर रहे हो. अब ये चीज़ जब तुम स्क्रीन पे करते हो, तो काम नहीं करता. Body gives idea to the brain and brain gives the idea to the body. When you do this, your body, like when you are working with your hands, your mind enters an idea of play. And when you are playing, that is the exact time where ideas come to you, creativity comes to you, creativity starts flowing. Because no ideas, there is a quote, and this is a beautiful quote. We don't know where we get our ideas from. What we do know is we do not get them from our laptops. Okay, and unfortunately, we are trying to get ideas from generative AI, meaning ChatGPT. When you are thinking about it in this way, no new ideas are coming from the digital screens. So now what do? You set up a analog desk. When I started this conversation, when we were about to talk, I told you कि मैंने इसका आज setup थोड़ा सा change किया है. And this is something that the author also has. So if you look here now, this is where I plan where my computer setup will be, totally digital. And this exactly is the place where there will never be an electronic device. At least I'll try to keep it that way.
दिस विल बी एनालॉग. यहाँ पे लिखो, कलर करो, आइडिएट करो जो करना है. इतने पोर्शन के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन माई फोन कैन नॉट स्टे हियर. Will I be listening to podcasts or listening to AI or talking to AI? Maybe, yes. But I will not keep it here. This area is only for hands-on. Also, one reason why I keep, मतलब मैं कब से बोल रहा हूँ कि ये पहले वहाँ पे था और वहाँ से हटा के मैं इसको इधर लेके आया हूँ. One reason, sunlight. If I remove this, sunlight will be able to come. I'll be able to work here better. If you have the option, try to have this thing which is written in the book as well. Try to set up a digital space alone. यहाँ पे इसमें इधर दिया है उसने, एक फोटो है उसके डेस्क का. Okay, where it is like, okay, this one part is analog, the other part it is digital. You can have that too. Have one part as digital. यहाँ पे आप digitally काम करोगे, एक part अलग से निकाल लो सिर्फ analog के लिए. Okay, this is something that he has said in the book. सबसे पहला, your hands are the most important and original digital devices. Okay. Second, on computer you never get to touch anything. Okay, until you print it out. Until and unless something is written, something is printed out, you will never ever get the feel. And maybe that is one reason why even biggest photographers till date, जब उन लोग फोटो लेते हैं ना, उसको उन लोग प्रिंट करके पीछे लगाते हैं and then they study the photo. I know any Leibovitz does this, where basically वो जो भी photo होते हैं, if she has to curate, let's just say a photo ऐसे, or maybe something for a fashion magazine, वो उसको print करके लगाएगी और फिर उन लोग देख के उस पर काम करेंगे. When you move, when you get up, okay, when you get up and go write something, this is another thing. Have this investment if you can. Get a whiteboard. Get a whiteboard, get a marker. Believe me, ideas flow way more here than anywhere else. Like, this is from personal experience. Okay. You move and then you write. Third thing. मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी तुम्हें दिखता है, वो एक जगह बस टेका लेके ऐसे है, आज भी ऐसे ही था, परसों भी ऐसे ही था, 2 हफ्ते पहले भी ऐसा ही था. What would your assumption be? If a person is still for a very long time, that he was deceased. that he was deceased, meaning he was dead. Everybody agreed? Now think about the way we work. We say, अभी बैठूंगा 8 घंटे तक, I won't even move and I'll sit here and then I'll finish my work. If we are not moving, it is very much equivalent to being dead. And it is literally, quite literally, sitting is killing us. There are a couple of researchers on that. Life is movement. If anything still for a while, you consider it dead. So saying I will sit and work and not move is actually killing you. And it is also killing your mind and your creativity. Who said that if you want to accomplish anything, you have to sit at a particular place? कहीं पे नहीं लिखा है यार. There used to be classes, there used to be schools which were under trees. Kids used to study by roaming around the tree or roaming around in a garden. If you can do that, and I pray that you do that, you will suddenly understand that there is a lot of play, lot of art, lot of creativity involved in just the movement of it. And that is what we say. You have to, this is from the book, you have to go through the motion. क्योंकि कई बार when you put yourself into the motion, you realize कि अरे, for example, जिम जाने का दिल नहीं कर रहा था. And then you go to the gym, you 5 minutes into the workout, into the warm up, you get into the vibe again. ये काम के साथ हम नहीं कर पाते क्योंकि काम ही हम ऐसा डेड वाली स्टेट में कर रहे हैं. But what if you get into the motion? What if I get and I start writing something? कि हाँ, दिमाग नहीं चल रहा है, आइडिया नहीं आ रहा है, but let's erase something, let's just brainstorm something. I am moving, I am doing something, I am my own hero at that time. My body is witnessing me working. And if you just do that, you enter that state of motion, which make your life full. With it, if you want to be full of life, you have to bring the action back into your life. The action of motion, the action of working with your hands, the action of playing. PC is not good for generating any ideas. Ideas will come from your mind. So, this is basically what he was trying to say. Now, the homework for today, and I cannot do it right now, but if I can, I'll try to restrict my laptop to a particular place. जैसे हम लोग desktop computer के time पे करते थे ना, this is where the computer will be. I'll try to do that everywhere else becomes analog. For you particularly, you have to bring that analog wala face back. So, if you have a desk, divide the desk in a way where a part of the desk, which is more comfortable,
more easy to sit on, more nice temperatured and lively with the light. That is your analog space. तो आप कुछ भी करते हो, भले ही आप मैथमेटिशियन क्यों नहीं हो, हैव दैट एज योर एनालॉग स्पेस एंड से टू योरसेल्फ कि इसके बाद में यहाँ पे कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट नहीं दिखने वाला। एंड डिजिटल इज ज़रूरी, नोबडी इज सेइंग नहीं है, तो इसके लिए उसको शिफ्ट करो उस पार्ट में जहाँ पे यू विल बी लाइक, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये सेटअप है, अगर मैं इसे डिजिटली निकाल दूँ तो मेरा तो काम धंधा रुक जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल एग्जिस्ट कर सकता है, इट इज़ ओके, लेकिन एक साइड में आप डिजिटल नहीं यूज़ करेंगे। When you do that, what you will understand if you involve yourself, और ये मेरा प्लान है, मुझे नहीं पता एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, आई विल गो एंड वर्क फ्रॉम द पार्क, क्योंकि मुझे मतलब बीइंग अ टीचर मेरा काम होता है रिसर्च करना, पढ़ना और समझना। फॉर एग्जाम्पल ये बुक पढ़ना, सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू द ऑडियो बुक, आई विल गो टू द पार्क, टेक दिस बुक विथ मी, हैव अ बैग एंड लिसन टू द ऑडियो बुक, spend 2 3 4 hours there. What that will do is that will give me movement, a much better environment, okay, maybe make some friends, I don't know, but when I come back it will be such a relief that it will get easy. Indication, if you can, try getting out, trying going around, try getting out of your home, out of your desk, to do the same work or whatever work you can do without the desk. हमने डेस्क लिया था एक हिसाब से हमारी लग्जरी के लिए, बाद में वो हमारे लिए जेल बन गया कि इसको छोड़ के तो और काम नहीं हो सकता, कोई कुछ भी काम करना है तो डेस्क पे बैठना है, किसने बोला? And that is a correct exact notion this person is trying to break here. The computer is really good for editing your ideas, and it's really good for getting your ideas ready for publishing out into the world, but it is not really good for generating ideas. There are too many opportunities to hit the delete key. The computer brings out the uptight perfectionist in us. We say editing ideas before we have them. The cartoonist Tom Gold says he stays away from the computer until he has done most of his thinking for his strips. Because once the computer is involved, the things are on an inevitable path to finishing. Whereas in my sketchbook, the possibilities are endless. ये मैंने भी थोड़ा notice किया है. When I'm making a script, जैसे अभी मैं एक script बना रहा था, I sketched out the way it will look like on my timeline. So if you have ever edited a video, आपको पता होगा scene, voice over, music. When you do it here, right, nothing is final. And because nothing is final, आप जितने iteration कर सकते हो कर लो, आपको दुख नहीं होगा कि यार ये कट मैंने गलत लगा दिया। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर के अंदर गया, now that timeline becomes work. Then अभी ये कट है, यहाँ पे transition है, okay, when are we clicking the export button because I want to get done with it. That is what the computer does. When you're working on a sketchbook, अभी भी I will call this ideation process only. ये ideation ही है और कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, ना तो मैंने बनाया है ना तो मैंने शूट किया है। मैं बस इसको जितना हो सके मेरे हिसाब से आइडिएट कर रहा हूँ। हो सकता है शूट के टाइम पे पूरा चेंज हो जाए, बट व्हाई दिस? बिकॉज दिस विल पुट एवरीथिंग ऑफ माय हार्ट एंड सोल इनटू दिस। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, ये जब मैं लिख रहा था ना ये सेंटेंसेस, दे आर रिटन इन ट्रांसलिटरेशन, मीनिंग हिंदी, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, तो इट इज़ रिटन इन इंग्लिश फॉन्ट बट हिंदी। मैं लिटरली जीपीटी पे टाइप किया था कि व्हाट शुड बी द स्क्रिप्ट, एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ व्हाट द हेल। अब अगर स्क्रिप्ट मतलब जो मुझे बोलना है वो भी चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है, तो फिर मैं वीडियो की बना रहा हूँ। And then I started writing with my hand, and that is what writing does. It makes your brain involved. और जब मैं वो लिख रहा था, जब मैं सीन लिख रहा था, तो मैं पूरा उस सीन में इन्वॉल्व था। यू नो, आई वॉज इन, मतलब ये आज ही एक्सपीरियंस किया है मैंने, दोपहर में लिख रहा था मैं इसको, कि मैं सोच रहा था कि जब मैं शूट करूँगा तो यहाँ से एक बंदा आ रहा है और वो किसी को कुछ बोल रहा है, एंड दिस इज़ हाउ द एक्शन इज़ हैपनिंग। उसके फेस पे, मेरे फेस पे इमोशन क्या हो गया, मैं कैसे डील करूँगा। एंड आई फॉर a brief amount of time, say 10 15 minutes, I was not in my room, I was in that set, which does not happen. And believe me, with a person who has generated numerous things with ChatGPT, never has it happened once that it transported me into that art zone and the flow that we are trying to reach. It only happens with this. When you go onto the computer, things are on an inevitable path to being finalized. Whereas in my sketchbook, the possibilities are infinite and endless. When it came time to sequence newspaper blocks, now he's talking about his work. So he's saying that he basically got newspaper blocks, had markers on them drawn, and then he was able to get the ideas across. That's how I try to do all my work now. I have 2 desks. Matlab, this is not my idea, author ka idea hai. I have 2 desks in my office. One is analog and one is digital.
The analog desk has nothing but pen, markers, pencils, paper, index card, and newspapers. Nothing electronic is allowed on the desk. This is where most of my work is born. And all over the desk are physical traces, scraps, and residue from my process. Unlike a hard drive, paper don't crash. The digital desk has my laptop, my monitor, my scanner, my drawing per tablet. This is where I edit and publish my work. Try it. If you have a space, set up two workstations, one analog and one digital. For your analog station, keep out anything electronic. Take $10 for your understanding, take 100 rupees. Go to the school supply aisle on your local store and pick up papers, pen, sticky notes, and when you get back to your analog station, pretend it is craft time. Something is about to happen. You are about to do anything. Now, if anybody remembers any instruction from the last lecture, it was that you have to perform. You just have to think. This was from the second chapter. Okay, the desk is your stage. All the equipment here are your props. Okay, the time is your scripting. कि इतने टाइम के लिए आपको परफॉर्म करने मिला है. अब आप परफॉर्म करो. ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा भाड़ में जाए. You perform. And that is exactly what he is connecting back here. When you get back to your analog station, pretend it is craft time. Scribble on the paper, cut it up, tape back pieces together, stand up while you're working, pin things on the wall, look for patterns, spread things, look around your space and sort them out. Once you start getting your ideas, you can move over to your digital station now and use your computer to help you execute and publish them. When you start to lose steam, head back to the analog and play some more and get into this loop again and again. That was the session. लाइफ में जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सीए बनोगे या और भी कोई भी एक्शन जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, अक्सर ऐसा होता है लाइफ में कि हम उस एक्शन को पकड़ के ना उसके पीछे ही बैठ जाते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है. फोकस बहुत ज़रूरी है. एंड जिस because I am starting on this. If you're doing CA, CS, ICW, IAS, तो फिर ये जो आगे मैं बोलने वाला हूँ इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना. ये वीडियो क्विट करके निकल जाओ. ये वीडियो CS के लिए नहीं है, क्योंकि आपका पूरा टाइम, आपका पूरा काम, आपकी हर एक चीज़ एकदम फोकस होनी चाहिए आपके काम के ऊपर. लेकिन उसको छोड़ के जो दूसरे प्रोफेशंस है in which you might not require 100% of your time, or maybe you're burning out for those professions and for your creative work. So यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो क्रिएटिव काम कर रहा है, ओके, जॉब कर रहा है, जॉब पे थोड़ा बोर हो गया है, चिढ़ गया है, अब वो आगे प्रोसीड कैसे करे. So the basic thing that happens here is, जब भी आप एक काम पे फोकस करता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है, और ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है. जब मैंने एक काम लिया, मैं उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ और दुनिया भर का प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है काम करने का. अब मुझे असाइनमेंट बनाना था. असाइनमेंट मुश्किल से 1 घंटे का असाइनमेंट था. मैं 3 घंटे लगा चुका हूँ उसको अवॉइड करने में. थोड़ी सी पिक्चर देख लिया, क्रिमिनल जस्टिस पूरी हिंदी सीरीज देख डाला है मैंने, मेरे से एक असाइनमेंट नहीं हुआ. मैंने मेरा पूरा अमेजोन का, वो अमेजोन नहीं, वो हॉटस्टार पे है, जितना उन्होंने फ्री सब्सक्रिप्शन दिया था मैंने खत्म कर दिया देख देख के. मुझसे असाइनमेंट हो ही नहीं रहा है. अक्सर ऐसे टाइम पे हमसे या तो काम भी खत्म नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी नहीं होती है. तो ऐसे टाइम पे किया क्या जाए. तो यहाँ पे स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में जो 5th चैप्टर है वो इसको एड्रेस कर रहा है, जो बोलता है कि आपको साइड हॉबीज और साइड प्रोजेक्ट रखने चाहिए. अब इसका मतलब क्या होता है. जब भी आप काम करें, और कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में. ये आपका एक मेन वर्क है, एक मेन काम है जो आप करते हो. ऑथर ये बोलता है कि इसके साथ में ना एक साइड प्रोजेक्ट रखो, और एक नहीं, जितने साइड प्रोजेक्ट रखने उतने रखो. क्योंकि ये जो साइड प्रोजेक्ट है, ऑथर ऐसा मानता है, साइड प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ भी. यहाँ पे पर्टिकुलरली हम इसको बोलते हैं जस्ट मैसिंग अराउंड, या वो काम करके, वो काम जिसको करके आपको अच्छा लगता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे लिए साइड प्रोजेक्ट को डिफाइन करूँ तो मेरे लिए साइड प्रोजेक्ट क्या होता है. फॉर मी साइड प्रोजेक्ट आर यूजुअली क्लीनिंग द हाउस. बोर हो गया, मतलब बीच में अभी लिटरली मैंने ये किया है कि तुम लोगों को मालूम है ऑडियो बुक सुनता हूँ पढ़ते टाइम, तो मैंने लिटरली ये करना शुरू किया था कि ऑडियो बुक लगाया, 1 घंटे की ऑडियो बुक है, घर साफ करना शुरू कर दिया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया. मेरी एक्चुअली यूट्यूब की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी. मैं आई बिलीव इलस्ट्रेशन भी मेरा वहीं से शुरू हुआ था, जहाँ पे मैं टेड टॉक दिखता था और इलस्ट्रेशन बनाता था. सो व्हाट एम आई और व्हाट वाज आई डूइंग,
वॉज आई ड्रॉइंग एनीथिंग फॉर द इम्पोर्टेंस के कुछ करना, अचीव करना है? नहीं, बस मस्ती के लिए बनाए जा रहे हैं, मस्ती के लिए कोई भी काम किए जा रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम होता है जो आप बस मस्ती के लिए कर रहे हो, और आपकी लाइफ में ऐसे काम हो गए जो आप बस करने के लिए करते हो, उसका कोई लॉजिक, कोई प्रेशर, कोई कुछ अचीव करने के लिए आप वो काम नहीं कर रहे हो, ऑथर बोलता है कि ऐसे जो काम है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और जो भी काम है, जो भी आप करते हो ना, इट इज़ समटाइम्स और इट इज़ ऑफन व्हाट द ऑथर सेज इज़ द गुड स्टफ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑथर ये बोलता है कि ये जो गुड स्टफ है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ दिस, ओके। एंड रियलिटी में ये होगा कि आप एक चीज़ से दूसरे पे जंप करोगे, दूसरे से तीसरे पे जंप करोगे, जंप करके वापस जाओगे, फिर कोई चौथा काम करोगे, फिर कोई पांचवा काम करोगे, और ऐसे बस करते रहोगे। होगा ये कि आप एक जोन में एंटर हो जाओगे जहां पे आप धीरे 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 करके सारा जितना भी आपका काम है वो खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अचीव। अब ये आता है कि जब आप बिजी होते हो ना तो आप स्टूपिड होते हो, और स्टूपिड आर्ट के लिए, और ये पर्टिकुलरली आर्टिस्ट के लिए बात कर रहा है, आर्ट में स्टूपिड होना बहुत ज़रूरी है। आर्ट में ऐसी चीज़ें क्रिएट करना जिनका कोई मतलब नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्टूपिड का ऑपोजिट होता है नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। दैट आई एम नॉट प्रोडक्टिव इज व्हाट वी कॉल स्टूपिड। ये क्या टाइम पास कर रहा है, इससे क्या होने वाला है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टूपिड यूजुअली। बट इफ यू पे अटेंशन व्हाट इज नॉन प्रोडक्टिव, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू एंजॉय ना। कुछ भी काम, कुछ भी हो सकता है जो आप एंजॉय कर रहे हो। अब कमाल की बात यह है कि जब हम बोलते हैं कि ये मेन काम से हटके कोई काम मत करो, या कोई भी स्टूपिड चीज़ मत करो, या कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जो आप एंजॉय करते हो, जो प्रोडक्टिव नहीं है। एक कोट है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, और वो कोट ये बोलता है कि क्रिएटिव पीपल, पीपल हु वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, नीड फ्री टाइम टू जस्ट सिट अराउंड एंड डू नथिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव लोगों के लिए। क्रिएटिव लोगों के लिए बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में हुआ ये था कि मेरा मोटिवेशन पूरा ख़त्म हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया था ना, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम चर्च गेट। तो वहाँ पे मेरा कॉलेज हुआ करता था, रोज़ सुबह में जाता था, फोटो खींचता था, एंजॉय करता था, वापस आ जाता था। तो मैं वापस चर्च गेट गया, और वहाँ पे गोल मैदान करके एक जगह है, बहुत मतलब इट इज़ बेसिकली अ प्लेन फील्ड, अच्छा खासा एरिया है। मैं वहाँ पे जाके खाली बैठ गया, और मैं सोच रहा था कि तब के सरशार में, मतलब आज से 8 साल पहले, 8 9 10 साल पहले, और आज के सरशार में क्या फ़र्क है। तब मुझे फोटोग्राफी करनी थी, तब मुझे फोटोग्राफी से पैसे कमाने की उम्मीद तक नहीं थी। मुझे बात करना अच्छा लगता था, लेकिन कोई आइडिया नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में था। अब क्या हुआ है, अब अगर मैं खुद को देखूँ, हाँ तब पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब पैसे जो पॉकेट मनी होती थी वो होती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि तुम जाके कोई कैमरा खरीद लो, उतने पैसे नहीं होता था। एंड आई वाज थिंकिंग, और पैसे खुद के तो होते ही नहीं थे क्योंकि मॉम डैड से मिलता था, रुपया मिलता था। अभी जब मैंने खुद को कंपेयर किया कि अब मैं क्या हूँ, तो आई एम नॉट ओनली अ फोटोग्राफर, आई एम टीचिंग फोटोग्राफी, आई एम अ टीचर, ओके, आई हैव गुड मनी और सस्टेनेबल मनी, हाउएवर यू वांट टू पुट इट, एंड नाउ आई कैन डू एनीथिंग। बट एक छोटी सी चीज़ है जो चली गई, और वो ये थी कि उस टाइम के सरशार में क्या था पता है, उसको खाली घूमना था। बैग उठाया, फोटो लिया, नहीं लिया, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अलग अलग शॉप्स देख रहे हैं, एरियाज देख रहे हैं, और बस वेदर में, उस अच्छे मरीन ड्राइव वाले वेदर में बस घूम रहे हैं। दैट यूज्ड टू बी मी एट दैट टाइम। अभी व्हेन आई नोटिस कि अभी क्या है, तो अभी ना एवरीथिंग इज वेरी गोल सेंट्रिक। फोटो ले रहे हो तो फोटो अच्छा आना चाहिए, लेक्चर ले रहे हो तो लेक्चर अच्छा डिलीवर होना चाहिए, पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट वायरल होनी चाहिए। हर चीज़ में गोल है, मतलब यहाँ से, क्योंकि हमको प्लॉट करने की आदत हो गई ना, हमारा टाइम है, हमारी जगह। अगर आप मुझसे पूछोगे चर्च गेट गए थे क्या किया, तो आई शुड, इफ आई टेल यू कि हाँ मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, विल बी लाइक भैया बहुत प्रोडक्टिव है। बट अगर मैं तुमको आगे वापस ये बोलूँ कि कुछ नहीं किया, तो तुम बोलोगे कि हम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो भाई, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर सुनी क्यों रहे इसकी बात है। एंड दैट डे आई रियलाइज कि ये एक चीज़ मिस हो गई मेरे से। आई जस्ट यूज टू वेंडर अराउंड। मैं बैग उठाता था, कोई गोल नहीं था, कोई जगह नहीं थी जाने की, बस इतना था कि भैया 3 घंटे चाहिए तो एक ही जगह पे बैठ जाओ, चाहिए तो गलियों में घूमो, चाहिए तो कुछ खा पी लो, चाहिए तो मत खाओ, चाहिए तो बारिश में घूमो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। और बेस्ट फेज ना यही होता है जब आप कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं पड़ी, आप बस अपनी जिंदगी जी रहे हो। ये होता है घूमना।
और ये अक्सर ना हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कल केरला चले जाऊँ, मैं बहुत घूमूंगा, ठीक है, वहाँ पे कोई गोल नहीं है मेरा, मुझे कोई जगह अचीव नहीं करनी, कोई जगह नहीं जानी कि ये वाटरफॉल नहीं देखा तो कुछ नहीं, बस बैग उठाया, सड़क अच्छी लग रही है, वो गाँव अच्छा लग रहा है तो घूम लिए। ये हम हमारे शहर में नहीं करते। हमारे शहर में हम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कहाँ जा रहा है, कोई भी दोस्त कभी मिलेगा पूछेगा कहाँ जा रहा है, बैंक जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। क्या होगा अगर आप घूम रहे हो, बस ऐसे ही। आइडियाज, एक्सपीरियंसेस वहाँ पे आते हैं क्योंकि आप अपने आप को ओपन कर देते हो एक्सपीरियंसेस के लिए। आप अपने आप को होल्ड करके नहीं रखते कि मुझे अचीव करना है। अब ये जो घूमने वाला एग्जाम्पल है, जमीन पे घूमने वाला जो एग्जाम्पल है, क्या होगा अगर हम इसको एक्टिविटी में डालें? कि आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? बस कर रहा हूँ यार। पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये बोल पाए, अगर आप ऐसे काम कर पाए, यहाँ पे ना आप खुद को एक परमिशन दे देते हो कुछ भी करने की और जीने की, घूम के नहीं, एक्टिविटी करके। यहाँ पे जो आगे ऑथर बोलता है, तो ये येलो में जो पार्ट है ये मैंने लिखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक यू रोम अराउंड इन अ सिटी, यू वैंडर, यू कैन डू एक्टिविटी in any way you wish and you can simply get lost in it. Lost हो जाओ, खो जाओ, टेंशन नहीं है। ये ऑथर जिन एक्टिविटीज का बोल रहा है ना, वो एक्टिविटीज भी वैसी ही है। When we say get stupid, when we say just roam around and do anything, इसमें क्या आता है? टेक अ वॉक, अपने शर्ट को आयरन करो, अपने वॉटर डिशेस को साफ करो, ठीक है, आसमान की तरफ देखो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, कुछ भी करो। 2-3 प्रोजेक्ट साथ में रखने रखो, 2-3 सब्जेक्ट साथ में स्टडी करने कर लो, क्या दिक्कत है? सो लेट्स जस्ट से यू हैव वन सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी और दूसरा सब्जेक्ट है या दूसरी कोई पेंटिंग बनाने का दिल कर रहा है जो आप करना चाहते हो, पर आपसे अभी आप ऐसा लग कर रहे हो कि ये मैं करूंगा, ये काम करूंगा, उसके बाद ही करूंगा। अब ना तो वो काम आपसे हो रहा है ना उसके बाद का कोई काम आपसे हो रहा है। तो वो काम करते करते जब बोर हो जाओ तो एक से दूसरे पे शिफ्ट कर लो, दूसरे से तीसरे से पे शिफ्ट कर लो, तीसरे से चौथे पे शिफ्ट कर लो। दैट इज ओके। एंड व्हेन यू डू दिस, ओके, you take time to mess around, you take time to get lost, you take time to basically go nowhere and आपको नहीं पता है आपको कहाँ लीड करेगा। और ये यूजुअली डिस्कवरी में एंड अप होता है, जहाँ पे कुछ कुछ नहीं अचीव करने के लिए निकले हो और बहुत कुछ अचीव कर लेते हो। मेरे साथ मतलब ये मेरी लाइफ का मंत्रा बन चुका है अब, ऑल्दो मतलब डर लगता है मुझे, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में जब भी खुद को ये बोला है कि भैया अभी तो मैं काम नहीं कर रहा, कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, बिलीव मी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कल का ही दिन होने वाला है। क्योंकि मेरा दिमाग ना फ्री अप हो जाता है कि हाँ चलो कुछ परफॉर्म करेंगे, अभी कुछ करेंगे, और फिर एक्सपेरिमेंट करके हम 10 नई चीजें करना शुरू कर देते। यहाँ पे भी ऑथर वैसा ही कुछ बोल रहा है आपको। तो जब आप बोलते हो, जब आप ये सोचते हैं कि आई विल टेक टाइम टू mess around, I'll get lost, I'll wander, you'll never know where it is going to go। और बोर होना क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक है ना कि हमेशा एक फ्लो में रहेंगे और बस कुछ कुछ भी बनाना है, कुछ भी अचीव करना है, दैट इज ग्रेट, बट डोंट डू इट विथ लाइक यू नो आई नीड टू डू दिस, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अचीव होती है। कई बार लोगों को जब उनकी पसंद की चीज़ करने दिया नहीं जाए, जब उनको रोक लिया जाए कि बच्चा आप आज से, कोई मुझे अगर बोल दे कि आज से आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते या आज से आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा घुट जाऊंगा। सेम वे लोगों के साथ भी होता है। जब उनको बोल दिया जाए कि आपको यही चीज़ करनी है, यही चीज़ परफॉर्म करनी है, यही चीज़ करनी है, आपके अंदर ना कुछ एबिलिटीज़ है और मल्टीपल है, पैशन सिर्फ एक नहीं होता। कुछ लोगों के बहुत सिंगुलर पैशंस भी होते हैं और वो सही भी है, लेकिन कुछ लोगों के मल्टीपल पैशंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे कुकिंग भी पसंद है, मुझे बस ऐसे ही घूमना भी पसंद है, मुझे साइकिलिंग भी पसंद है, मुझे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब होता क्या है कि व्हेन आई से कि मैं एक ही चीज़ करूँगा ना, तो फिर आपके अंदर के कुछ हिस्से हैं जिनको आप दबा देते हो। ऑथर बोलता है उनको दबाओ मत। अगर आपके 4 पैशन है, चारों पैशन सक्सेसफुली फुलफिल होने दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड व्हेन यू डू दैट, व्हाट यू रियलाइज इज एक पैशन दूसरे पैशन में फीड करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी पर्टिकुलरली, I was a photographer when I started. So लाइफ में when you have 2-3 passions, what happens is, जैसे मैंने फोटोग्राफी से स्टार्ट किया तो मुझे फोटोग्राफी आता था, मुझे फोटोग्राफी जमता था, मुझे सेट बनाना आता था। उसके बाद में मैं टीचिंग में गया और मैंने सिर्फ पढ़ाना शुरू किया। सो स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट हैपेंड वे आफ्टर आई एक्चुअली बिकेम अ टीचर। स्टोइसिज्म आर्टिस्ट को बहुत टाइम हुआ, उसके बाद मैंने शुरू किया है आफ्टर आई बिकेम अ टीचर। I taught for like, I believe 6 months, 7 months or something. And then I actually started like Stoicism for Artists.
अब हुआ क्या, एक पैशन से दूसरा पैशन कनेक्ट हुआ एंड नाउ वी हैव दिस चैनल वेयर आई एम एक्चुअली ड्राइंग एंड टीचिंग यू। अब अगर आप इसको देखें, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, इसमें टीचिंग आती है, इसमें प्रेजेंटेशन आता है, इसमें लेक्चर लेना आता है, इसमें फोटोग्राफी भी आती है। सो व्हेन यू हैव 2-3 रियल पैशंस, ऑथर ये बोल रहा है कि किसी को भी फेंको मत। तो अगर तुम्हें स्केटबोर्डिंग करना अच्छा लगता है, स्केटबोर्डिंग करो, तुम्हें जो करना अच्छा लगता है करो। एंड व्हाट इट विल डू इज you spend time with all of your passions, and what happens is you learn from one passion what you use in another. So for me, for example, what I learn in photography, I put it into teaching. What I learn from teaching, I put it into YouTube. What I learn from graphic design, I put it into the YouTube thumbnail, or maybe the arrangement of my room even, or maybe how I write something. आपको नहीं पता है कितना सटली ये सारी चीजें अचीव होगी, लेकिन ये अचीव हो जाती है। If you have 2-3 real passions, do not throw any of them. What will happen is you will learn from all of them, and if you leave anything now, you will feel a little pain in you. एक चीज को खो जाने का, एक चीज को छोड़ देने का एक दर्द होता है, वो दर्द आपको फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। This will when you do everything that you wanted. मतलब believe me, I've been wanting to go for swimming for a very long time, and hopefully मुझे जिम से ज़्यादा honestly swimming पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे पानी में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई एम होपिंग दैट आई गो बैक टू स्विमिंग। मेरा यूजुअली ये होता है, मैं एडमिशन लेता हूँ, फिर 2 महीने के बाद नहीं जाता हूँ। दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है। सो विल सी व्हेन आई एम एबल टू जॉइन स्विमिंग, एंड आई फील व्हेन आई डू दैट इट विल मेक मी फील होल अगेन, बिकॉज ये बुक के अंदर भी बोला हुआ है। एंड व्हाट हैपन्स इन योर ब्रेन इज यू मेक न्यू कनेक्शंस, इट फीड्स इनटू योर सोल, एंड इफ यू जस्ट हैव अ हॉबी, जस्ट डू इट लाइक अ हॉबी। कोई पेन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। काम करने का दिल हो रहा है, मस्ती करने का दिल हो रहा है, करो। एक काम से थक गए हो, दूसरा करो, दूसरे से थक गए हो, तीसरा करो, तीसरे से चौंक गए हो, वापस पहले वाले पे चले जाओ। इट इज टोटली फाइन। सो you need to have side hobbies, and just having the fact that you have side hobbies is something here that we call productive procrastination. So this was your 5th chapter. If I have to answer the question ke what problem it is solving, the problem it is solving is if you were by any chance in a place where आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ करना है, लेकिन आपको पता नहीं वो चीज़ आपको करनी है नहीं करनी है, उसमें दिन का आधा घंटा जाएगा, 15 मिनट जाएगा, जो भी है। अगर वो चीज़ है जो आपको करनी थी, आप करना चाहते थे, डू इट, इट इज़ ओके, यू कैन डू इट। जस्ट पे अटेंशन कि आपका मेन काम जो है वो हिल ना जाए, आप उसको अचीव करते रहो, उसको कंप्लीट करते रहो। बट जब दिल नहीं कर रहा है काम करने का, और जब आप अपने ड्यूज ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो ज़बरदस्ती सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो बैक एंड यू कैन डू योर साइड ऑब्जेक्ट्स, साइड हॉबीज, साइड प्रोजेक्ट, वट एवर यू वांट। और हाँ, एक चीज़, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एंजॉय करने की ज़रूरत है, इसको जीने की ज़रूरत है। अपने आप को बस उस चीज़ में डाल दो, घूमने निकल जाओ, कुछ पकाना है, खाना पकाना है, पका लो, जो करना है करो। यू विल एंजॉय योर टाइम मोर, and you will get many more ideas than were possible before. That was our lecture, everybody. The chapter is the question that we ask ourselves about how the hell do we get famous? And the answer is that you have to do good work and share it with people. Okay, now I do understand this thing can be easier said than done, and that is why the person has written the entire chapter. The core problem that we are trying to solve in this chapter is simple. We want to get famous, and we are asking the question, how do I get famous? The answer is twofold. The author simply says you have to do a very simple thing. First of all, what you have to do is do your work. Second, share your work. As simple as that. Okay, first you have to do your work. Second, you have to share your work. If you just do these 2 things, life is going to be perfect. But now the question comes in, anything that we say that we want to do or whatever we are aiming for, it is easier said than done for obvious reasons. And that is where the first part comes in. Doing work, doing any kind of work is going to be hard first of all. It is not going to be easy. And if you start working and suddenly you say okay, I will also start sharing. Usually we say public accountability is amazing and everything. But what happens is when you're failing in the eyes of public, it is not going to be that amazing. So obviously discipline, obviously consistency, hard work,
putting all the intentions and everything inside it is a must, accepted and agreed. But with that, you should not want to be famous. That is the first understanding. Like, the irony of the chapter is, the name of the chapter is, how the hell do I get famous? The first point says, don't want to get famous. Okay? Abhi, I'll ask you a simple question. I think most of us will resonate with that. Ranveer Allahabadia, okay? He did a mistake. And the mistake is bad. We are not going to support it in any way, shape or form whatsoever. But this goes to understand that a lot of our own friends have made worst comments, have made worst jokes than Ranveer Allahabadia did that night. Agreed, everyone? We have heard worse things. The thing is, they are not famous. And because they are not famous, they are not getting sacked. The very thing that they are normal, simple human beings that do not go viral is a thing because of which their livelihood has been spared by the people because people don't know about them. That is the first thing that the author is trying to say. On page number 79, I'll read the first paragraph. If there was a secret formula of becoming known, I would give it to you. But there is only one not so secret formula, and that is do good work and share it with people. Where it says do good work is incredibly hard, agreed. The thing is, you should not want to get famous. Reason? Make stuff every day. Know you're going to suck for a while, fail, get better, and when you do it in privacy of your own room, of your own court, of your own track, of your own gym, when you are working with people not knowing you, you are allowed to fail as much as you want. It is totally fine. That is why this is for us, pinpointing all of us who are right now here who are not famous, that it is a great thing that you are not famous. This is your passport, this is your license to make mistakes and do as hard of a work as you can. The more hard work you can do right now, the more mistakes you can do right now, the more experimentation, failure you can do right now, it will be 100% accepted by everyone. For example, if I was famous and I made a comment on Ranveer Allahabadia, suddenly right now in the comment only you will see at least 100 people supporting Ranveer, 100 people accusing me, 100 people fighting for it. We would not have been able to focus on the chapter that we are focusing right now just because we took an example related to a celebrity. But what is the amazing thing? We are not famous. So we can talk about whatever we want without being bothered by whatever the hell people are thinking. That is the first part. And definitely you have to work. Now, one of the very key aspects of doing good work is not trying to be great. Just get up, show up, be disciplined, and do your work every single day. It is as simple as that. You can build habits, you can attach it to a particular time, you can attach it to something very tiny that you will do every single day, and you keep on doing it. That is how we start. This is the first step. Now comes the second aspect of the thing, which is share your work. Now the question is, how do we share our work? When we come to asking the question, how do we share our work? It used to be incredibly difficult some years back, some years down the line, let's just say 20 years back or 30 years back. You probably have people in your family, in your relations, people that you know who were amazing artists. But nobody till date knows about them. Reason being simple, they never were able to share their work. And it was a problem. But now with you and with me, it is incredibly easy to share our work. Reason being the internet. Some of you are sitting in Bangalore, somebody is sitting outside India, somebody might be sitting in Bihar, Vikas is sitting in Bihar. For people watching on YouTube, you could be watching outside from India. And we are able to be connected. Why? Because we have the internet. Now there are some questions that come when we talk about the internet. Usually, whenever we are talking about the internet or sharing our work, there is one question that says, sir, what if I share my work and my work is stolen from me? And that is a question that a lot of people ask me in photography or illustration, where I tell them to make an Instagram page and start sharing their work. And they are like, but what if somebody steals my idea? The thing is, first of all, nobody is going to steal your idea. The second is, if your ideas are any good whatsoever, you will have to thrust them down people's throat.
because, like, for example, take right now, we are explaining one of the beautiful books. Okay, there are 4 of us here, but if there was a comedy sketch, or like, let's just say a show like Latent going on right now, there would be thousands. People rarely come across good things, or they stay for good things. There is a very rare variety, very minimum people who actually show up. The same will go for you. When you show your work, when your work is amazing, there is a very rare or very less probability that people who are very keen or very amazing will come to your channel in the beginning or will steal your work. So do not worry about that. I have made a table. So we'll start with a table and then we'll explore points one by one. The first thing is, when you say, I want to get famous, there are 2 things. One is work. You have to put in a lot of hard work, agreed. And accept being unknown. That is totally fine. That is not an issue. The second is share things. Where? On the internet. You share things by doing 2 things. One is you be curious. Second is you invite people. Now we'll go among these branches, but let me first talk about what it means, what the author is saying when they say that you have to be curious. Whenever we are talking about creating something, all right, or maybe sharing something, if you are sharing what everybody else is sharing, if you are talking about what every Tom, Dick and Harry, every other person is talking about, then it is very less that people will pay attention to you. Okay, it is as simple as that. So if people are talking about apples, you have to talk about oranges. If people are talking about the color orange, you have to talk about the color purple or maroon or green or whatever. And this is one of the secrets, that the reality is, for stand-up comedy, for subject, for even your own vibe, your creed, your tribe, or whatever it is, the truth is that when you start showing yourself what you are curious about, start asking questions that you are curious about, okay, what will happen is, slowly, it will not happen in a day or so, but what will happen is, slowly you will attract people who are just like you, who will share your same vibe, who will share your same tribe, and they will come to you. For that, you have to stand out from the crowd. So for example, if everybody is running forward, but you feel like you should run back and you're all alone, it is okay, start running backwards. What people will do, whoever, like for example, there was somebody who was running forward and they actually wanted to run in that direction, but they were feeling lonely. They wanted somebody to accompany them, and suddenly they see you, the only idiot who's running backwards. They will join you. That is why, if you do things that nobody else is doing, if you do things that you really believe in, you will attract your tribe. एक शेर है उर्दू में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया. To translate it, it means I was only walking towards my path all alone, but people started coming and joining, and we created a caravan. It is usually said when anybody is talking about journey, this particular poetic phrase is usually said when people are in farewell or something, because they have accumulated, and this is something that happens on internet or on YouTube and everywhere, that somebody starts doing something, and through their years, through their life, when you look back, when you are, let's just say 70, 80, you will turn around and look, and you will see an entire family that you have created, of people who support you, people who like your work, people who have helped you, mentored you, you have mentored them. And that is what the shade says, that is what the poetry says, that I started walking alone only when I left home, but people started coming, and now we have created a caravan that I look back and see, and I'm very proud to have. And that is something that gives people a lot of motivation when they think about going in a direction, that people will come. That is also something the author is saying, you have to be curious. Okay. Now, there are some things. First is, definitely you have to be something different. The second part simply says that you have to invite people to be curious with you. Now imagine that you're running backwards and somebody comes to you and say, okay boss, everybody is going in this direction. I love that you're going in this direction. I want to walk with you. And what happens if you tell them, no, you're not worthy, go away. Okay, they won't be able to join you. This book particularly is for art. When I left chartered accountancy, when I left CA,
I was going for photography. Now nobody in my entire family is a photographer. So there was literally like no support whatsoever in terms of network, of friends or whatsoever. But the thing is, when I started walking there, I remember there was this competition that I went into, okay, and there is this really great, amazing photographer. His name is Rashri Moitra. He's a friend of mine. He's not he does not do a job in photography, but he's really good. Like he's something I aspire to be for sure. So what happened was we were shooting in a competition, like we were competing, and it was just a very casual thing where they said, okay, on this date, come to this place and we are having a competition, and I was not going. Eventually, when you make friends on Facebook and Instagram and you tell people where is photo walk happening and this and that, you make a good amount of friends. This thing, photography itself, attracted people who like photography to me. There used to be a group on Facebook where somebody once texted that where can I join some photo walks in Mumbai to go and shoot with. So I also comment if anybody is making, please add me as well. They added me. Then there were 4 or 5 people. One day we met. Okay, we took photos here and there, and then I did not go there back because I did not have time. So one of them texted me one day, okay, can you please come to the competition? I think you will really do good there. I was like, okay. So I go there and we start shooting, and this person who's exceptional, we compete, and then we were in the top 3. Okay, he understood I understood that he's a really good photographer. He understood that I'm a really good photographer. After that, we got connected on Instagram. Now what I used to do is I used to read big photographers on Instagram. So if anybody is from NetGeo is, for example, posting something, I used to go and I used to like dissect or basically do a postmortem of their photo, that you have done really amazing on the rule of thirds and color and contrast and this and that. And I used to break it and I used to praise them. Just admiration, just simple admiration. And then one day he texted me, boss, this thing that you do now, I really admire it. You do really good. So I was like, thank you. This was my second connect with him. Like just first met in competition, second on Instagram. Third, he texted me, listen, I'm going to Ladakh on a mountain which has not been explored yet. We have 1 seat remaining. Would you like to come? I could have gone, but at that time I recently had started teaching. So I told him, listen, I just started a new career. I cannot forsake it, so I won't be able to come. But the thing is, this is how things get connected. If I hadn't texted people on Facebook, I wouldn't have gotten the opportunity to go into a photo walk. If I hadn't got into a photo walk, I would have not known people who would have later told me, okay, please come to the competition. You are not like, you don't participate, but come to the competition. We think you can do something. Because I went to the competition, I met this guy. Because I post things, this guy like reacted to it. Because he was going out, he invited me. If I would have gone, that story would have even, let's just say, blossomed further. So this is what I mean. When you do your thing, when you share your thing, you have to go out, you have to meet people, you have to smile, you have to post something, you have to share your work. If you don't share your work, how will people know if you're good or not good? So this is one story. Now let's leave photography. Let's talk about philosophy, Stoicism. This book is something that I have been reading for 4 years now. And then one day I was like, okay, boss, I know I read every page. I have almost read every page. I know it inside out. Let's make a video on that. Stoicism is something that is very new in India. Very, very new in India. Like if you ask 99% of the people what is Stoicism, they will have no idea. What I did not use the name Stoicism particularly. Like the very reason the YouTube channel came into existence was Stoicism for artists. I was making Stoicism videos because artists are very emotionally fluctuating. There's emotions fluctuate a lot. That is why the video got made. Because those things got made, today we are in a conversation. Okay, today this video is streaming on YouTube. So what it goes to say is, whatever inclinations you have, whatever you want to do, maybe you are somebody who's into fitness, somebody who's into philosophy, somebody who's into art, communication, whatsoever it is, start chasing it. Chasing it is definitely going to be the hard work. Start sharing it as well, because people who are inclined for it will reach out. Like you will have, like the very book that I'm explaining you, the reason I'm explaining you this book is,
I got it on a discount. So I was thinking, which book should I get? These 3 books, Keep Going, Still Like an Artist, and Show Your Work, were on sale at 245. So I was like, okay, this is cheap, let's buy this. Okay, just an inclination. We bought this, now we are taking a video out of it. It is as simple as that. The very reason of taking this book was cheap as compared to the other books, and I was like, okay, we can get all 3. This book is something that I want to read as well. Let's do that. But if I would have just read it and kept it, we would not have been having this conversation right now. The very reason we are sharing, we are talking, we are like having a meeting, and something is growing. Now this will go on to YouTube. This will show on to YouTube. And then we will invite more people and okay, let's have a conversation. So this is very possible that one day, let's just say in a cafe, maybe in Kerala, somebody will meet me and they'll be like, hey, you made that video on Still Like an Artist. Is that you? And I'm like, yeah. And like, I have a question. I'm like, okay, let's have a coffee and figure it out. You know, it can lead to those experiences. And that is why he's saying, okay, do your work and share it. Okay, so if you're walking, because the way the world is now, you might also be having a lot of engineers, doctors in your life. Uncle, auntie, somebody is a doctor, an engineer, a CA, something. But suddenly if you start, everybody is walking in, let's just say, the front direction. This is where I'm connecting it. Now, suddenly you say, okay, I'm going to talk about philosophy. I'm going to talk about photography. There is somebody who will be interested, who wants to go backward in that direction, or if everybody is going left, they want to go right, and they'll come to you and be like, okay, boss, you talk about it, take me with you, you know. And then you have to invite and accept people. If you are like, no, I'll only learn, I'll only do this, it will not help. Cool? Everybody clear? Hi Manjusha, so nice to see you. Okay, so these are the 2 things. First, be curious. Second, invite people. Now, how do we do that? The first thing about be curious, the first point about when you are thinking about being curious is, you have to first of all share your secrets. Now, I know this can be controversial, so I'll explain it to you. Then go online and find something to say. I'll talk about this. This we have already covered, something different. So we have 2 points, then we'll jump to the next point. There is this amazing communicator by the name of Robin Roberts. Okay, she was, I believe, the presenter for ABC News. First she was in sports broadcast, then she became a morning news anchor. She has a masterclass in which she has, the first session says, make your mess your message. Now, what is my mess? What is the mess of my life? I was thinking it yesterday. I could have easily, after 12th standard, gone into photography. When my dad asked me, what are you gonna do? I could have simply said, okay, I'm not very good with studies. Let me go into some media related field. I'll do really amazing then. It could have been simple. It could have been very simple. But what I did instead, after 12th, I went into chartered accountancy, suffered 7 years into chartered accountancy, worked 3 of them being an intern, being an auditor, then fought my family back to get into photography. I am currently doing journalism. Like I was never a journalist. My course says mass communication and journalism, though I have no inclination and I'm not related to journalism. This could have been a very simple journey now. 12th, media, work, earn. Simple. What happened after 12th? CA, 7 years of hell, 3 years being an auditor. Then when I jumped from CA to photography, it was hell breaking loose, because you won't believe, just 6 months back, I met somebody. Okay, it has been around 5-6 years since I've left chartered accountancy. I met him like, hi, I'm Sarshan. Like, you were doing CA, right? I'm like, because nobody in my family is a chartered accountant. So everybody, even the village people know this idiot was doing CA. It was so widespread. So the thing is, just because I went into chartered accountancy, and just because everybody knows that I was doing chartered accountancy, my journey became hell when I wanted to transition. And then I came into photography, graphic designing, and now in teaching. So I was thinking about life as a whole, and I realized my real learning is actually going from CA to this. If that wouldn't have happened, no mess would have been created in my world. And because no mess would have been created in my world, then life would have been simple. I would not literally have no message to give you.
The very reason I have messages to give you is because of something that happened in my life. So Robin Roberts said this, that you have to make your mess, whatever mess you have been through, your childhood trauma, you had depression, you did not have amazing siblings, amazing parents, you were a drug addict maybe, you were abused when you were little, you were harassed, you are very passionate about cooking, all unrelated, but all are things that people can be very passionate or can have a mess in their life about. Whatever is your mess, make it your message. And the author is saying the same thing. For example, Bob Ross, the famous painter, he shared his painting every single day. That was his secret to life. If you ask him what is the way you find peace, he'll say, I paint. And then he shared it with the entire world. He painted every single day. Martha Stewart does it with the way you live life. I do it with teaching. And you people, whatever your mess is, whatever your secret sauce is that binds your life closer together, you share that. I found photography when I was the most depressed. Photography was the bridge of me ending my CA journey, because I used to get depressed Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and on Sunday morning 4 p.m. I used to go and shoot, because that was me escaping my 9 to 5 every single week. And then when the time came, it was like, I will teach photography, because I don't care who you are, I'm going to teach photography with the most passion. You can be more knowledgeable than I am, but you cannot be more passionate than me in this field, because I have a connection with this field. Same way the author is telling you, if you want to be famous. So first of all, obviously hard work is the key, the prominent thing. But the second is, when you share your work, share your secrets. Share your mess, share your problems, share the solution you found. Nobody gave it to you. You found the solution, and then you are showing the world, okay, I'm doing this. The second part is, when I teach, I have repeated the entire syllabus of photography, of basics of photography, that I basically master on. I think so, at least. When I gave the exam, I was the first ranker in my class. So it was pretty much well defined that boss, this guy knows the nitty gritty and ABC and everything of photography. This was around 2019, which is, let's just say, 6 years back. Since then, when I teach photography, which I have to some of you people, every single month I learn something new about photography. In the same subject, in the same words, in the same techniques that I teach you, after I teach you, when I sit and I realize, array, this is something new. This is something new. This is something that I hadn't thought about in this way. This is amazing. How can I forget this? Teaching the basics. I think I have repeated the entire syllabus of photography around, I believe, 15-20 times by now. Every single time I teach it, every single time the subject renews for me. Every single time there is a new thing to learn. And the author is saying, when you go on the internet, now you do not go on the internet only to share stuff. You go on the internet to learn stuff. Because when people react, when you look at inspirations, when you look at new people who you can connect with, you realize, okay, this is what you have to learn. Learning happens with teaching, learning happens with sharing, learning happens with every single thing. So even if you think, okay, I have this and I am going to share it with the world, great. But when you share it, you will realize there are places that you have to fill. And that is something that you will find new. So when this is actually a transaction. When you give something, you actually receive something else as well in every single transaction. Definitely, it is not going to be money. It is not going to be subscribers or followers. It is going to be learning. It is going to be observation, experience, reactions. And that is going to teach you something which is going to change the way you move forward. So it is actually something that will turn your life around. It is going to happen 100% of the times. That is why you have to be curious. First, about something new, owning yourself, wanting who you have to be. Second, sharing your secret and seeing how it will impact other people. Third, when new things come your way, for example, going back to the simple example, when I'm moving backward and somebody is moving backward also, and they are like, okay, the world is going in right, I want to go left with you. Maybe they'll have a cycle and they can give me a lift and make my journey better. The world is going to give you a feedback. Maybe you will learn much more
in your very field that you are curious about, and that will teach you. And that is why, first of all, you have to share something and you have to be very curious about it. There is a poem by an author that says that take the road that is less traveled by. Now, the thing is, for anybody, okay, let's just say, and go very real, let's just say your parents wanted you to become an engineer and you agree and you become an engineer. Your road is going to be very smooth because everybody knows how to become an engineer, everybody knows where to apply, everybody has contact in that field. So you, let's just say, and there is nothing wrong with being an engineer, let me just signify that, because if you want to be an engineer, if you are excited about it, be an engineer, boss. It is an amazing field. Those people put a lot of value into people's life. Totally fine. But I'm just saying that, let's just say you clear your 12th, then you enter science, and then you become an engineer. Everything that you have taken is like a road it's like a highway. All you have to do is get your car on the highway and you are going to find a way and you are going to get a very amazing job and a very comfortable life. But for the people who take roads that are not usually taken, for example, somebody suddenly says, I'm going to be a content creator and I am going to be a YouTuber. Is there a formula for YouTube? No. Does anybody know how to go viral? No. Does anybody know what will attract people? No. I remember when my channel was hyping and we went from 500 subscribers to 5,000 subscribers in the time of 5 weeks. I got so overconfident, I started giving people advice, okay, how to run a YouTube channel. And suddenly my YouTube channel plummeted. And it was in 8th August. Today, we are literally completing 1 year of that. We are still not able to figure out how the hell do you run a YouTube channel. So if you take this road is the road less taken by, right? Nobody knows. There is no secret formula that anybody can teach me and tell me, okay, do this and you will be a good YouTuber. Do this and try and you might fail. That's it. So these are the roads less taken by. Now, why would you take them? First, passion. Second, it will develop your character. What a person, an engineer, will not learn is something that I have learned. I have learned to explore, read books that don't mean anything, watch videos that you end up thinking, "Arey, ye to kuch kaam nahi kiya, this was not working." But the character, the understanding that builds here, that builds on walking on a rocky terrain, on a road that is not a very fine highway, is you build your muscles of creativity, of emotional resistance, of EQ, IQ, dealing with people, networking, calling people and asking, how the hell do I do this? Finding things. This is where you develop yourself. So I have covered out of the two, there were 3 parts. First, do hard work. Second, in sharing on the internet, be curious. We have covered that. Now the third part about sharing is that you have to invite other people. Now the first thing that comes in is a very simple thing. People are usually very scared of their things or their ideas being stolen. And the author literally says this: do not worry about people stealing your ideas. If your ideas are any good, you'll have to ram them down people's throats. And I can agree with this. People literally do not listen when your ideas are good. Now, we are talking about inviting people, okay? So if you think, will somebody steal my idea? The simple answer is no, they are not going to steal your ideas, because if your ideas are really any good, people will not understand it in the first go. If you are really, really scared of how do I share my idea, or I don't want to share my idea, this is something that I luckily have gotten on and I don't really want to share it, the author is saying don't share it. Simple. But you still want to invite people, right? Then what do? The thing that you do is you do not share the recipe. See, any good idea is simple, 100% agreed. But anything that you have made is going to be made of parts. How to use or combine those parts is usually the recipe. Do not tell them the recipe. Tell them maybe the ingredients or 2 or 3 ingredients that you use. For example, my mother cooks amazing Szechuan rice, okay? And she puts 1 or 2 secret ingredients. How she does that, nobody knows. So anybody who's asking her, okay, how do you make such amazing Szechuan rice? She's like, simple, take rice, okay? Fry it, put Szechuan sauce in, put the vegetables in, put it on high heat and just
Cover it from above so it can boil really nice, it is okay. Now this is exactly the step she might take, but in that Szechuan sauce there are some ingredients that she has added that she'll never let other people know. So you can give them your process. Okay boss, I am making this videos. Do you want to tell them this is how I structure my video? Not compulsorily. Don't connect the dots for them. Still people will come to you, people will know you because you have a vibe. The same thing happens with all the great photographers. There are photographers, for example, you can go and look at David Allen Harvey. You cannot figure out how he takes photos. You literally cannot figure out how he takes photos because his photos are one of the most random photos and everything. He does not follow your normal composition rules. For example, rule of thirds and this and that. Nobody will be able to actually make sense of this. How was he able to come up with these photos or similar photos? His photos have a very different level of play. You know there is a lot of artistry in David Allen Harvey photos. Without a doubt, there is a lot of artistry. But how does he take his photos? It's really hard to figure out. I have tried my level best. I was watching an interview, or not an interview. He actually came on a TED talk, or he was giving a speech somewhere. I believe it was a TED talk, and he came in and he started sharing his life journey. So he's like, okay, I was not very nicely accepted kid. So these things, because he was not well when he was little. So he started, basically he used to like admire the normal life, and that normal life became something that he got very curious about, and he takes photos of that. Now this thing, you might have also understood that this is a very secret sauce, but he has not connected the dots. I can understand his entire life history and still I cannot take pictures like him. But his entire life history makes me very empathetic towards him. I now understand the person better. That is something I hope the author is trying to say. That you do not need to connect the dot. You can share your stories, you can share your life, you can share your philosophy, and you can give it to them in pieces. You do not need to share your recipe. If you explain a joke, the joke loses humor. If you explain a magic trick, the magic loses its impact. You do not have to compulsorily share your dots of what and how do you connect things. That does not mean you cannot share your work. For anybody who's scared that people will steal, don't share. Don't join everything and give them the structure or the roadmap ke aise kar, or do it like this. You don't have to. Now, there are two more points. First, show progress. When you improve, when you are doing something, let's just say you go on the first point, show that progress. How you came to the second point, show that progress. Third point, show that progress. For example, let's just say I say that a person was climbing a mountain. Now there might be a question in your mind, did he reach the top or not? And people usually have this question as well कि वो चढ़ तो रहा था, हुआ क्या, फिर क्या हुआ, गिर गया नीचे, did he fall down, did he stumble, did he stop there, did he die on the road, did he reach the top? And this is how people will also get curious with you. And if you, for example, taking the road less traveled by or following your curiosity, and you are somebody who wants to climb the mountain, and there is somebody who wants to climb the mountain as well, they will follow you. Invite them in your struggle. Don't tell them what is the correct strategy you follow. Just accompany them. A lot of time people are not looking for somebody who can tell them the way they have to do things. If that is what they wanted, they might not have joined the journey at all. They want to explore their own way. You have to explore your own way. All you have to do is be on the way together. And that is what will grow your community or grow you into your network. Last point. When you look at your website or your carousel, or I look at my YouTube channel, one of the normal questions that you have to ask yourself is, what can I fill this with? And this will inspire you to create more work. So usually when I have an idea that I need to work on. I'm really hoping that I work on it. The thing is that I am thinking of managing or making an offline journal. And what I want to do with it is every single day I want to take pictures. Okay. For example, breakfast, click. Study, click. Travel, going to the beach, click. And meeting friends, click. Eating with friends, click. And what I want to do is every single day I want to take these photos, print them, stick it onto that book. And what will happen after a month is I will be able to look at how my day looks. And most of the time it will look very simple, normal. Yesterday also I was sitting here and making the video only.
then here only, this is not a very good, amazing place to be. But what happens if suddenly there is a photo of, let's just say, a beach in it, and I'm like, okay, something good happened there, something good happened here. On day 5, something good happened. On 6, something good happened. And what you will eventually go in the psychology of asking yourself, what more can I do to actually fill more amazing photos into this book? And what you will do is you will take trips. You will do bungee jumping. You will do deep diving. You will fall from your cycle. You will hurt yourself. You will take a picture. This will fill your life with much more memories or much more amazing experiences that you want. The same thing comes in this as well. When you look at your Instagram feed, when you look at your website, your blog, your newspaper cutouts, whatever it is, your book that you're trying to write, ask yourself, what can I fill in this more that will add meaning to it? And if you do that, you will not only do hard work, but you will grow in such a way that people will know your hard work, will admire you. You will not get famous unnecessarily, but you will connect with the right people. And believe me, connecting with the right people is the most important thing when it comes to getting known. Because if you are known the wrong people, then it just becomes hazardous. Okay, so for example, let's just say your family is of all doctors. There are 18 or 20 doctors in your family, and you are an MBBS doctor. Then suddenly you are in the right crowd now, people, because you are famous in them. You are an MD doctor. Congratulations, people will pat you on the back. They'll help you in the network. But if you are a graphic designer in a crowd of MD or MBBS doctors, they might not appreciate, may or may not appreciate. You will not get the feel. Does it mean that you are not famous there? No, you are famous there. You are just not in your crowd. From this way, shared and like still like an artist, what will happen is you will get famous, but you will get famous in the crowd that means something to you. We are having the 7th chapter. The name of the chapter is Geography is no longer our master. The reason the author says that is, till now, there is a quote by Martin Scorsese in his masterclass in which he says, if you want to be an actor, be in Hollywood or Bollywood and live near the places. Because let's just say there is a director who goes to a particular mall and you are a salesman there or you are a vendor there. Then the director will notice you. Maybe he'll like the way you look, and then maybe he'll cast you. For example, Ashiki, the movie, the actor was casted this similar way. Mahesh Bhatt went to his mother's house. His photos were hanging and he wanted to cast him. Okay, Jackie Shroff got his break like that only. For that reason, it was considered that artists live in a place where other people can see them, where other people can communicate with them, get connected to them. But with the emergence of the internet, geography is no longer our master. We do not have to rely on geography. Reason? The reason is very simple. Author says that when he was little, he wanted to live in places where there were a lot of artists and a lot of things were happening. And he shifted from his house, his native place. He used to live in Ohio. He shifted to Texas. Okay, Austin, Texas. Now the thing is, he says that I live in Austin, Texas, but out of the 100 people I know, okay, out of all the people I know, only 10 people are from that area. 90% of the people that I share creative energy, discussion, understanding, ideas, theories, concepts, work with, do not live in Austin, Texas. 90% of the people are from internet. So he basically says, okay, whenever you are there in a community of people you can connect with, wherever you live, no matter where, because you have the internet, you can connect to anybody and everybody on the internet. You can just open, for example, we have a WhatsApp group. You can just open Facebook, you can just open Instagram, send somebody a message, connect to them, be somebody's friend. Life becomes very, very, very easy when you want to connect with people now. And that is why you don't have to worry or you don't have to step back. You can actually just have an Instagram page and connect with people if that idea has not occurred in your mind yet. That is what basically the author is trying to say, that you do not have to worry about connecting with people. By the way, what is the name of the book? Steal Like an Artist, right? You're stealing. Who are you stealing from? You're stealing from your inspirations, but
You steal more from people you connect with, people who are in your network, people who you get an understanding from, people who you talk to. If you can connect to everybody on the internet, you can steal better, right? That is a basic understanding that we are having. That is the first point. On page number 89, this is what it says, that you do not have to rely on geography anymore to do anything or to connect with anyone. Now, second point. See, what are we stealing? Either you are an artist or you're not an artist. What are you trying to steal? You are stealing ideas. And where does the inspiration come from? The inspiration comes from something that you see, something that you talk, someone that you talk to, some discussion that you have, something that you read. And that is one reason why the author says, surround yourself with objects, books, every damn thing, whatever you can have. So even let's just say you have a room. In that room, put posters, put photos, put whatever you can. Because looking at them, thinking about them, reading something, having books in the, like, there was I believe some 2-3 chapters back, एक पेज के अंदर उसने बोला था कि there is nothing better than a library filled of books. और वो इसलिए है क्योंकि जब आपके पास लाइब्रेरी रहेगी ना, तो आप कोई भी बुक कभी भी उठा के पढ़ सकते हो. अगर कोई बुक रैंडमली भी आपने एक पेज निकाला, उस पेज को लिखने के लिए उस ऑथर ने कम से कम 5-6 आइडियाज़ लगाए होंगे. आपके लिए वो आइडियाज़ रेडिली अवेलेबल है जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं थे. वो आइडियाज़ आपको अचानक मिल जाते हैं. सेम चीज़ है, ऑथर बोलता है कि अपने रूम को ना डेकोरेट करो, अपने आप को सराउंड करो बुक्स से, टेक्स्ट से, कोड से, जो आपको डालना है वो चलेगा. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रैंक काफ्का एग्जिस्टेड अ सेंचुरी बिफोर द इंटरनेट. तो इंटरनेट जब आया 100 साल पहले काफ्का आके चले गए. काफ्का ने एक कोड बोला था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम के लिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू लीव होम, सिट एट योर डेस्क and listen. Don't listen. Just wait. Don't wait. Be still and alone. The whole world will offer itself to you. Meaning when you sit silently and be alone, what happens is आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, और वो अपने आप को आपको ऑफर करेंगे. तो फिर आपके दिमाग में कई आइडियाज़ आएंगे. एंड सिटिंग अलोन हैज़ बीन कंसिडर्ड दिस वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग और थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंसेस. शाहरुख खान ने बोला है कि ही सिट्स अलोन व्हेनेवर ही हैज़ अ प्रॉब्लम. आई थिंक मैं ब्रेन ट्रेसी का कोई वीडियो देख रहा था या ये किसी का तो था, जिसके अंदर ही वाज लाइक वट एवर प्रॉब्लम यू हैव इन लाइफ, जस्ट सिट अलोन फॉर 2-3 आवर्स, यू विल गेट द सोल्यूशन. अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली ही सेज दैट व्हेन यू सिट अलोन योर ब्रेन पोर्स, योर द एंटायर वर्ल्ड ओपन्स अप एंड यू गेट आइडियाज, यू गेट क्रिएटिविटी. अब अलोन रहने से आता है दूसरा पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज enjoy कैप्टिविटी. अब कैप्टिविटी एक वर्ड है जिसके अंदर अगर हॉस्टेज किसी ने आपको लेजर से, खुदा ना खास्ता कभी ना हो, लेकिन आपको किसी ने किडनैप कर लिया, तो वो आपको लेके जाके एक ऐसी जगह रखेगा जहाँ से आप कहीं निकल नहीं सकते. बराबर. इट मीन्स यू आर केप्ट कैप्टिव. आप एक ऐसी जगह हो जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन का सफ़र है 2 घंटे का. 2 घंटे का तक आप कहीं जा नहीं सकते उतर के. अगर आप बाइक चला रहे हो, ये कियानू रीव्स ने बोला था कि बाइक इज़ लाइक मेडिटेशन, बिकॉज वाइल यू आर राइडिंग यू कैन नॉट गो एनीवेयर, यू कैन नॉट यूज़ योर फोन, कुछ नहीं कर सकते आपको सिर्फ बाइक चलाना है. और ये रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है. व्हाट आई हैव डन इज़, जब मेरा एग्ज़ाम था जो अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऑडियो बुक्स उसकी बना लिया था. एंड आई यूज़ टू लिसन वाइल राइडिंग ऑन अ बाइक जस्ट अराउंड लाइक माई नेबरहुड. और वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि आपका दिमाग भी खुल रहा है, आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं, वही टाइम पे आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो. ये मेरे केस में इसलिए काम करता है क्योंकि मैं सुन के ज़्यादा पढ़ता हूँ रादर देन रीडिंग. सो दैट हेल्प्स अ लॉट देयर. व्हाट द ऑथर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू से, और ऑथर ने अपनी कहानी बताई है. जब वो छोटे बच्चे थे तो ऐसा होता था कि उनकी मम्मी उनको शॉपिंग के लिए लेके जाती थी और इनको नहीं जाना होता था उनके साथ. तो उनको बोलते थे आप मुझे कोई बुक दिला दो, मैं वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ लूँगा. अब वो 1-2 घंटा जितना भी टाइम वो शॉपिंग करते थे, ये बंदा बैठ के बुक पढ़ता था, और इसने ऐसी कई किताबें बैठे बैठे ख़त्म कर दी. अभी भी वो एक काम करते हैं जहाँ पे उन्हें जब ऑफिस जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी निकाल के भी जा सकते हैं और जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और एक बुक लेके बैठ जाएंगे. 20 मिनट लेट पहुँचेंगे, लेकिन एटलीस्ट उतने टाइम में उनकी पढ़ाई हो जाती है. तो जब आप अकेले रहते हो, कई बार क्रिएटिविटी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्पार्क होती है, बहुत ज़्यादा आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं. सो
The second point is enjoy captivity. Be alone in a situation where you cannot escape. As simple as that. अब आता है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि लीव होम, अपने घर को छोड़ दो. अभी ज़रा ध्यान देना, पहले इस बंदे ने बोला कि जियोग्राफी अब हमारा मास्टर नहीं है तो आप अपने घर में अकेले रह के भी कुछ कर सकते हो. वो बोलने का रीज़न ये था कि कई लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होता, या तो उनकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि वो बाहर नहीं जा सकते, घर छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं पे घूमने नहीं जा सकते, नहीं तो घर में लेट्स जैसे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका ख्याल कौन रखेगा, या फॉर एनी रीज़न लेट्स जैसे डिसेबिलिटी है या पैसे का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो जाके किसी आर्टिस्ट को न्यूयॉर्क में नहीं मिल सकता. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो कुछ ही नहीं कर सकता? नहीं. इसलिए उसने बोला कि ज्योग्राफी अब आपका मास्टर नहीं है, आप दोस्त बना सकते हो. दूसरा, क्रिएटिव काम करने के लिए किसी वाटरफॉल के नज़दीक जाके ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के भी बना सकते हो. ये था सेकंड पॉइंट. लेकिन इससे ऑथर का मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल मत करो. आपको ज़िंदगी में एक बार या मल्टीपल टाइम्स अपने घर से निकलना चाहिए. क्यों? जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में फेंकते हो. जब आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही क्रिएटिविटी आती है. डिस्टेंस और इंसाइट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है. जितना ज़्यादा आपके घर से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपके इंसाइट्स और आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे से फायर करेंगे. इमेजिन करो कि तुम अभी जाके मे भी तुम्हारे यहाँ पे कोई भी एक सुपरमार्केट होगा या मॉल होगा, उसके बाहर खड़े हो जाते हो, तुम्हें कैसे फील होता है. अब इमेजिन करो कि तुम किसी और कंट्री में हो या किसी जो भी तुमने अभी तक ट्रैवल किया है, किसी और सिटी में हो और वहाँ के मॉल के बाहर खड़े रहते हो अकेले. अकेले मतलब अकेले गए हो आप. फीलिंग दोनों की सेम नहीं रहेगी. बहुत अकेला फील होता है या बहुत अलग फील होता है. ये वही फीलिंग है जो हमें कभी कभी हाईवे पे आती है. जब हाईवे पे हम गाड़ी से थोड़ा उतरते हैं और एक अलग फील होता है. अब वही फीलिंग ऐसा नहीं है कि वो वेदर अलग है इसलिए वो फीलिंग आ रही है. वो फीलिंग वेदर की वजह से भी आ रही है, लेकिन पर्टिकुलरली इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने घर से दूर हो. नाउ यू आर ऑन योर ओन, यू बिहेव डिफरेंटली, you create art differently, you work, you think differently, and that is when you think differently, you do different things. Difference और distance, ये दोनों मिलके क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा पावर देते हैं. इसने कोड लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ. Distance and difference are the secret tonic of creativity. When we get home, home is still the same, but something in our mind has changed, and that changes every single thing. So meaning you have to travel if you can. अभी जब हम यहाँ पे आते हैं तो कहाँ जाना चाहिए रहने के लिए. अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ऑथर जैसे ब्लॉग में लिखते हैं ना चीज़ें, वैसे ही ब्लॉग के हिसाब से ऑथर बोल रहा था. जैसे नहीं हम ब्लैबर करते कि अरे आप पानी पूरी भी ट्राई कर सकते हो, आप फॉर एग्जांपल बटर चिकन भी ट्राई कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो. तो वैसे ऑथर कुछ एडवाइसेस दे रहा है. शायद ये एडवाइसेस तुम्हारे लिए 100% एक्सेप्टेबल हो ना हो, सुन लो, सुनने में क्या जाता है. तो ऑथर ने 4 चीज़ें बोला है. सबसे पहले बैड वेदर, अगर वेदर ख़राब हो तो क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि अगर वेदर ख़राब है तो आप अपने घर में बैठेंगे, घर में बैठेंगे तो फिर कैप्टिव हो जाएंगे. तो पहले तो आप कहीं दूर दराज की जगह पे हो, उधर कैप्टिव बैठे हो और उधर कुछ करने के लिए नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि जाके मम्मी के पास बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं, ऊपर से आप अकेले हो, उससे क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है. And that will put you into an amazing situation also. From photography, I can say. Photography में quote है कि bad weather make the most amazing photos, which is 100% true. Reason? Bad जब weather होता है तो वो बहुत अलग चीज़ें दिखाता है आपको. Clouds अलग होंगे, जो बिजलियाँ गिरेंगी वो अलग तरीके से गिरेंगी, जो आसमान में रंग होंगे वो अलग होंगे. And maybe bad weather because it sparks different kind of feelings in you. अभी जिस सुकून से हम लोग बैठ के लेक्चर्स सुन रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, आप बैठे हो, अगर बाहर ठंडर आ जाए और आपका वाईफाई अचानक से बंद हो जाए, फीलिंग सेम नहीं होगी. एंड वो कुछ और थिंकिंग स्पार्क करता है, विच इज़ अ लॉट ऑफ न्यू थिंकिंग्स एंड न्यू आइडियाज़, एंड उनको ज्वाइन करना इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी. तो यहाँ से कनेक्ट करके बैड वेदर इज़ गुड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग. Okay, if you're living somewhere. Second, live around interesting people. This cannot be more true. When you live with interesting people, let's just say you have a friend who is just another person like you, and you have a friend who is an artist. जब आप दोनों से बात करोगे ना, जब आप इसकी कहानियाँ सुनोगे, क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहा था, ऑफिस गया था, सब्जी लाने गया था,
जब आप इससे बात करोगे हु एज एन आर्टिस्ट, मैं गैलरी में गया था, वहाँ पे ये मिला, फिर उससे मैंने ये बात की, फिर किसी ने मुझे कुछ अलग नई चीज़ बताई, कॉन्वर्जेशन बहुत डिफरेंट होता है, स्टोरीज़ बहुत डिफरेंट होती है। उन स्टोरीज़ को जब हम चुराते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, आपको नए आइडियाज़ आ जाते हैं। उसके बाद आता है फूड। द फूड शुड बी गुड, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस वेयर इट दैट फीड्स यू क्रिएटिवली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड लिटरली। मैंने एक चीज़ देखा है, खाते टाइम ना कोई भी साइड नहीं होता, खाते टाइम इंसान हमेशा मस्ती में होता है। सो इफ़ यू आर इन अ प्लेस वेयर पीपल आर एंजॉइंग लाइफ, इफ द फूड इज़ अमेजिंग, इफ द वाइब इज़ अमेजिंग, इफ द वेदर इज़ गुड, दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट फिल्स योर सोल। और जब आप अंदर से खुश होते हो ना, फिर कोई काम करने का आपका दिल होता है, कोई चीज़ बनाने का आपका दिल होता है, फिर आपको मज़ा आता है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब एक लास्ट पैराग्राफ बचा है जिसके अंदर ऑथर बोलता है कि इवन इफ़ यू सेट अप योर न्यू होम, यू नीड टू लीव इट नाउ एंड देन। अगर आपने नया घर सेट किए हो और आपको वहाँ से भी कहीं जाना आना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। वाई? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। आपके दोस्त, आपके कनेक्शंस कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्ट। तो आपको अगर किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत पुरानी ऐड आई थी, आई डोंट नो किसकी थी वो, कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर की थी, बट बेसिकली एक लड़की रहती है जो यूके जाती है रहने के लिए, और वो वहाँ का जो उसका डिनर का टाइम होता है उस पर कॉल करती है। यहाँ पे लोग 2 बजे फ़ोन उठाते हैं और वो पूछती है कि चटनी में मसाला कैसे डालता है। एंड वो टेलीकॉम की ऐड थी कि वी कीप यू कनेक्टेड एंड एवरीथिंग, बट दैट इज़ सो ट्रू। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी क्रिएटिवली समझ में नहीं आ रहा, इंटरनेट तो है अपने पास, मीनिंग यू कैन गो एंड ट्रैवल एंड डू व्हाटएवर यू विश। Creatively you can enjoy and explore and create stuff. That is what the author was trying to say in chapter 7. So the way we will proceed with the lecture today, which is basically named Be Nice and the world is a small town. So हुआ ये है कि ऑथर ने पिछले चैप्टर में हमें ये बोला था कि इंटरनेट को यूज़ करो और अपना काम शेयर करो और लोगों से जान पहचान बनाओ। बेसिकली इतना ही पॉइंट था जो पिछले चैप्टर में समझाया गया था। अब इंटरनेट पे बिहेव कैसे करना है उसके बारे में इस चैप्टर में बता रहे हैं। अब लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अब आपको अगर किसी से स्टील करना है, कुछ आइडियाज सीखने हैं, समझने हैं, तो इट इज़ मच बेटर दैट यू आर नाइस एंड यू नो हाउ टू बिहेव पर्टिकुलरली ऑन द इंटरनेट। एंड फॉर दैट रीज़न द ऑथर हैज़ जस्ट मेड सम आइडियाज़ क्लियर कि बॉस ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ें करनी है, कुछ इशू आ गया तो उससे डील कैसे करोगे। रीज़न बीइंग, जब आप इंटरनेट पे अपना काम शेयर करते हो तब कमेंट्स आएंगे, अच्छे भी बुरे भी। आप भी लोगों से कमेंट करोगे, बहुत अच्छी चीज़ें भी करोगे, बुरी चीज़ें भी करोगे, या किसी का काम नहीं पसंद आया तो उसको वो भी बताना होगा। और उसके साथ में आप किससे कनेक्ट करोगे, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, इसका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो आज हमको ये चैप्टर देता है। तो प्रॉब्लम हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि इंटरनेट पे बिहेव कैसे करना है। बेसिकली ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। आंसर, ऑथर बोलता है कि मेक फ्रेंड्स एंड इग्नोर एनिमीज। ओके, ये सबसे पहला कोट है। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स हियर इज यू हैव टू मेक फ्रेंड्स एंड इग्नोर एनिमीज। नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हेनेवर यू आर ऑन इंटरनेट एंड यू आर इन दिस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू वांट टू ग्रो योर नेटवर्क। और उसमें 2 चीज़ें आएगी। एक, वो लोग जो आपको पसंद करेंगे, जिनको आपका काम पसंद आएगा, आपको जिनका काम पसंद आएगा, और दूसरे वो जिनको आपका काम ज़रा पसंद नहीं आएगा। पहले दूसरे वालों की बात करता है। योर एनिमी सो कॉल्ड क्रिटिक्स। अगर आपको कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो क्रिटिक्स है, तो यू हैव टू डू अ वेरी सिंपल थिंग, यू हैव टू इग्नोर देम। यू हैव टू इग्नोर सच पीपल हु आर बेसिकली गोइंग टू मेक life unlivable for you and create a problem. उसका रीज़न ये है, whenever there are people who critique you on the internet, अगर आप उनको रिपीट करके उनको और कुछ बोलने जाओगे ना, it is going to create a chaos where उनकी तरफ से 5 लोग आ जाएंगे, शायद आपकी तरफ से 2-3 लोग आए, और फिर एक बहुत हैवी डिस्कशन होगा। मुझे याद है जब मैं फोटोग्राफी नया शुरू किया था, तो आई यूज्ड टू गो ऑन फेसबुक एंड आई यूज्ड टू बेसिकली पोस्ट माई पिक्चर। और वहाँ पे एक इंसान ने मुझे बोला था कि ये गलत है, और मैंने उनको बोला था कि ओके, थैंक यू, आई अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। एंड द पर्सन एक्चुअली रिएक्टेड कि थैंक यू फॉर जस्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक और टेकिंग योर दिस कमेंट विद अ कंसिडरेट कूल माइंड।
बिकॉज पीपल लिटरली डू नॉट, पीपल को, लोगों को ना इंटरनेट पे पर्टिकुलरली कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो रियल लाइफ में किसी और दूसरे इंसान को जाके वो चीज़ नहीं बोल सकता, लेकिन वो इंटरनेट पे बोल सकता है, तो वो बोलेगा। आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट ही नहीं करना है। ऐसे लोगों को इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो, चलेगा। रिएक्ट, रिप्लाई, कमेंट मत करना, ज़बरदस्ती के स्टैंड लेने मत जाना, पर्टिकुलरली टॉकिंग इन रिलेशन टू योर आर्ट। रियल लाइफ में जो स्टैंड है वो आपकी मर्जी है, बट व्हेन यू क्रिएट आर्ट, लाइक जैसे, क्योंकि अगर लेजर से आप कैलकुलेटर पे कुछ टाइप करते हो 2+2 हाउ मच इज इक्वल टू 4, अब समझ लो मैंने बोला 5 और तुमने बोला गलत है, तो मुझे दिल में बुरा नहीं लगेगा, हाँ ठीक है गलत है तो गलत है। लेकिन अगर मैं आर्ट बनाता हूँ और उसमें आप बोलते हो कि आपका आर्ट गलत है या बकवास है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो मेरी इमोशनल चीज़ है। अब अगर आपने पोएम लिखी है, पोइट्री लिखी है, नॉवल लिखी है, आर्ट बनाया है, पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग बनाई है, एक्टिंग की है, कोई परफॉर्मेंस की है, आप उसको डालते हो इंटरनेट पे और कोई बकवास कमेंट लिख के जाता है। अभी ये कमेंट सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वो टाइम पे हमारी सारी रैशनैलिटी निकल जाती है, अब हमको उसको रिप्लाई देना है। ऑथर बोलता है मत देना। यू हैव टू इग्नोर एनिमीज बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू बेसिकली let them go or don't pay attention to them. Once you pay attention, then there an entire thing erupts on the internet where it is just going to keep on going even after 2 years, क्योंकि कोई ना कोई वो कमेंट देखेगा, रिप्लाई देगा, फिर वो चीज़ें चलती रहेगी। आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। दिस इज हाउ यू डील विथ योर एनिमीज। दोस्तों से कैसे डील करना है, टेल देम गुड थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स। किसी का भी काम अगर इंटरनेट पे अच्छा लगता है, सो द वे यू मेक फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट इज, देखो लॉजिक समझो, आप इंटरनेट पे गए हो फेमस होने के लिए, तो रियल वर्ल्ड में अगर आपने कोई आर्टवर्क बनाया और कोई तारीफ करता है ना, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है, आप खुश हो जाते हो। लेकिन इंटरनेट पे अगर आप रिकॉग्नाइज होते हो, तो आपको ऐसा लगता है एल्गोरिथम काम कर रहा है, आपके कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, ये आर्ट बहुत अच्छा था, मुझे अप्रिसिएशन मिला है। आपके लिए वहाँ पे एक कमेंट को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। रियल लाइफ में अगर मैं लेक्चर लूँ और 120 बच्चे आए तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ और लाइव सेशन में 120 बच्चे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है वो, क्योंकि इंटरनेट पे उतना ज़्यादा क्राउड गैदर करना बहुत मुश्किल चीज़ है। अब अगर ऐसे में आप किसी को जाके कॉम्प्लीमेंट करते हो कि सर आपने लेक्चर लिया बहुत अच्छा लगा, या आप किसी के आर्ट पे कमेंट करते हो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, व्हाट अ थॉट प्रोसेस, ग्रेट पेंटिंग, व्हाटएवर इट इज, believe me, the person is going to become your friend because you're actually supporting him or her in her journey. So if you want to make friends on the internet, the best thing you can do is just say good things about them. And I would personally recommend do this a lot. Now, how do you basically grow in your talent on the internet and make friends better? एक सिंपल सी लॉजिक है बॉस, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी मुझे ये चीज़ बहुत, तुम लोगों को शायद ये बहुत ऑब्वियस लगता होगा, मेरे लिए ये चीज़ इतनी ऑब्वियस नहीं है, पर मैं मुंबई से हूँ, तो आएगा होगा, हमारे ना एक्सेंट में एक हल्का सा वाइब्रेशन आता है। ये चीज़ मुझे पहले ज़रा सी भी पता नहीं थी। मेरा एक फ्रेंड है जो बिहार से, और उसने मुझे बोला कि आपके एक्सेंट में ये आता है, और मुझे ऐसा लगता था जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि यू नो अपन गैला था, अपन आयला था, आई एम लाइक हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते भाई, और जेन्युइनली हम लोग वैसे नहीं बोलते लेकिन हमारे अंदर एक्सेंट तो वो आता है ना मुंबई वाला। तो आप अगर कोई चीज़ बोलेंगे और मैं कोई चीज़ बोलूँगा तो मेरे अंदर वो एक्सेंट आएगा, बिकॉज मैं यहाँ से हूँ। सेम वे जिस क्राउड के साथ आप रहते हो, उनकी वोकैबुलरी, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियाज़ धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाती है। एंड दिस इज़ वेयर दिस कोट कम्स फ्रॉम, वेयर यू से गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज के साथ रहोगे तो गार्बेज ही कंज्यूम करोगे और गार्बेज ही आउटपुट करोगे। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ रहोगे, टैलेंट के साथ रहोगे, कैपेसिटीज़ के साथ रहोगे, तो आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम करोगे और आप आउटपुट भी उतना अच्छा दोगे। इसलिए इंटरनेट पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमको इंटरनेट पे कैसे ग्रो करना है वो सोचना है, राइट। सो अगर आप इंटरनेट पे है और आपको इंटरनेट पे ग्रो करना है, फॉलो पीपल हु आर मोर टैलेंटेड देन यू, follow people who are amazing, follow the artwork, comment on their topic, talk to them, share a relatable story, get a conversation going with them, okay? And this can be something very genuine. This does not have to be something where you feel ke you know chamchagiri ho rahi hai ya you are buttering somebody या brown nosing somebody, वैसा कुछ नहीं है। But always remember, stick with people who are more talented than you. That is the first part. तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। What will you need for that? You will need 4 things basically. First one is curiosity. Obviously you need to be curious.
सेकेंड, यू नीड टू हैव काइंडनेस। थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब द वेरी रीज़न ऑफ शोइंग दिस बुक इज स्टैमिना। क्योंकि बहुत लोगों को पे कमेंट करने में, खास करके इंटरनेट में, क्योंकि हमको ना वो कम्युनिकेशन वाला फील नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा स्टैमिना, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, बहुत ज़्यादा आउटपुट डालना पड़ता है, ठीक है। तो स्टैमिना भी लगेगा और उसके साथ में यू नीड द विलिंगनेस टू लुक स्टूपिड। अब ये क्यों बोल रहा है ये? जब मैं पहले अपने फेसबुक पे कमेंट लिखता था ना, या लोगों को जाके हेल्प के लिए पूछता था कि आई नीड हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग फोटोग्राफी या कैन यू प्लीज़ रेट माई फोटो और समथिंग, तो बहुत सिंपल से आंसर्स मिले हैं जो बहुत नाइस नहीं थे और वो बहुत ऑब्वियस थे कि यू हैव नॉट लेट द बैकग्राउंड करेक्टली, यू हैव नॉट एडिटेड द शैडो करेक्टली, हाईलाइट में आपने ये गलती कर दी, यहाँ पे आपने कुछ किया है। एंड दैट विलिंगनेस, अभी ऑब्वियसली बात है, अगर तुम अपने से कोई ऊपर वाले बंदे के साथ हैंग आउट करोगे तो उसके सामने तुम 10 गलतियाँ करोगे एंड यू नीड द एबिलिटी टू एक्चुअली लुक स्टूपिड एंड इट इज़ ओके। यू हैव टू नीड द विलिंगनेस, यू डोंट हैव टू मेक फूल ऑफ योर सेल्फ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना मजाक नहीं बनाना है, अपने आप को स्टूपिड भी नहीं बताना, लेकिन कभी गलती से ऐसी कोई चीज़ हो गई जहाँ पे और आपको जेन्युइनली उस चीज़ के बारे में नहीं पता, सो इट इज़ ओके टू बी इन दैट जोन बिकॉज यू आर लर्निंग। अगर ऐसा करते 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 एक यूट्यूब कम्युनिटी थी या एक व्हाट्सएप या फेसबुक कम्युनिटी थी या कोई फ्रेंड्स का सर्कल था जिसके हमने आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया है, देन व्हाट डू? You basically change your group and you go into something better. You try to improve. So कभी भी अगर आप अपने आप को ऐसे सर्कल में पाते हो जहाँ पे आप ही लीडर हो, आपकी ही आर्ट सबसे अच्छी है, आपकी ही डिज़ाइन सबसे अच्छी है, इसका मतलब ये है कि आपको अभी बेटर रूम में जाने की ज़रूरत है, खास करके इंटरनेट पे। क्योंकि इंटरनेट पे जो तारीफ़ें मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा अडिक्टिंग हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़े अच्छा काम कर रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ। द थिंग इज़, इंटरनेट पे जो क्राउड है वो बहुत सारी जगहों से आता है, तो आपको जो अप्रिशिएट कर रहा है वो कंपलसरी ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। ही माइट जस्ट बी समबडी हु इज वांटिंग टू लर्न, हु इज अप्रिशिएटिंग यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक ईगो आ जाता है, एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मेरा आर्ट तो बहुत अच्छा है। पर प्रॉब्लम क्या है, आप अभी भी अपने आर्ट से पैसा नहीं कमा रहे। इसलिए जब तक पैसा ना आए, जब तक पैसा कमा ना सको, जब तक एक्चुअल में उसको लिटरली मॉनिटरी ना बना पाओ, इट इज़ बेटर कि यू कीप इम्प्रूविंग एंड इवन आफ्टर इट बिकम्स मॉनिटरी यू कीप गोइंग इनटू सर्कल्स विच हैव बेटर, वे बेटर क्राउड देन यू आर, बिकॉज यू लर्न अ लॉट। कभी भी किसी को बेसिकली क्रिटिक नहीं करना है। तो अभी तक हमने क्या बातें की, मैं एक बार छोटू सा रिकैप कर देता हूँ। पहला, अगर आपको कोई क्रिटिक करे तो उसको रिप्लाई नहीं देना है। अगर आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है तो उसके काम पे कमेंट करो, ठीक है। अगर वो बंदा आपसे बेटर है तो उसके साथ में रहने की कोशिश करो, उनकी कम्युनिटी में हैंग आउट करने की कोशिश करो। अगर वो आपसे और ज़्यादा बेटर है या फॉर एग्जांपल आप उस कम्युनिटी में बेटर बन जाते हो, चेंज द कम्युनिटी, गो इनटू अ बेटर कम्युनिटी। पहला जब हमने पॉइंट किया था कि आपको अगर कोई बुरा बोलता है तो आप क्या करोगे, आपको उसको रिप्लाई नहीं देना। लेकिन अगर आपको किसी का काम बुरा लगा तो, अगर आपको किसी का काम बुरा लगता है, यार ये इतनी बकवास पेंटिंग इसने बनाया है, इससे तो 10 गुना अच्छी मैं बना सकता हूँ और मुझे तो इससे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, और ये देखा होगा आपने इंटरनेट पे, आपका फ़ोटो सामने वाले के फ़ोटो से 10 गुना बेटर है, लेकिन उसके इस पर लाइक्स या फॉलोज बहुत ज़्यादा है आपके कंपैरिजन में। अब आपको आया गुस्सा, आपने क्या किया, जाके उसके टेक्स्ट पे कमेंट कर दिया या जाके उसके चैनल पे कमेंट कर दिया। द प्रॉब्लम इज दिस विल नॉट accompany or this will not accomplish anything. If you want to beat someone, you have to beat someone with your work. तो अगर उसने कुछ काम किया है, अगर समझ लो किसी ने कोडिंग की है, ये बुक के अंदर से है कि किसी ने अगर गलत कोडिंग करके एक अच्छा एप्लीकेशन बन सकता था जो उसने उतना अच्छा नहीं बनाया है, तो द वे यू क्रिटिसाइज हिम इज by coding better than him and making a better application, making a better design, a better photograph, a better painting, being a better human is the way you will do things. इसके अंदर एक और पॉइंट आता है एंगर। कभी भी ना एंगर को यूज करो अपना काम करने में। सो चैनल दैट एंगर, एंड ये मेरे साथ भी है, व्हेन आई गेट एंग्री आई गेट वर्किंग, एंड उसमें एंगर में मेरा वर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता है। सो यूजुअली व्हेन आई गेट इनटू अ डिस्प्यूट विद माय डैड, और ये यूजुअली देखा है मैंने डैड के साथ ज़्यादा होता है, अगर किसी भी छोटी सी बात पे डैड ने चिल्ला दिया ना, उस दिन मेरा काम अच्छा हो जाता है क्योंकि मेरा दिमाग एकदम फोकस हो जाता है। सो यू हैव टू यूज योर एंगर रिलेटिंग टू दैट पोस्ट और समथिंग, put it into working on something that means, and that like basically that is everything. That is how you criticize someone
टेक्स्ट करके किसी को बुरा नहीं बोलना है। आपको दोस्त बनाने थे, वो हमने कवर किया। इम्प्रूव कैसे करोगे, वो कवर कर लिया। दुश्मनों के साथ कैसे डील करना है, वो कवर हो गया। अब एक चीज़ है जिसे बोलते हैं प्रेजेस। इंटरनेट पे प्रेजेस के लिए मत रुको, लाइक के लिए मत रुको। रीज़न इज, जब तक सामने वाला आपका काम अप्रिशिएट करेगा तब तक आप उस काम से बोर हो चुके होगे या तो आप मर चुके होगे। ऐसा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। यू विल बी ईदर बी बोर्ड to death or you will die before anybody actually accomplishes your work. And that is why, okay, you do not have to go and look for praises. Just do your work, be content कि आपने काम कर दिया, आपने पोस्ट कर दिया, chill out करो। क्योंकि जब तक लोग उसकी तारीफ करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है ना, तो आप उस पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब इसमें एक और चीज़ आती है, कई बार आपको बहुत सैड फील होगा। इसके लिए make a register or make a journal in which you write the praises that people have told about you. This will really make you feel amazing, but you have to use it very sparingly, या एकदम रुक रुक के, बहुत कम यूज़ करके, क्योंकि अगर आप अपने प्रेजेस में ही खो गए तो फिर आप काम बेहतर नहीं कर पाओगे। In this diagram, the first thing that you look at is internet. If you want to make friends on the internet, you talk and they will know whatever you talk about. That is the rule of the internet, क्योंकि everybody can access any part of the internet anytime. So if you write bad about somebody, they will know. That is why never write bad about somebody and you will vanquish your enemies. If you want to make friends, say good things about them. Write fan letters, okay? कभी भी किसी को भी, पहले ऐसा होता था, अगर आपको कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता था ना, आप उसको लेटर लिखते थे, मैसेज करते थे। अगर याद हो तो पहले कार्टून नेटवर्क पे या पोगो पे लोग किसी भी, अगर उनको कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता था, फॉर एग्जांपल रॉब अच्छा लग रहा है फ्रॉम मैड, आप उसको लेटर लिखते थे। इंटरनेट के टाइम पे ऐसा हो गया है कि लेटर लिखने की जगह उनको एक पब्लिक लेटर लिख दो, पब्लिक फैन लेटर लिख दो, कमेंट में लिखो, ठीक है, अपनी स्टोरी पे डालो, कहीं पे भी रखो। उससे ये होगा कि यू विल नॉट बॉदर देयर प्राइवेसी एंड दैट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड यू विल टेल देम व्हाट यू वांटेड टू से एंड व्हाट यू मीन एंड all this while respecting their privacy and actually praising them. This is how you praise somebody on the internet. जो हमने बात की थी, for yourself, if somebody is praising you, keep a praise file that you will use basically when you don't feel much good and you can basically lift your spirits up. अब आते हैं how to keep your company. Remember, when you make friends, it is garbage in, garbage out. So if you're dealing with people, alright, keep them, be in a company where the people are amazing and follow better people. For that you will need curiosity, kindness, stamina, willingness, and one more thing, you hang out with the better person other than you. If you grow to this level and you become this, then hang out with much better people than you. That is 100% required. When you are looking for praises, please do not look for praises, because by the time people understand your work or you will be either bored or you will be dead. As simple as that. Do not wait for praises. कभी भी अगर किसी को क्रिटिक करना है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी का काम अच्छा नहीं लग रहा है, आप उससे बेटर काम करके दिखाओ. Use anger, use critique, use understanding to do better work than they did. Today we are covering the 9th chapter of the book Steal Like an Artist. Now with this chapter, and I have realized this as we go from the 6th, 7th, 8th and 9th chapter, is that as the book is going on, the ideas are not connected. They do belong to the like same heading, but the first idea has nothing to do with the second idea and the second idea has nothing to do with the third idea. For that reason, making a diagram was not necessary or needed in this context, because there is no diagram, because it is just pointer, 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 and then you understand whatever like is going in the each pointer. So that is why I've not made any diagrams for this particular page, and when I go through it, I think you'll understand why I do so. What I did around a week back, as most of you know, whoever has been in my class or YouTube for a long time, I love watching movies like anything. I love watching series. I'm a big foodie. I made a big decision in my life that I am going to quit entertainment altogether. I am like, I no more can eat outside. I cannot order food from outside. No Swiggy, no Zomato, no packaged food, cooking at home.
For example, making noodles at home, not an option. Not watching movies, series, music, songs, nothing. And in the past 1 week, what I have experienced is my life actually turning. How we say there is a turning point in your life. But one of the things is when boring comes to pass in your life, you realize that when people say, na, artists need to sit around and do nothing, usually people take it in the understanding of taking a break. Or whenever anybody says that, being boring inspires creativity. Usually people think, okay, I'll get bored for 5-10 minutes and now creativity will happen. That is not how it is. And this is my first hand experience. What is happening with me is that, for example, after this lecture, entire day, I'm like, okay, I have nothing to do now because there is no movie, nothing. So your mind rewires itself to look at the world very differently. So for example, you might not be sleeping at a particular time because you were thinking that, okay, I'll watch reel or movies and I'll sleep watching Friends. As soon as you start getting bored and now you know that the entire night there is nothing else to do. Like either it is your bed and you or the book or some lecture, that's it, or work. Other than that, there is nothing, no TV, nothing. Your brain rewires itself into thinking, okay, boss, I can sleep or I can create something, make it interesting. When your brain thinks like that, what has started happening in my life is I've been traveling more. The last series that I watched was Criminal Justice, and believe me, there were 3 episodes of season 2 pending, and then season 3 was to be watched. I finished the entire 11 episodes in one night. Okay, started at 9 a.m., ended at 6 a.m. in the morning, slept hazardously in the next following morning, and that is how it happened. Now, usually that is how my weekends went for a very long time now. And this time I know I do not have anything to do. So what I did, I texted my friends that let's go for a night out. That is how simple it is. When they say boringness or being bored inspires creativity, this is, I believe, what the author is trying to assert. That when you get bored like hell, when you know there is no other way, you start to survive, to entertain yourself. You go to the mountains, to the beaches, you create something, you enjoy your life, you do something. So for me, one rule that I have set is, because I am a foodie, so I don't want to be a killjoy, because I have a friend who's like who's into fitness like anything. He's a very amazing bodybuilder. For example, we were at a wedding, and you know how people give prasad when in the wedding, when the ceremony is done. Similar, like all the Indian tradition, all the religions in India, they follow the same thing. Just the sweets differ depending upon the religion. They gave him the sweet, he refused. He's like, no, I don't eat. And they're like, Arey, like it is like from the wedding, yaar. And I was like, nahi, nahi, meko nahi khana hai. I don't want to eat. So at that time, I made like an amendment clause in my habit that whenever I go outside with my friends, I can eat anything. You know, don't be a killjoy. Ke, nahi, nahi, I don't eat that. I cannot go into that restaurant. I cannot stand in this place and eat. Everything is fine with me. Hygienic, non-veg, you know, you want to like go and sit at the beach and eat something. You want to eat something very oily. All is good. The only condition is I have to be out. Okay, cannot bring food home. What I'm trying to say is now life is happening. So when people say get a life, this is how you get a life. Get bored like anything and then start doing things with people. So eating at your desk like an amazing bowl of soup and eating at a restaurant, dining at a restaurant, those are two different experiences. Now when we are talking about art, be boring is something that I understand what the artist means. This goes to say that take care of yourself. And I can attest to this, that this is true. Usually the notion of an artist is something of a very chaotic or a very different person. Somebody who's, you know, like for example, Jordan from Rockstar, Ranveer Kapoor's character. So whenever you think of artists, you think of artists as people who are, you know, drinking all night, partying all night, then half awake, they are creating some art or something, and then they are sleeping like on top of the terrace or something. It doesn't happen. I am an artist, I can tell you, it does not happen. The only difference between a normal person and an artist is we get to do what we love, and that happens to be art. For example, for me, teaching is art, painting is art, photography is art, designing is art, designing thumbnails is art, and structuring this lecture
has been art as well, because for the past 10 minutes I've been telling you stories. But do I need to, tear my clothes out and give a theatrical performance for that to happen? Not compulsorily. Okay, there might be people who might do it for the effect of it, but art has nothing to do with that chaos. That chaos comes from the personality of a person. So when you think about being creative particularly, right? Being creative, the first thing that you need to understand is take care of yourself. Take care of your family, take care of your mental health, take care of your money, take care of everything that goes into it, because that will give you enough time and bandwidth to create art. Because to create art drains you like anything. It does fill you and it does fill your soul. 100% agreed. But at the same time, art makes you tired like anything. That is 100% true. When you're working, for example, recently I've been working on my thumbnail for YouTube. And if you have recently witnessed the YouTube thumbnails, they have changed because I have started putting like 2 to 3 hours in one thumbnail. I am listening to audiobooks and working on the thumbnail and everything. So the thing is, my back has started paining. So creativity does not go, okay, create art and life will be amazing. No, Baba, there are consequences. Okay. If you sit on a desk, you are still sitting you're a normal human being. You just do not become Superman. Okay, I'm creating art, nothing will happen. Everything will happen. If you want to create art, you will need more power, more energy than normal people. For example, and I take this example because I've been an accountant and an auditor for 3 years, and then I have been an artist and a teacher for the next 5.5 years completing now. That is why I take this example. Those days were the most horrible days of my life work-wise, but they were not emotionally draining for me, because they are like, okay, Sarshar, fill a GST form. Okay, or fill ITR returns, or let's just say go and audit something, do stock check, audit a company or something, and you go there and it is very mechanical work. Okay, desk job. So you're like, okay, punching numbers in the calculator and all. If you miss a number, let's just say, and in accounting, this is something considered very heavy, that if you miss a digit, a decimal, 1 becomes 100 and 100 becomes 1000. That can happen. And I have done those mistakes. It never used to hurt. For filing clients ITR, I made a mistake of 29,000, which got rectified because we were in the time and we were trainees back then. But the thing is, like, my boss told me, Arey, this is not how you can work and all, but it never hurt my heart because it was mechanical. But if I take a picture and somebody says the picture is not good or the design is not good, it is going to kill me inside, because that is emotional. Art is emotional. So when you work as a designer, okay, and this is one step more for being a teacher. I'll tell you how later on. But when you are an artist, when you sit to work, the faculties that you put in is not only your brain, it is your body. Like a lot of photographers, when they take photos, they stop breathing, including me, because we want full on attention. So I also, you will see this with a lot of photographers. For example, I'm taking this stance, I'm not breathing, I'm holding the pose. Okay, so your body gets involved, your brain gets involved, your mind gets involved, your emotions get involved. And when you get done with 1 hour or 2 hours of work, you are drained. Okay, you do not have the energy to continue go on. Okay, definitely it fills you. Like when I take lectures or when I do photography or designing, I sleep smiling. Thank God for that. But my back is still paining on the sofa. Yeah, getting me. So what I mean to say is, when the artist says, be boring or take care of yourself, first of all, it goes to say, you do not have to be this eccentric person who's partying all night and enjoying and living that Instagram worthy life. You do not have to go jump from a cliff to get inspired. You can take a normal job, be a very boring guy. You can be more boring than the stereotypical accountant. Accountants are not boring, by the way, but stereotypically, if you're thinking that accountants are boring, you can be more boring than that, because that will give you enough bandwidth to breathe and put the energy into your work. Okay, people think that if you go to, let's just say, Himalaya, you will get inspired to create something. That might be true, because I have not been to Himalaya. I don't know if it is true or not, but that might be true. But I know for sure that boring life, what is creativity? Creativity is when there is some problem with you that you do not fit into the world, and then you want an escape, and then you
create things that give you that escape. So for example, let's just say there is a guy sitting in like a Mumbai home, concrete home, okay. He has like a very hectic schedule. He hasn't had food in like 3 hours, had coffee like 4 times by now, and he's writing Zindagi Na Milegi Dobara song. That is very different from his reality. And that is where inspiration comes from, because inspiration is coming from a dream, an idea, something that you want to bring in. So inspiration does also come from a very blank room. We have a photography exercise in which they lock the photographer in a room. The room is almost like this, totally blank. Okay, no character whatsoever, not even the furniture. And they say, take a picture and take 100 pictures, and every picture has to be different than the other one. This is where creativity comes in. Okay, so take care of yourself, live that normal life. You do not need to be James Bond or the stereotypical hero. That is what the author is saying. Cool, people? Abhi, now listen up. Okay, it is for superhumans, that kind of lifestyle, or the people who want to die young. The thing is, it takes a lot of energy to be creative. You do not have that energy if you waste it on other stuff. You have to live a very good normal life. Do not go into the pursuit of being very fancy or eccentric or something like that. That is the first point. Second, and I cannot stress this enough, this has kept my creativity going. It is nothing, no points in this chapter are related to one another. So that was a standalone point there. Now there is a different point. It has to deal with money, and it says stay out of debt. And when you start working in a creative field, one thing that really hampers you is others people's opinion on your work. You will really feel that when you work as a graphic designer or even a photographer. You hate it, okay? Because, and I have had instances when I create a design, like for example, the thumbnails that I'm making on YouTube video right now. It is just my wish, whatever I want to create. If it works, works. If it doesn't work, doesn't work. My wish. Why? Because I'm working for myself. And also because my earning does not depend on YouTube. That is, somebody asked in a comment some days back, how do you keep going? Because we do not have views on our channel yet. The very simple answer is my earning does not depend on YouTube. I earn from some other place. That is why my brain is stable. I can just do YouTube or this just for the fun of it. I do not have to think, okay, you know, the money is not coming from YouTube, or if this thumbnail goes, if this doesn't blow, how am I going to pay my rent or something? I don't have to think that. And that is the same thing when it comes to you working in a company. Okay, because when you work in a company, there are going to be people who are gonna feel creative, though they are not technically advanced enough to do that, and they are going to give you opinions on how you should do this certain thing. For example, managers, and this is a epidemic in when it comes to like designing industry, that every Tom and Dick and Harry thinks that he is a better designer than you, just because they think they understand designing better. Okay, for the people who come from my courses, they know color psychology. Every color has a meaning, right? And it is dependent on context. But for example, what the client or the manager will say is add pink to it. There is no reason, no logic to add pink. They just want pink to be added, and you will have to do that. At that time, imagine it is 8 hours. Okay, your back is paining, your head is paining, you're angry, you're frustrated, you hate the manager. And on top of it, this work is related to your soul, related to your emotions. And you cannot quit because you have to pay a debt. You have then taken a loan, education loan, home loan, car loan, phone loan, whatever it is. And now you cannot quit that job even if you get a better opportunity with less money. Reason? Because you have money to pay. One of the things that really helps you being creative is, first of all, having money in your pocket. This is 100% true. Second, not being dependent on somebody. Okay, when you have that in your life, you can quit any job whenever you want it, if you have the certainty that you will be able to get another job somewhere else. That is one thing. Most people I know hate to think about money, and creative people literally have this notion of running away from money. Do yourself a favor. Learn about money as soon as you can. And by the way, if there is anybody on YouTube or here who is struggling on how to think about money, we have done an entire book covering money called The Psychology of Money, this book, which I explained exactly like this book. My grandpa used to tell my dad, son, it's not the money you make, it's the money you hold on to.
Make yourself a budget, live within your means, pack your lunch, pinch pennies, save as much as you can, 100% true. Get the education you need for as cheap as you can. So, for example, for the people who are trying to get into higher level art colleges, film institutes, and they cannot go for if they don't have the money, don't worry. You can learn film even by making it. You can learn photography just by working out in photography or experimenting, or from YouTube. You do not need to take a course to learn any of the artsy stuff. Okay, so if you do not have the money, please don't get depressed. It is not a suggestion to go and waste your money 3 4 5 lakhs for a year's course in some college which have fancy name, seriously. And this is particularly I'm saying because this is a book still like an artist, so most people, probably artists, will be watching it. Do not unnecessarily spend stuff just for the name of it. The art of holding on to the money is all about saying no to consumer culture. Just say no, it is okay. Alright? Saying no to take out $4 lattes, that shiny new computer when the old one is working fine. Why do I say that? A lot of time now, the notion of being an artist is, for a lot of people, specifically writers and designers, is sitting in Starbucks in front of that mirror with a AC on top of their head and creating art and silently working to that lo-fi music. For people who are newcomers in the designer industry or any industry related to art particularly, you will not have that luxury. Okay, and you will have to create art every single day. The best thing you can do at that time is not get depressed. Do not spend money. Starbucks doesn't make you creative. Your art does, your learning does. The reason I'm saying this is, when I entered art, making money in arts in the beginning is not easy. For any field, it is not easy, because one of the things that is very different as compared in creative industry versus other is, for example, if you tell me that you are an accountant, can you get a job in accounting? I can just make a phone call and get you a job in accounting. Why? Because I know account is not that hard, you will be able to do the job. But if some photographer comes to me, tells me he wants to be a photographer, and he tells me, will I get the job? I'll literally tell him, see, first of all, it is a creative industry. Second, I don't know your work will be liked by the client or not. That is why nobody can guarantee jobs in this industry. Yes, internships are given and all that is given, but jobs particularly, or commission, or how you are going to be successful, is very subjective. And that is why when people come in now, initially they get very depressed, because you don't know where the hell you are going. What movies show you where art is made, let's just say in a New York cafe, or like in a very beautiful setting, sun, you're sitting on a railway track and making art, having a coffee by your side. That is not. In cinematography, only as the director, how much time it takes to actually scout the scene, go on the setting. The person who's sitting with a coffee in their hand on the rail track with the sun setting in the background might not even have coffee in that cup. He might only be acting. That is how real it is. So do not go after that lifestyle. Stay out of debt. Save as much money as you can, because you will need it for gears. And if you have bought gears, do not unnecessarily upgrade. Literally, I have an iPad that is what, I believe 8-9 years old. Works amazingly. All the thumbnails are made on this. You don't need to upgrade to an iPad which is this is second generation, before the bezels were removed. Okay, you don't need unnecessary stuff, believe me. And I'll just give you one pointer. When I was buying my MacBook, I have a M1 MacBook Pro. I was given the advice, buy a smaller MacBook with a 14-inch screen. You do not need a very big screen. And I was like, no, I'll need a big screen because I'm a video editor, so I'll need that. But at the same time, M3 had come out, and M3 had come out, and M4 was going to come out. So M3's like prices were dropping, and I had the money, I could have bought an M3. But the logic is same. I am not directing documentaries, so I do not need that machinery bandwidth. The work that I'm doing, first of all, I'm a teacher. I do not need devices. Okay, I could easily be taking a lecture on a HP old computer. It would have been simply fine. I saved around what, 2 lakhs maybe, just because I did not go for that fantasy of I am working, I have an M4 computer. It is okay, you don't need an M4 device.
whatever your working is, obviously you need to plan ahead and buy devices accordingly. But if your work is getting done and in the foreseeable future for the next 5 years your work can get done on this device, please save your money, because something eventually is going to happen in life where you might lose your money, you might lose your job, or some problem might come and you will suddenly realize you don't have money. When you have money in your bank na, believe me, it is a superpower. The third one, keep your day job. Now there are a lot of people who just quit their jobs. Thankfully, yeah, I was one of them. Then I was not one of them. I'll tell you how. So when I stopped chartered accountancy, I just quit. And my principals, my bosses were amazing people. Luckily, they were amazing. So I went to my boss and I was like, I cannot do this anymore. It is very, very, very stressing for me mentally, and like I need to quit. And they were like, don't worry. And I was like, how much time do I serve? And hardly 10 days or 15 days were remaining. And they were like, just do this, it is okay. Because they were able to know that I was not really enjoying it. And then I quit and then I jumped into photography. Like just quit and joined. I lost my health. Like in 12th, I used to go for fitness. I literally became very skinny. My mental health was shaken as in the normal stress wala shaken, not depression or something, thankfully. But I like, it is such a lot of pressure to quit your profession and go into passion that it takes everything away from you. And I was 25. I remember like some 2 or 3 days back, and if you're watching this, hi, somebody commented that they are 24 and they are very worried what they are going to like earn, and if they are going to clear that job or something. I was 25 and I quit and I had nothing, like literally zero income. Okay, you don't know where the hell are you going. So even one photography assignment used to feel like a miracle. That is the first time I switched my career. Now after that, I never switched my careers completely. I just kind of increased my envelope, as to speak. So when I got into graphic designing, I did not leave photography. I was still working, doing freelance photography, and I started working as a graphic designer. When I joined teaching, I left graphic designing 6 months after I started teaching, because it keeps your mental stability. There is nothing wrong with working in an office. So please, like as the author says, keep your day job. And I'll just read it to make this point more understandable. The truth that even if you're lucky enough to make a living off doing what you truly love, it will probably take you a while to get to that point. Very true. Until then, you'll need a day job. Why? It gives you a rhythm. It basically gives you a structure, a backbone, a foundation to stand on. And most of all, it gives you your own money. Okay. A day job, now the author is speaking, a day job gives you money, a connection to the world, a routine, which is very important. Freedom from financial stress also means freedom in your art. A photographer, Bill Cunningham, says if you don't take money, they cannot tell you what to do. Exactly like in designing and other fields. Now, he goes on to speak. A day job puts you in the path of other human beings. Learn from them, steal from them. Now, what does he particularly mean? So, when I started photography, particularly, one thing that I learned particularly was that when I started, I worked with someone, and going with them gave me an idea. They did not obviously pay me, and the very reason I left was it was not healthy. But just going with them got me to understand that, okay, this is how shots are done, this is how shoots are done, and I can do it also. So whatever I used to learn, like I hardly worked 2 days without payment, hardly 2 days in my life. But once I did that, I was able to just take everything else and bring it home and work there. So the author, like here he says that working in a library teaches you a certain thing, working as a content writer teaches you a certain thing, working as a designer teaches you a certain thing, working as a teacher teaches you a certain thing. So do not think of job as some shackle or something that is keeping you in jail or something. It is not like that. Okay, if you work in any company, okay, it will teach you something, and I'll add to it. I'll add to it very passionately on this point. When I became a photographer, I suddenly realized that photography was not only photography. It was calling the client, cold call, negotiation, a lot of stuff. Okay, and
Whenever I had to go to a client's meeting, believe me, that was the easiest part for me, more than photography. Reason being, I was 3 years trained as an auditor. So going and talking to different people and holding meetings was not new for me. And that thing helped me like anything when it comes to photography. Because usually when in art, let's just say you get a call from somebody who will basically pay you peanuts, okay, but they tell you okay, come to my office. Now you suddenly go and there is this glass building, 24 story high tower, and they are telling you come on the third floor and let's have a conversation. Your heart will start pumping because you look at yourself who's not earning anything or barely nothing. They are also not going to pay you anything, so it is not like you go into a glass building and they are going to pay you lakhs or something, okay. But just the process of going through that lobby, getting into that lift, knocking on their door, entering in, introducing yourself, sitting on the chair and having a conversation with them, that requires confidence. I thankfully had no problem with that because I was an auditor before. So I was like, okay, new meeting. The only thing is my field has changed. The work is the same. I learned that from my day job, from my training. Same way the author says, people now, whenever they say they want to be a photographer, they want to be a designer or anything, suddenly the entire desk job world becomes bad. Okay, because if your dad is telling you, okay, listen now, you do your art and all, but join in as a designer, or sorry, join in as an engineer right now or a doctor right now. Why? Because you have the degree, you have the course, I have the connection. Do it. Okay, please do it. Please don't think it is this way or that way. There is a quote that goes, a person who keeps legs on both boats basically gets a cut from like in between the body. Does not happen. Okay, life is very long. I am a designer, a photographer, a teacher. Nothing has happened. The only thing has happened is it has improved my chances of working and dealing with people. So the thing is, your mental stability is more important. So if you have to work as an engineer for 6 hours or 8 hours, do it. Okay, if you are really passionate about art, if you are really passionate about creativity, you will find time to create work. Okay, I literally remember in the later days of my quitting my job as in the accounting firm, I literally used to paint on cups. I still have those cups. Okay, very bad drawing, the worst drawing in the world. Okay, but I used to get bored and I'm drawing on cups. I remember I drew like for this stoicism for artists, this mountain, right? This mountain I drew like this is I believe this is 3-4 years before even starting this YouTube channel. But I used to like quotes and like that vibe. We used to have a whiteboard in our company. I used to draw on that whiteboard, and then clients used to come and like, who drew this? And I'm like, we have a very talented and non-talented in accounting photographer here. He does all that. So what I'm trying to say is, you'll find your way. It is not bad. Do not starve yourself. Do not throw yourself into a place ke, how am I doing accounting or auditing or a doctorate or something like that. वैसा नहीं है. Do your day job. You will find your way out into creativity. When you have money in your pocket, it will make you better. And when it is time, when you have enough saving, when you have enough understanding, talent, network, quit your job. Okay, because by that time you will be able to sustain yourself in art now. So let's just say you are fresh out of college, or you are an engineer, and you suddenly decide one day, no, I cannot do this anymore, I'm quitting. And what will I do? Photography. What do I know about photography? Nothing. Don't do that. Do one thing. Work as an engineer. On Saturdays, Sundays, take shoots or take assignments, takes designing options, design logos for people, do designing, stay 2 hours after the office, in your office, start your designing, do your designing work, go sit in the library, study. And when you have built your portfolio, when you are now getting money, getting clients, then quit your day job. That is how literally it goes. Okay. Also, one more thing I can speak from experiences. I right now, for the month of August, because I had exams, I do not have anything to do. Like literally do not have anything to do. And we usually assume, that I have this 2-hour work, that is how I'm tired, or I do not have the time to do things. Just give me 24 hours or just give me a free day, see what I will do. You will do nothing because you're lazy. We all are lazy. What happens is, well, literally it happens with me. There is a quote that if you give some time,
something allotted time. For example, if you say this thing will get done in 8 hours, it will get done in 8 hours. I had to make a script for the video that is going to be uploaded today. Since morning, I woke up at 6 a.m. Haven't made the script yet. Just ideating, thinking. When I used to work in a school, I used to make the script in recess. Like I just sit, script done. Because you know you have only that much time. So when you have something in your life that already gives your day a structure, that boss, you have to come to the office at 9, you have to leave at 6, automatically your breakfast, your lunch, your dinner, your jogging, your whatever it is get aligned to that. That alignment is very important in getting any work done, including creative work. So do not, for anybody watching right now who is new in their job or starting to work, do not think, okay, I just have to go on a job, that is why I won't be able to create art. If I get free life, just give me 6 months and see what I do. You will not do anything in the 6 months. Because the way our brain function is, you will sleep in the morning, you will think about it, you will think about creating art, you will end up doing nothing. That is how literally it is for everybody. So join a J job, do yourself a favor. If you're trained in something, that even if you're not passionate about it, earn money. And that is exactly what the author is also trying to say. The solution is really simple. Figure out what time you can crave out, what time you can steal, and stick to your routine. Do this every day, no matter what. No holidays, no sick days, no, don't stop. What you will probably find is that the corollary to Parkinson's law is very usually true. Work gets done in the time available. So if you need to make art, you will make art. Nobody is saying it's going to be fun. I'm not saying it's going to be fun. I'm saying it is going to be mentally okay for you. A lot of time it will feel like you're living a double life. But as poet Philip Larkin says, the best thing to do is try to be utterly schizophrenic. The people, I think that is the disease. I don't know, for doctor people, don't get angry. It is when you have multiple personalities. Try to be utterly schizoid about it all. Use each personality as a refuge from the another. So take being an artist as a refuge from being an accountant. Take being an accountant as a refuge from being an artist. There's nothing wrong with that. The trick is to find a day job that pays decently. Don't make you want to vomit. Definitely don't go into something that is toxic or is killing you, and leave you with enough energy to make things in your spare time. Good day jobs aren't necessarily easy to find, which is very true, but they are out there. That is possible. The very reason I'm not working in a school right now is I'm more focused on being into freelancing. The very reason I say that is freelancing actually pays more. And the second thing is, people don't consider you a slave in freelancing. See, the thing is with bosses, unfortunately the thing is, and I have experienced it in my past jobs, all of them, okay. Sometimes my bosses were amazing, but that is the nature of bosses. Whenever you work in a job, the other person thinks that they are paying you for the time. And eventually these people get into an understanding of telling you what to do. Like you are basically, it can be called 9 to 5 slavery. I do not have an issue with that assertion or with that way of saying. The reason is they are like, Sarshar, give me a reminder that I need to do this tomorrow at 6 p.m. And I'm literally, bro, tere phone mein reminder app hai, dal usme. Why are you telling me? I'm not your secretary. But bosses do have this. They'll tell everybody to assert that they are bosses. Just remind me to do this or do this work or do that. Now, till the time that work is your work that you love, it is, hunky-dory. But as soon as the work is something else, because they know now they are paying you for 8 hours. If you're getting the work done in 6 hours, they suddenly have this urge to give you 2 more hours of work. And sometimes the work may not be related to what you do, which is a less probability. But what I'm trying to make you understand is this thinking that is hazardous. All right. And that is why when you work for a job, it is not only that you're giving them time, and this is me personally. Book is saying get a job. Okay, book is literally saying it will take your art 8 hours away. Let it survive. That is what the book is saying. This is me personally. I think when you work in a job, they think you are theirs for the next 8 hours. Now, definitely, if you are an accountant, they are not going to tell you go and make tea. That is not going to happen. But being an accountant, it is going to be, do this, do that, or whatever it is, and work will keep flowing in. When you go into freelancing is based on work.
and hours, not days. For example, I'll tell you about, for example, let's just say I am getting paid X amount for 1 hour. So if I teach 4 hours for that company, I'm gonna get multiplied into that amount. Simple as that. Okay. No strings attached, no extra commitment, no saying hi, hello to anybody, not needed. Okay. No office politics. One of the biggest benefit of not being in a company as an employee is no politics whatsoever. As a freelance, you're like, boss, this is your work. I have done this. Get done with it. Give me the money. I stay in my mental capacity. I stay good. So for that reason, freelancing can very well be the future. Okay. And freelancing might be a good option, but if you are doing freelancing, pay attention. You will have to be the bloody best. They do not have to keep you. Once you go into employment, there is an entire law. Employees Act, something I studied way back. So it has a lot of pointers. Okay, they cannot fire you because of on this grounds or something and something. Definitely the company size has to differ for that. But when you are in contract, things are very volatile. The other person can say, just take an example. Your house is painted by some painter. Next year you hire somebody else. Similarly, so if you're doing an assignment and you're not doing good, they'll just go to someone else for that matter. So you'll have to be really good if you're going for freelancing. One more reason freelancing may be the future in the industry is because people, like, there is less drama and more the world as we are going through it now. Like, when you have a job, when you are giving somebody the job, it unfortunately gets your job to get the work done. So for example, I'll be calling, my assistant again and again, did the file happen? Did this happen? Did that happen? But as a freelancer, the freelancer will call you, sir, your design is done, because he needs his money ASAP. Okay, he's on contract per sales basis. So for example, if it is a designer, the designer will get paid either in the terms of design made or either in the terms of hours, whatever the designer, and they have an understanding. So that is how it goes, which makes things very fluent. It's like I do not have a deal with the Parle-G company that every day you supply me this amount of Parle-Gs and I'll consume them, and that is how my house will run. The simple thing is, you go to the shop, you get a Parle-G, whenever you need it, you get done. The same thing is with freelance, no headache. So I think that is why it might be freelancing can be the future. I don't know if it is particularly true, because freelancing requires a lot of energy. There is nobody to hold you other than God. Okay, for example, when I was in accounting, I survived 3 years in an accounting field. Very reason, my seniors were amazing. So believe me, when I used to do some work and I used to do very crappy work in accounting, I just used to call my seniors like, bro, just check now once. And they're like, yeah, I'll check. Freelancing, there is nothing like that. Nobody is checking. Maybe that is why we made the art hold. Okay, you can connect with people, but there is no senior, there is nobody to blame. It is you and you only. So for that, I think job will persist. I think freelance will also persist, because the nature of humans, it depends. Wherever the world is going, it does not depend on what system is set. It is dependent on how people work. And if a person, like for example, my father does not like freelance. He is just like, salary is okay because I am very sure that month ke end mein itna paisa milne wala hai. Is year mein I'm gonna earn this much money. He is simple. Okay. If you ask me what money I'm gonna earn next month, I have no clue. Okay. I have no clue. And then basically he says, how do you people operate, or how do you people plan? Because for my dad and other people, it was very simple, boss. Get a job and plan, like for example, I need to buy this property. This is going to be this much lakhs. I'm going to buy in this many years, save money according to this rate, and you will be able to achieve your goal. It is that simple. It is that simple. The first of all is my favorite. Get a calendar. Now, this thing, honestly, if I'm being very honest with you, this is a little hard to actually execute. Reason being, you keep forgetting. But if you get into a habit of having a calendar and marking X on it, this is something we covered in Atomic Habit. It basically says that all you have to do is you have to do a work on the day. So what you need to do is, even if you're getting bored, even if someday you do not feel like an artist or you do not feel like you want to create something, do it.
Do it and mark an X on the calendar. Then next day do it again, mark an X on the calendar. Soon enough, what you will realize is you are building a streak, and then it will be hard to stop, which will eventually improve you. If you write a page a day, okay, just one simple page a day, in a year you will have a book that you can sell. A book, maybe, a book this fat, you will have this fat of a book only if you just write one page a day. If you think about it, this thing, if anybody has a dream of writing a book, the dream has always been possible. But we wait for what? We wait for that eccentric, amazing vacation where we'll sit and write. Not gonna happen. Your life is boring, accept it, write it in the boring life. Use that boringness of a calendar, of accountability, of basically logging things to make it a habit to create art. One more thing, keep a logbook. Now this is something that I do agree with and I find amazing. The reason is, what is a logbook, people? Log comes from logging, like basically writing whatever happened. That's amazing. So log basically means writing whatever happens. Now usually when people plan, they plan for the future. Okay, we are saying that do not particularly like log what is going to happen or what you're going to do. Log what has already happened. The reason is you are able to get a very amazing clarity on your life with that, and you are able to understand what inspired you. So for example, with creative people, this is particularly true. For me, instances happen like on a fly. Okay, for example, I'm going to the washroom and I had an idea. Okay, or maybe I was roaming around with a friend and I had an idea, and for that day or the next day I told, let's just say I'm sitting with my family and I told them, okay, I was talking to him or her and she gave or he gave a very amazing idea to me. Then 1 week later I do remember the idea, or maybe I applied it. I forget where the idea came from. Okay, now if I'm trying to regenerate that kind of vibe, I cannot, because I have no clue where that idea came from. And for creative people now, this happens 15 to 16 times in a day minimum. Okay, like it obviously fluctuates. There are days where I literally do not get any idea or anything. So what the author is trying to say is write everything, get into a habit of creating a log, because if you need, like for example, let's just say it's simple, if I need this bottle, where will I go? I'll go to DMart and buy it. So next time if I lose this bottle and I need another bottle, where will I go? DMart. But if you forget that you bought this bottle from DMart, now you'll have to search the entire world for the bottle. That is true with the ideas. Everybody has impulses that particularly like incite them. So some people get ideas on a bike, some people get ideas skating, some people get ideas doing push-ups. Me particularly, personally, how people say you get ideas walking, I never get ideas walking. I get ideas while I'm bathing. Okay, mine is like, it is true with some people. I also get a lot of ideas. I have forgotten now. Yeah, that is why you need a logbook. Okay, that is why you need a logbook. And a log does not have to be a boring thing. Author shows this. This is his logbook. Okay, pages from his logbook. Do anything, write anything, whatsoever. You just need to write stuff. Okay, what you did, when you did. Okay, it will really help you. If you ask yourself, what's the best thing that happened today? It actually forces a certain kind of cheerful retrospection that pulls up from the certain past things to write about that you wouldn't otherwise think about. Okay, so if you think what happened amazing in my life, now your brain will pull out amazing things that happened to you. Okay, for example, if I ask you people, what was the best gift that you have gotten in life? Now suddenly memory sparked in your brain which will make you feel good. But if you ask yourself what happened today, it's very likely that you're going to remember something worst. Okay, because you have had to deal with it, you have had to rush somewhere, or somebody said something mean to you. That's what you're going to remember. That is our default. So if you ask what happened today, bad things come to mind. If you ask what amazing happened, then only good things will come to your mind. But if you ask what's the best thing is, it's going to be something particular, slant of a light, or some wonderful expression somebody had, or some particular delicious salad. That is why logging will be very helpful. Author says, who you marry is the most important decision you will ever make, and marry well does not mean your life partner only. It also means who you do business with.
who you befriend, who you choose to be around. Relationships are hard enough, but it takes a real champion of a person to be married to someone who's obsessed with a creative pursuit. A lot of times you have to be a maid, a cook, a motivational speaker, a mother, an editor all at once. Now, why is he saying that? I know this because my mother is a poet. What happens in my house is suddenly at 2 o'clock at night, the lights are on. Okay, and then you're looking like this, and my mother is sitting there writing something on the book. We are talking about living a boring life. And when we are living a boring life and still wanting to be an artist, you need someone who understands your pursuit. You need, because you will not, when you are at home, see, when you're working at job that we talked about before, when you're working in an office, you're only an accountant, a doctor, an engineer, a teacher, whatsoever. When you are at home, you are everything. When I'm at home, I'm cleaning, I'm cooking, I'm sometimes, washing clothes, I'm painting, I'm drawing. I am every single designation that you have. For example, if my father is sick, then I'm a doctor. Like, we all have that moment in our family where we decide if you need to have crocin or not. You are a doctor in that particular moment. So who you marry will literally dictate how you are going to behave in the situations. Definitely it is your own personality as well. But if your art flows and if the other person is interested in art as much as you and the pursuit is amazing, because my grandfather is also a poet and my mother is also a poet. My dad is not a poet, but he understands poets. Like, he's amazing with poetry. The conversation that I see happening with my grandfather and my dad, or my mother and my dad, or my mother and my grandfather, or even me at times, is very different as compared to normal people. Okay, because there is a quote by Zakir Khan, if you know him. Zakir Khan is a comedian. He is also somebody who's belonging to a musical family. So he says that by the time we grew up, we knew half of the sonnets written by Mirza Ghalib or Allama Iqbal, because that used to get recited in our house. Those are Urdu poets. The very same is true for me as well. Before I even knew it, I knew a lot of poetry, because those conversations happen in my house. For somebody who's a doctor, whose family, who is like, you might have seen this. If your uncle is a doctor, your auntie already knows the name of a lot of medicines. Okay, she knows where and how to, like, for example, plaster something. She's not a doctor, but she knows. It will automatically come, and that is exactly what the author is trying to say. Who you marry, because you're gonna stay with them, right? So if you marry, somebody who inspires you, or somebody, I don't know what you should marry for. Search your own terms, okay? Otherwise, 2 years, 20 years later, you will call me and it's like, sir, bad advice. And now I cannot even get out of it. Search your own designations for getting married or something. But what it basically means is, think well before marrying, okay? Or marry well, because a good partner will keep you grounded. This is very, very true in the case when, for example, and this happens in my house. My mother has written some poetry, and she writes beautiful poetry. And she'll show it to, like, for example, somebody who came home who's not a poet, and they usually are like, really nicely written, what a thought, and all and all. And you know what my dad or my grandfather would do? They'll tell her, no, this rhyme has to be changed here and this and that, because they know the technicalities of it. And they keep you grounded. Like, I remember my dad is also very artistic, and when I started my journey in photography, I remember one day, like, I was shooting, and I was shooting a perfume bottle with the water underneath it, waves are going on, like, you can see it on my Insta. And my dad came in and he looked at it and he's like, turn the light this way, the light will fall better. And it actually happened. I turned the light. I am a professionally qualified photographer, okay? But he he understands the field. So he's like, just do this, it will happen. And I do that. I was like, yeah, this is seriously better, much better. Acha, he is somebody who is not somebody who puts work in photography, okay? So most of the photo he comes with, I have criticism for that. Okay, this could have been taken much better, because partially because I teach photography, my job is to evaluate students' work, like, every month. So when I look at a photo, I look at a photo from that angle. Okay, nahi, the rule of third is not good, you should have done this, the color theory is messed up or something. So I was having this discussion with him that he does not particularly get photography correctly, and I had a camera in my hand. Okay, and I was about to take a picture and he was like, remove the lens cap first, because the lens cap was still on.
what it does is it keeps you grounded. It tells you whoever the hell you are, stay on the ground. Okay. A good partner keeps you grounded. A friend once remarked that living with an artist must make our house very inspiring. My wife joked, "Oh, yeah, it's like living with Da Vinci or living with Picasso." So now he concludes and says that, this is basically how you spend a boring life. All these aspects are the aspects of a normal life. This goes to say you do not have to sacrifice any of it to be an artist. You can be an artist, okay? That old phenomena of, artists being heartbroken or something that you usually hear about, I don't know if that is true. I have never got my heart broken, but I can assure you my work still is good. So I don't know if you need to get, sliced up just for making art for that sake or something. I don't know about it. But boring life is not a bad life. It actually inspires you to be creative. Okay. And that is what the 9th chapter of the book says. Last chapter of the book, Still Like an Artist. And the chapter says, creativity is subtraction. Meaning, usually when people fall in creative blocks, the best thing you can do is subtract things. Now, what does subtraction mean? जब हम लोग subtraction की बात करते हैं ना, यहाँ पे ऑथर लाइफ की बात कर रहा है. लाइफ से मतलब अगर आपको दुनिया की सारी चीज़ें दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब सारे कलर है, अब सारी चीज़ें हैं जितनी हो सकती है, सब आपको अवेलेबल है. इफ़ दैट हैपन्स एंड दैट इज़ वन वे टू गो. यूजुअली ना लोग ऐसा समझते हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो एक ऐसे स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पे सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे सारे कैमरा लेंसेज होते हैं, सारे कैनवसेस होते, पेंटिंग के इक्विपमेंट्स होते, सारे क्राफ्ट के सामान होते, तो वो क्रिएटिव होते. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. ऑथर बोलता है कि the real creativity actually is a contradictory idea. The real creativity comes from constraints. जब आप खुद को रोकते हो या आप खुद को पूरी तरह से चीज़ें नहीं देते, तब आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलती है. To explain this, let's just understand कि आपके पास में एक ग्रीन कलर का एक ही, let's just say कलर है या ब्रश पेन है, एक ही ग्रीन कलर का पेन है. अब प्रॉब्लम यह है कि आपको अब उससे 7 शेड बनाने हैं जस्ट टू शो कि ये ग्रास के अलग अलग शेड्स है. एक डार्कर होगा, एक थोड़ा ब्राइटर होगा और एक उससे ज़्यादा ब्राइटर होगा. अब ना आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे कि किस तरह से मैं इस पेन को ऐसे यूज़ करूँ, 2 बार उसको लिखूँ या इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूँ या उसको फॉर एग्जांपल इस निप के साथ मैं हल्का सा लगा लूँ ताकि उसमें एक ब्लैकनेस आए. आपको पता है आप क्या कर रहे हो? इन रियलिटी आप उस पेन को मास्टर कर रहे हो जो विदाउट एनी कंस्ट्रेंट नहीं होता. ये चीज़ें इसीलिए आप कर पा रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट यूजिंग योर ब्रेन टू फाइट विद कंस्ट्रेंट्स. दैट एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग. एंड ऑथर आज वही बोल रहा है. तो अगर हम पहला पेज खोले इसका, चूज व्हाट यू लीव आउट. आपको अपनी ज़िंदगी में से चीज़ें निकाल के बाहर फेंकनी है. जब आप ऐसा करेंगे इट विल एक्चुअली मेक योर लाइफ मोर क्रिएटिव. अब इसके अंदर एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ. द वे टू गेट ओवर क्रिएटिव ब्लॉक इज टू सिंपली प्लेस सम कंस्ट्रेंट्स ऑन योर सेल्फ. इट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, yes, but when it comes to creative work, limitation means freedom. Write a song on a lunch break, paint a painting with only one color, start a business without any startup capital, shoot a movie with your iPhone, शूट अ मूवी विथ योर नॉर्मल फ़ोन. किसने बोला कि आप अपने नॉर्मल फ़ोन से एक अच्छा खासा व्लॉग शूट नहीं कर सकते या मूवी नहीं शूट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो. बस हमारे दिमाग में ये चीज़ लगते रहती है कि मुझे लेंस चाहिए, मुझे क्रू चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. कंपलसरी नहीं है. इसके साथ में बिल्ड अ मशीन आउट ऑफ स्पेयर पार्ट्स. डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर नॉट वर्किंग. मेक थिंग्स विद द टाइम, स्पेस, मटेरियल यू हैव राइट नाउ. जो आपके पास है, जैसी चीज़ें अभी आपके पास है, उनको यूज़ करो और उससे जो बना सकते हो बना दो. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. द राइट कंस्ट्रेंट कैन लीड यू टू द बेस्ट वर्क. अगर आप अपने आप को सही तरीके से कंस्ट्रेंट में डालते हो, सही तरीके से आपकी लाइफ रुका देते हो, इट माइट लीड यू टू योर बेस्ट एवर वर्क. And this is something that I am experiencing personally right now, not with work honestly, but also work included, but life.
इनका जो सब्सट्रैक्शन का टॉपिक है ना, तो आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, लेकिन आज मैं काउंट डाउन कर रहा था तो मैं उसका आपको एक कैलकुलेशन दे सकता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला कि आई हैव क्विट एंटरटेनमेंट, अभी कुछ नहीं, 7 दिन ही हुआ है, बट इन 7 दिनों में आई वॉज एबल टू ईट आउट ट्वाइस विथ माई फ्रेंड्स, आई वॉज एबल टू कुक थिंग्स दैट आई डिड नॉट थिंक आई कुड कुक एट माई होम, जो इंग्रेडिएंट्स हमेशा से थे लेकिन मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जो सैलेड कटा हुआ होता है वेजिटेबल का, जब भी सैंडविच खाने का दिल होता था नीचे जाके लेके आते थे, तो मैंने पहली बार अपने घर में सॉसेस मंगा के उस पर ब्रेड लगा के उसको सैंडविच बना के देखा, एंड इट टेस्ट्स वे बेटर देन वो नीचे जो दुकान पे मिलता है दैट वाला सैंडविच। इफ यू पीपल एवर कम टू माई होम, आई विल फीड यू, इट इज़ रियली टेस्टी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सैंडविच बनाया, ऑमलेट बनाया, बीच पे 2 बार जाके आ चुका हूँ, पिछले 7 दिन की बात हो रही है, बीच पे 2 बार जाके आ चुका हूँ, सिलेबस ख़त्म कर लिया, उसके साथ में कल पूरी रात हम चर्च गेट में घूम रहे थे, उसके साथ में कल अभी ट्रैकिंग पे जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे अच्छे से पता है कि मैं बैठ के मूवी नहीं देखने वाला, तो कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा, और फिर आप चीज़ें करना शुरू कर दो विद दैट थंबनेल्स बनाना शुरू किया। सो फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट थंबनेल्स दैट यू हैव सीन, पिछले जो जैसे 7 वीडियो के थंबनेल है और उसके पहले के 2 महीने के थंबनेल कंपेयर कर लो, दोनों में डिफरेंस है, प्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम बच रहा है जो अब मैं उसमें डाल सकता हूँ, नहीं तो पहले वो नहीं होता था। पहले ऐसा होता था यार एक वीडियो देख लेता हूँ, एक एपिसोड देख लेता हूँ, चलो ये सीरीज़ ख़त्म कर लेते हैं। बाई द टाइम दैट एंड्स यू हार्डली हैव 2 hours टू कंप्लीट योर वर्क, एंड इन दैट यू ओनली डू शिटी वर्क, विच इज़ अ गुड कंस्ट्रेंट बट नॉट ऑन एवरी डे बेसिस। तो ऑथर आपको बोल रहा है, आपको ये सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी में से क्या निकाल सकते हो। अब तो ये तो मैंने खाली लाइफ की बात की, बट when you remove distraction and on top of it, distraction निकालने के बाद अगर आप अपने आप पे कंस्ट्रेंट डालो कि बॉस मैं स्टूडियो में तो आ गया हूँ और मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं अगले 5 घंटे स्टूडियो में बैठने वाला हूँ, ये आपने डिस्ट्रैक्शन निकाला है। लेकिन स्टूडियो के अंदर सारे इक्विपमेंट नहीं है, 2 ही है और मेरे को 2 से काम करके दिखाना है। उसके अंदर आप अपने दिमाग के साथ काम करते हो और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें से क्रिएटिविटी निकलती है, उसमें आपको आता है सेंस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट कैन जस्ट बिकम अमेजिंग। इसके अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बुक के अंदर कि डॉक्टर सूज, उन्होंने एक बुक लिखी थी द कैट इन अ हैट विद 236 डिफरेंट वर्ड्स। तो उनका जो एडिटर था उसने बेसिकली बोला कि क्या आप खाली 50 वर्ड लेके एक पूरी बुक लिख सकते हो? तो उन्होंने बोला ट्राई करते हैं, और वो बुक बेसिकली बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस बुक ऑफ ऑल टाइम है अमेरिका में। इट्स नेम इज़ ग्रीन एग्स विथ हैम एंड हैम। मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट वहाँ पे आई थिंक पीपल विल बी एबल टू रेजोनेट। इसके अंदर आखिरी एक कोट है, एंड दिस आई बिलीव इज द लास्ट थिंग हियर, टेलिंग योरसेल्फ यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ऑल द कलर्स इन द वर्ल्ड पैलेट, एनीथिंग यू वांट, that just kills creativity. But when you think that you have constraint, when you think that you do not have things enough, that is when you try to do something with it, and that matters. अब लास्ट पेज है, ठीक है, लास्ट पेज है। इसके बाद भी एक पेज है लेकिन दैट इज मोर लाइक दिस, सो नॉर्मल टेक्स्ट आखिरी यही है। एक आर्टिस्ट है, what we respond to in any art work of art is the artist's struggle against his or her limitation. So the way you actually improve, the way you actually grow is how you react to your constraint. तो अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई constraint है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई limitation है जिसमें आप grow नहीं कर सकते, वही आपको artist बनाएगा, वही आपको आगे फेंकेगा। It's often what an artist chooses to leave out that makes an art interesting. और एक बहुत अच्छा quote है कि when people try to find their voice, ना, when people try to improve, when people try to get better, usually लोगों को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल 4 फंडामेंटल है तो मैं इस पे भी 100 अचीव कर लूँगा, इस पे भी 100, इस पे भी 100, इस पे भी 100। बट द वे इट एक्चुअली हैपन्स इज, आप इसमें 100 अचीव कर पाओगे, इसमें करोगे, इसमें शायद 90 अचीव कर पाओ और इसमें 100 अचीव कर पाओ। यहाँ पे आप 10% से फेल हुए हो। ये 10% एक्चुअल में आपको यूनिक वॉइस देता है, क्योंकि हर कोई सक्सीड शायद हो सके, 100 सबका एक जैसा आएगा, पर वो जो 90% आपने अचीव किया है ना, वो 90% दूसरे पर्सन का, बंदे का 90% अलग होगा। Not everybody can fail like you. That is why when you have constraint, you try your own ways of doing something, and that makes all the sense in the world. What makes us interesting isn't just what we experience, what we have experienced, but also what we haven't experienced.
The same is true when you do your work. You must embrace your limitation and keep moving on. In the end, creativity isn't just the thing we choose to put in, it's the thing we choose to leave out. Choose wisely and have fun. अब करना क्या है? अब क्या करोगे? किताब तो पढ़ ली, लेक्चर भी देख लिया, टेक अ वॉक, अपनी स्वाइप फाइल शुरू करो, लाइब्रेरी जाओ, नोटबुक खरीदो, उसको यूज़ करो, अपने आप के लिए एक कैलेंडर लेके आओ, एक लॉग बुक स्टार्ट करो, एक कॉपी ऑफ दिस बुक किसी को दे दो फ्री में, ब्लॉग स्टार्ट करो, सो जाओ. ये सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कहीं भी डिजिटल चीज़ नहीं आ रही, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में करते हो आप. देयर आर रिकमेंडेड रीडिंग्स कि कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हो अगर आपको ये किताब अच्छी लगी है तो. वॉट इट इज़ बाय लिंडा बैरी. दूसरी है यू मैकलोड की इग्नोर एवरीबडी. तीसरी है जेसन फ्राइड और डेविड हाइजनमर हैंसन की रीवर्क. उसके बाद में लुइस हाइट की द गिफ्ट, जॉनथन लेथम की द एक्सटेसी ऑफ इन्फ्लुएंस, डेविड शील्ड की रियलिटी हंगर, स्कॉट मैकलॉड की अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स, ये मैं भी पढ़ूंगा, एनी लेमाउट की बर्ड बाय बर्ड, मिहाली चिक्समिहाली, हाँ ये इनका नाम पढ़ चुका हूँ मैं, ये आई बिलीव ये डीपक में था. मिखाली चिक्समिहाली का एक बुक है बाय द नेम ऑफ फ्लो, जो फ्लो स्टेट के बारे में है, और एड एम्ब्राइफी का है मेक अ वर्ल्ड. सो इफ़ यू वर थिंकिंग कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, एंड इफ आई एम थिंकिंग के फ्रॉम विच बुक शुड आई स्टील मोर, the author has given a list. Your mileage my vary, but इसने एक advice दिया है. Some advices can be wise. Feel free to take what you can use and leave the rest. There are no rules. Tell me what you think and say hello, and then you can connect with the author at austinkleon.com. And that, my friends, is the completion of the book Steal Like an Artist. Thank you for watching. For everybody watching here on YouTube, who basically gave me a visual input enough for me to put work in and be with you guys and basically make sense of it all.